हॅलो 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 कोणी आयला की माहिती आज कोण येतलं म्हणतात न्हू
So it's control number one and very nicely collected by the wicketkeeper. Let's say nothing soon. At least I think 4 runs for his team. Very beautiful start by McLean Sports Club of Kundazula. But this captain has a full toss special to the fielder. There is a fielder over there. A beautiful fielding in return. A very good throw to the next now starts. The score moves on to 0. Namit moves on to 1. At the completion of half the over, it's the first time finish will face to Mr. Sagar. Oh, we will have put in the chance, and yet what a beautiful catch has been taken by a fielder. So the first wicket has been down. Dinesh has been back into the field without scoring any score. So at the start of 1, they have lost their first wicket. So they are now 1 for 1. Here comes the ball. One of the experienced all-rounder. Oh, thank God, after one. And yes, this is the maximum. First maximum of this day 2. When you read about Mr. Bond, this will put a nose of this 7. What a superb start by Mr. Bond. Over pitch ball, left side into the long arm area for the maximum. So Sagar has been punished. Oh, this time tightly placed into the low. Hello. Something is 11. Bola. This over also starts with a dot ball, even like that of the next one, final face into the leg side. There is a fielder over there. It will get just 1 run, a beautiful throw in return. The total moves on to 12. It's now once again. Now this time, Bond will face Ritwik in the second over.
Oh, taken a full toss, but this time I think the fielder is down. Oh, the catch has been dropped. A simple catch has been dropped, but there, I think it's a boundary. And yes, in return also it has been boundary. Or river, which has been given for Mr. Bond by the fielder. So this was an important wicket, but an easy catch has been dropped. As you see, lots of catches have been dropped. And total moves on to 16 for 1. Again, but this time not properly connected, but in a safe area. Just one run. As far as the connection of the bat and ball, it was not properly connected, but the ball falls in the safer area. And so this time the ball is very safe. Moves on to 17. So 50 to 60 is the final score on this ground. Trying to hit in the reverse, but not connected. But still unable to stop making single run in the form of fluke bites. And will move on to 18. Oh, this is beautifully has been taken in the reverse way. And he saw one more maximum from Bond. What a beautiful shot. So the 2 overs have been completed. So the moves on to 24 at the average of 12 runs per over. Very beautiful start. First over 11 by losing 1 wicket, and second over they have been taken 13 runs, altogether 24 for 1. After completion of 2 overs, a very beautiful batting by Mr. Bond. Bowler. Aniket. Nitish. Now Mr. Nitish will start the third over. Oh, full toss was not taken. It's properly the full benefits has been not taken by the batsman. Just a single. Single for Namit. And will move on to 25. After completion of 2.1 overs, 25. Bond has been done fully charged. Playing with the help of 2 maximums, 2 boundaries. Oh, the connection of the bat and ball, as there is one more maximum from Mr. Bond. So beautiful shot as a result. Total moves on to 31 at the progressing third over. Very good score has been scored by the star of Old Goa. So beautiful batting. So we got now 4 to move on to 37. What a super start by the star of Old Goa.
With the progressing third over, they have reached up to 37, losing just first wicket in the first over that we finished. Again similar. And yes, this is now the second hit rate of the pitch. This is hit by Mr. Bond. Congratulations. What a superb batting. And Bond moves on to 39. Altogether, the score is 43 out of that. 49 has been made by Mr. Bond. 39. Just 8 balls as he has been faced. And moves on to 39. What a superb batting. It's not only that Mr. Suryavanshi has been playing like this. Even the Goan players, especially by Mr. Bond, has shown the talent. Again, what a slight placement. They will at least get 2 or they will be satisfied with single. Yes, the only single. So the score is now not only moving, it is like jumping. So moves on to 44, the progressing just third over. And yes, it's a super ball, a dot one. So after the completion of third over is 44 for 1. Just 20 runs has been came in this over. Super positivity for the star of Old Goa. Even I think Namit has been not happy against the ball which has been lastly faced by Mr. Namit. If you see lots of places, Mr. Bond has been compared to Mr. Player number 18. Bowler? Tushar. So Tushar. Oh, again, what a start. A beautiful ball. And I think this is the first ball which has Bond has been placed as a dot. Again a similarity. Nicely come back by Mr. Tushar. Continues 2 dot balls for Mr. Bond. Oh, no, this time above the house of the field and the square cut area. It's a one more boundary. So one more boundary has been added to the score and total moves on to 48. Again, I think it's extras, yes, in the form of wide. Again, this time, last one. And here's the other poster. So, total move on to 55. And congratulations, Bond. So you have now the second half century of this tournament. In just 30 balls. Again, a full toss with this time high up and down. And the field is down and just one more thing has been done. Ball has been got. So one more reward. So this is like the second reward given by Macallan Sports Club of Kumbarwa to Mr. Bond. One in the long on area and now this in the second.
Total moves on to 59. Over this time again in and yes, it's one more. What a superb. But it's all the competition of overs. It's 65. 65 for 1. So 21 runs have been scored in this over. First over 11, second over 13, third over 22, and now it's 21. What a rides. 65 for 1 after completion of 4 overs. What a beautiful start by the start of World War. 21 balls, 64. 20 balls, 64. What a partnership between these two players. Just 20 balls and 64. Namit retired. Namit है यार मेरे बैटल लम. संदेश बैट्समैन भी है. वो बैट्समैन ला नहीं नमित बैट्समैन ला. आउट तो retired हट झाला. The first ball has been declared a wide. Total moves on to 66. Bowler. भाई बॉलर. Oh, what a last shot! A long way. भाई फील्डर स्लीपर. हेलो विकेटी. बॉलर ने सिद्धू. To Sidhu. The first ball has been wide and second ball has been lofted by Mr. Sandy to the maximum. Oh, again, but this time also has been declared as wide. So second extras of this over. Oh, again trying to hit it, but not connected properly in the center ball. Very beautiful score has been scored by the star of Old Goa. To move on to 73, losing just 2 wickets. Again, but this time it's a very good ball. This time again misses this completely. But this time they have been taken 1 run in the form of, I think, leg buys. Yes. don't die. 74 is the total. At the progress last over. I think just 2 balls have been remained of this last over. Oh, Bond, yes. A super one, I think. It's a 6. 6 for Mr. Bond. And total moves on to 80. This 1 ball has been remained of this last over. Very beautiful batting by Mr. Bond. Nicely supported by Sandesh with the help of 1 mighty 6. Oh, trying to hit it but not connected. Is chance of run out and yes. So last ball they may lost the 3rd wicket. So this is Sandesh has been run out. That is individual score of 6.
What a beautiful score has been scored. Mr. Dinesh has been gone for duck. Namit has been retired out. A score of 3, Sandesh on 6, and Bond has been not out on at 60. Congratulations. Yes, this is for 66, not 60. So altogether they have been made 80 runs and the target has been given. So McLean's first Club of Pambazoa is 81 in allotted 5 overs. Hello. So in the allotted 5 was the star of Volvo has been made a marvelous 80 run score and given target of 81 for McLean Sports Club of Kumpazoa. Very beautiful batting by Mr. Bond. That is 66 not out in just 18 balls. So after this match, the match has been played between Kings Brothers of Ozrimosi Sai Bodogeshwar of Sudan. Both the teams please be ready. So come back to the first match of this today's session, that is between the star of Volvo versus McLean. The star has given a target of 81 at average of around 16 runs per over. So an extra person of McLean Sports Club of Kumarzoa. Do start 12th man. So bowler name Namit. So the target is 81 in allotted 5 was for McLean Sports Club of Kumpazoa. The two openers Nitesh and Tushar ready to face the target of 81, and Namit will start the proceedings. First power play in which only 2 players has been allowed outside the 30-yard circle. Here comes the first delivery of the second inning from Namit. I have been lofted. What a start! A superb start of the first over. Namit has been punished for 6.
So 16 is the required rate per over for Meccan Sports Club of Kumbazuwa. The first yellow has been lofted by Mr. Nitesh to the maximum. Moves on to 6. What a start. Mic change Looking to drive the ball. Just getting a single downtown. Looking for a second. No, just a single. So it's a big total they are chasing. What a innings that from Bond. It's all in sixes and boundaries. 18 balls, 66. 18 balls, 66, and this is the highest individual total by any player in this Amikunekar Chashak. It could have been a treat there for most of them to watch Bond batting. That's an outside edge. It's not running fast, and just goes in the hands of the short third, and single. They have to take as many as possible in the power play overs, and that is what they will be thinking at. Just get as many as possible. They need a strong start. Need to dominate the bowling, especially in the power play overs. In the air, I think it's slightly away from the fielder, and it also goes the distance, long distance. It went high elevation, and it cleared the fence very easily. Great strike. So 2 sixes, that's what they wanted. 2 sixes in almost every over. The score moves on to 14. Nitesh and Tushar. D-Star Old Goa versus McLaren Sports Club competing against each other in this first game. As a play and a miss swing, and the line was slightly outside, so that's why it was difficult. Earlier one was a little closer to the stump, so it's very easy to lift the ball over the top for the batter. There's a long on, and there is a deep square leg for the left-hander. Nitesh is the one who has scored those 2 sixes. McLaren Sports Club is a big name. They're playing many of the leather ball events as well as a decent side in tennis ball. Opportunity here to showcase in the Amikunekar Chashak organized by Shri Ronald Sports and Cultural Club. This is much better. This is a falling sleep, but how good that execution was. Falling down, but still keeping his eyes on the ball and balance. Third 6 coming in this power play overs. Nitesh striking big one. So marks the end of over number 1, and the score 21. 20 in fact, 20 without loss. Yeah, Bond has come on to bowl the second over. Without loss, 81 the target, 81, and it's almost like getting 16-17 runs. So they started well with 20 runs is what will get them towards the total of 81 runs in 5 overs. Bond coming in to bowl the second one, in the air, and goes down for 4 runs. Well, he came in towards the ball, but the ball dipped down. Not the best of the effort, trying to put his legs to stop that.
not exactly what you want from the fielder over there. So Bond is frustrated. Yeah, you can understand, you can sense. He's livid with the fielder. And it's go down for 4. I think at least if not picking the catches, then you should make sure that you stop the ball. You put the body line behind. That is what you have to learn. All these fielders, bowlers putting in a lot of efforts. Not easy in these conditions. This was a leg one. Yeah, you saw that leg spin. He's all controlling it from the wrist and the fingers. The last moment he changes the grip and bowls those off cutters as well as the leg cutters. Very different variations. The Bond has been in the game of cricket for a long time. Big name, that's good shot. That's really good shot. Back foot punch, lofted over the extra covers region. Slightly short in length, Bond too slow as well. And climbed on top of it, the batter, and gets away for a boundary. Well executed by Tushar. He was a magnificent batter in the leather ball cricket as well, tennis ball cricket. So they've been asked him to open, and we need such cricketers who play shots like this. So that makes it difficult for the fielding side. Another one might go the long distance. Another shot. Tushar punches onto it and hits it big way in the square leg region. Anything short is hammered away here by the batter. Barely a shot of the back foot punch. Was a class one, this one of the back foot, but this time the shot selection was perfect, but the ball was very much close to the body, so it is much easier to hit it on the leg side. A lucky draw. Another short one, another one that has been smashed for 6 runs. Bond is too short here. Well, we are having a fun time. It's raining sixes here at the moment at Ami Kunekal Cheshak. Tushar and Nitesh are just going great guns. They are going towards a target of 81 runs in a big way. The first over costed 3 sixes for the bowling side, D-Star Old Goa, but second one costing 2 boundaries, 2 sixes. And finally a dot ball. That marks the end of over number 2. But I think is McLaren Sports Club going very good. Great guns here on 40 in fact. 40 without loss.
Next, it's King's brother Ojri versus Sai Durgeshwar Soren. Requesting that the team's captain to come for the toss. Looking to swipe the ball, run out opportunity, and yes, away from the target. This throw, this over has been really good from Dinesh. He's keeping the things very tidy here, very tidy. So far, just 3 runs and a wicket in this over, pulling the things very nicely back in the favor of the Star Old Goa. The first 2 over costing 20-20 each. 3 sixes in the first over, 2 sixes and 2 boundaries in the over of Bond. The second one, Dinesh slowed the things down, but he's bowling the right length. He's trying to bowl the full. Bond was on the shorter side. You can see the ball is not connecting. Looking for the switch over. Oh, double bat. I think double bat it is, and it's for 6 runs. Oh, what a shot. Straight over the top of the comb box. Switch hit, and what matters are the runs. And the score is 50. 50 for the loss of 1. I think it's double bat over there. Will definitely make rounds in Goa. Such shots very rare in tennis ball cricket, but it does happen. So finally over ends well. We draw.
focus here. 25 runs. We can understand the better needs a lot of concentration. 25 needed. We have to wait for the umpire's call. Tushar just shuffled across on the offside. So wide call. Still down the leg side the ball. So that's why umpire called it a wide. Still just bowled 2 balls. 7 runs coming of the first 2 balls. 24 runs required in 10. 23 runs required of 10. 23 of 10. 8 in fact, 8 coming of the first 2. So 4 balls still remain. And they will be looking to target the bowler here, Rajesh. Left and right hand combination. Looking for the switch hit. Late appeal, very late appeal from the bowler. I think it was initiated by Bond there, but then no one backed him up. Excited by that broad ball, the batter still going for the switch hit. The ball angled away by Rajesh. Looking for a drive there. There's a failure, so just going to get a single. Rajesh need to keep somewhere around in excess of 15 runs. 15 to 16 maybe. And if he can do that, I think last over will be a thriller. If these last 2 balls are hit by Tushar, then certainly the pressure will be there on the bowling side. It's not easy to defend 10 runs here. 10 or 12 is very difficult to defend. That's good one. Swung away on the leg side for 6 runs. Beautiful hit this one. That was a slower leg cutter, picked up from the length and just swung away across. Great shot. Tushar. Lovely, what a strike. Great hitting this one. The first one on the leg side, this one smashes it on the offside in the Takava region. No answer there from Rajesh and D-Star, old Goa. What a magnificent batting display from Tushar. Showing what range of shots that he has on the offside, in the covers of the long off region, in the square leg and also in the middle wicket region. So long range player Tushar is making things very easy here for his side. Just 2 needed now. Six ball, 12 runs. Captain of Cyber Deshwar Chodan. Please report fast. Apali Kolambudkar is waiting here. So Ojri versus Chodan. Kings Brother Ojri versus Cyber Deshwar Chodan are going to compete in the next game. Let's see, it's time for the toss. 12 runs required. One bowler. Shubham. So King Brothers Ojri won the toss and up to the field first in that next game. That's in the air. Well fielded, very well fielded. Might pick up a couple of runs.
And that's good attempt, good effort I think from Bond, understanding that oh, they get extra. Can you believe? Can you believe? That was a simple throw, but just he kept on going in different direction. Very difficult for the fielder there. You just need to understand the basic things here in the game of cricket, small basic things. You must have assessed the conditions, throwing on the ground, the ball just deflects here and there, and very difficult for anyone to collect. 3 runs, what you have done is you have given strike to Tushar. Now it is 9 required of 5. These are small things. You should have put more deliveries to Sagar rather than Tushar. Tushar is a difficult player to bowl at. He plays shots on both sides of the wicket and very efficiently, very easily. And that's why he is someone who is a very difficult customer for any bowler to just withstand the talent and the shots. 9 required of 5. Playing with 10 players, the team of D-Star Old Goa, and we are falling short of 1 man, and that's very important in the fielding. That's good bowling, Righty shocker, looking for the drive, just getting an inside part of the bat, straight back to the bowler. So keeps one away now. 9 required of 4. So another small change in the field, just because of that line and length that was bowled by the bowler. If he's going to bowl that length and that line, so they require a protection. That's why Bond making the changes. Should get for a boundary, should go for a boundary. There is no stopping there, there is no fielding. So the ball races here across the outfield. The ball is straight. Tushar swings away very nicely, gets a crucial boundary. 76, which means 5 runs required of 3 balls. 5 of 3. Tushar is playing on 43 in 15 balls, but I think he'll be looking for a finish. Even if he gets a boundary and then a big shot, then he can still get towards that. 5 runs are required. 7 for his half century. Oh, look, oh, no one moved there, goes for 4 runs, that's a great hit here. Now 1 run are required, easy now. 1 is required from 2 balls, and Tushar is on 47. Can they see a victory, and can he see a half century? But he needs a boundary here. He needs a boundary to get towards his half century and also the team victory. A boundary is good enough. All the fielders coming in. What a big total run chase here from Tushar and his team of McLaren Sports Club. Absolutely run fast. Run fast here at Amikuna Karchashok 2026. Here comes the last ball. Lovely ball, beautiful slow ball, keeps it away, and now it is 1 ball, 1 run. Can you see a dot ball, the last one? Can you see a super over? Can you see a finish? 1 shot, it will be a finish for Tushar. He went across for the leg spinner, no connection whatsoever. Now Bond is having a word with Tushar. Bond's innings, in spite of this team, an immense contribution of 66 runs. You can see the opposite team is right now on the verge of a victory. So how good batting conditions are and how poorly the bowlers are bowled, especially against Tushar. But give credit to the batting caliber of this boy Tushar. So 1 of 1, too many things being done here. Too many things being done, lot of time taken. 1 ball 1.
shot he's going to play. Goes for the finger, another opportunity, direct it, and it's gone, reviewed. It has been reviewed. Can you believe? What a dramatic turnaround, what a throw from ball. He was there closing, there was no other chance than direct it. We got to have a look at it. Out now. Out now. OUT out. So the match is tied. Can you believe? Match is tied and we are going for a super over. Tushar has done 99.9% of the things right, but then he pushes the ball straight to one. Well, you can see the replay as well, very much short because you direct it. And you can see the line clearly, the batter is not there. And yeah, that is short of the ground by the time, yes, definitely out. So now they got the ball. What a game we are witnessing. So Tushar on strike and Hitesh the non-strikers end. So we are ready for the super over. What a super game we witnessed. It was all possible because of the direct hit from Bon. Otherwise, in that last over, it was all McLaren Sports Club who could have won this. Now, Tushar on strike. Dinesh is the bowler who has bowled explicitly well compared to all other bowlers, looking for a couple of runs. And out on the card, direct hit gone. Looks like gone. Direct hit, we have to wait. The ball is running. They might be taking single.
Yeah, very well thought here by Tushar. Tushar feels that if I'm reaching there, then there is a chance I'm getting extra run. But I think direct hits are very, very close. Very, very close sometimes. So they are zooming in to see very closely. OUT out. So he is struggling there. Direct hits are very, very close, and that's the reason why he is out. What a throw there from the deep. What a throw. Two direct hits have changed the complexion of this game. One in the last ball of the second innings where Bond threw directly on the stumps. Another than fielder there from the deep square leg region has hit and got Tushar out there. It's all about fielding now. Fielding has changed the course of this game. It's a big, big wicket. Tushar going back is a big blow. It's a big, major blow. Please make sure that you finish this over in time. It's taking a long time for the bowler to finish. That's in the air and might be run out. The what is happening? Run out, direct hit. Gone! 3 run outs have been witnessed in a span of 3 minutes. 3 run outs have been witnessed. Can you with the total harakiri here? And absolutely nervous wreck down here by the players of McLaren Sports Club. What has happened? What is happening there? Can you believe? Just dramatic things. It is all Bond now. Bond started with the direct hit, got out the batter, then it went into the super over. There was a direct hit from the deep long leg region, and the batter is out, and very next ball they got a run out. 3 run outs. That is not what you want to see. They are furious, absolutely furious with this cricket. Tushar is livid, so are all the players. I have not seen anything like this in a game where 3 run outs have been implemented, including the super over. That's so far I felt that they played so remarkable cricket, wonderful cricket from Tushar, from Hitesh, from Sagar. But last 3 run outs, last 3 balls, this is something unseen in Goa.
Just 2 runs are required. Just 2. They cruised towards that 81 runs. And there was 1 run required of 3. There were 2 door balls and a run out. It could be well, most favored McLaren Sports Club to reach into the next round. But serious dramatic turnaround. It's an absolutely thriller contest. It's not only thriller, it's very unusual as well. You see 3 run-outs in 3 balls, so that has changed the entire course of the game. What could have been the winners, now they are on the back foot. They are reeling here. And 1 shot away for the victory. Just 2 runs. And they can do it simply as well. Well, we'll remember this game for a long time, the way it has changed. Namit at the non-striker, Bond at the striker's end. What an innings that was played by Bond, finally coming up very handy. First we thought that he will go in for the losing cause, but cricket changes his game every time. It changes his colors every time. Bowling from over, now changing from round the wicket. 2 runs required. Bond in full flow. That's easily done. Bond has won it quite easily in the end. It was the Bond heroes, the direct hit that got them to the super over, and after that the direct hits and the run-outs from the fielders, and Bond has finished it very, very easily. Absolutely magnificent game that we witnessed. Well, they will be dejected. McLaren Sports Club, they could have been ended on the other side, but they ended on the wrong side. So the man of the match of this match, Maula 66 not out. Mr. Bond, kindly collect your man of the match. Mithun, kindly hand over the man of the match. Now the second match has been played between Kings Brothers of Oz versus Sai Bodhishar of the skiing players and won the toss and elected to field. So I request both the teams to send the 12 men in the commentary box. Also note, the lotteries have been available in the canteen. Those who are required, kindly collect it from the canteen.
I request Mr. Mithun White to hand over the man of the match to Bond on knockout 66. Just 18 balls. Bond kindly collected your man of the match trophy in the hands of Mithun White. Also request the dual one of Kings Brothers and Sai Borgeshwar in the commentary box. So Mr. Mithun White has been handing over the man of the match, the knockout 66 by Bond. A great inning. Also a match-turning run out has been done by Mr. Bond. As well as a super over in which only one run has been made in the opposition team and just 2 runs has been required. In first ball, Bond hit a boundary. I once again request both the teams to stand at extra person in the commentary box. Kings Brothers and Sai Borgeshwar. Batting team 12 person. Batting. Batsman कौन? विराट शनी. Bowler कौन? Bowler कौन? The start of the match, first delivery from Apali. विराज आणि स्वप्नील. Well, we start with the dot ball from Apali. This is the second match of this session between Kings versus Sai Borgeshwar. Looks like Lee switched to the field. A very good chance of run out, and yes, what a super piece of fielding by fielder because the first wicket has been down at the run out. So Swapnil has been back into the pavilion without scoring any score. So I think today is the session of mostly the players have been getting run out. In the previous match also, the same thing has been happened. So Yatin is the new batsman who will join Viraj. So in the second delivery round, it would have been lost wicket. Yatin. हाँ सब. यहाँ पे भी और 6 रन के लिए
फिर एक बार ये कैच हो सकता था, स्टार्ट लेने की जरूरत थी। हालांकि कोशिश अच्छी की थी, प्रयास अच्छा था, लेकिन जिस तरीके से शुरुआत हुई है वहां पे उनको विकेट लेना काफी जरूरी। अब अली कलंगुट गोवा के जाने माने ऑलराउंडर, और उन्होंने यहाँ पे लेग स्पिन डाला था और बल्लेबाज इनसाइड आउट शॉट खेलने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन विफल हो चुके हैं। फिर एक बार स्लोअर गेंद सीधा फील्डर के हाथ में, यहाँ पे लेग कट थोड़ा सा धीरे डाल रहे हैं। हालांकि उनके पास क्षमता है कि तेज भी लेग कटर जो है वो डाल सकते हैं, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि गति में परिवर्तन करने का यहाँ पे ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल 7 रन पर स्कोर। ये देखिए कैच हो सकती है, जी नहीं, विकेट कीपर के ऊपर से और चकमा देती हुई यहाँ पे शॉर्ट फाइन और शॉर्ट टेल को सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। हालांकि ये लकी बाउंड्री बल्लेबाज के लिए, यानी कि एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 11 रन बिना कोई एक विकेट खोने के बाद। तो अब दूसरी ओवर गेंदबाजी के लिए आए हैं यहाँ पे सुचित। तो यहाँ पे भी सीधे बल्ले से खेला गया शॉट और ये देखिए एक्स्ट्रा बाउंस, अच्छा शॉट, सही संपर्क, फील्डर तैनात थे, लेकिन ये बाउंस जो है वो बीट करता हुआ दोनों फील्डर को चौका मिलता हुआ। थोड़ी सी लोअर फील्डर स्किन की प्रयास था कि यॉर्कर यहाँ पे डाले, लेकिन चूंकि यहाँ पे अपनी लेंथ पर और बल्लेबाज को यहाँ पे फायदा मिला, तो विराज अच्छे जा रहे हैं यहाँ पे एक छक्के और चौके के साथ। फिलहाल 11 रन पर खेल रहे हैं विराज। 5 ओवर का ये मुकाबला और दूसरी ओवर यहाँ पे फिलहाल जारी। ये देखिए बहुत अच्छी गेंद, वाइड यॉर्कर, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। जब आप कम से कम अगर 3 गेंदें ऐसे एग्जीक्यूट कर सके तो आप एक अच्छे गेंदबाज की श्रेणी में आपको लाया जाता है। तो सुचित वहां पे कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आगे डालने का प्रयास करें, ज्यादा ज्यादा यॉर्कर करने का प्रयास करें। इस बार भी लेग कट कवर्स में खेला गया, यहाँ पे रन आउट हो सकता है। जी हाँ, रन आउट हुआ। देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ, नॉट आउट करार दिया, यहाँ पे नॉट आउट करार दिया। पहले लगा था कि यहाँ पे ये आउट हो सकते हैं, कि शायद थ्रो जो था थोड़ा सा ऊपर था और इस वजह से यहाँ पे मौका मिला नॉन स्ट्राइकर को अपनी चोट पर आने का, और ये मुझे लगता है कि आसान सा मौका गवाया। यहाँ पे एक अच्छा थ्रो होता तो शायद वापस जाते यहाँ पे नॉन स्ट्राइकर यतीम। तो लगातार 2 डॉट गेंदे, दूसरी ओवर जारी। यहाँ पे डीप एक्स्ट्रा कवर्स के एरिया में यहाँ पे फील्डर तैनात, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग में भी यहाँ 5 फील्डर जो है तैनात किए गए हैं। ये इनसाइड आउट शॉट और यहाँ पे फील्डर तैनात, इसी की बात कर रहा था। जिस तरीके से लाइन है, ये फील्डर काफी अहम होता है, क्योंकि ज्यादातर शॉट जब लेग कटर्स डालते हैं और आगे डालते हैं तो बल्लेबाज को कवर ड्राइव खेलना लाजमी पड़ता है, और इसी की वजह से वो फील्डर काफी अहम। अच्छी सूझबूझ भरी गेंदबाजी, ज्यादा गति नहीं, लेकिन मिश्रण बहुत अच्छा कर रहे हैं। विकेट खेलने का प्रयास और अच्छी गेंद, वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप रखा यहाँ पे और एक डॉट गेंद। एक चौका आया था पहले गेंद पर, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी। फिलहाल 5 ही रन आए हैं इस ओवर से, तो कुल मिलाकर स्कोर है 16।
थोड़ा सा और मुझे लगता है मोमेंटम को आगे लेके जाने की जरूरत है। 5 ही ओवर का मुकाबला होता है तो ज्यादा मौके मिलते हैं बल्लेबाजों को। ये फुल टॉस गेंद की, लेकिन यहाँ पे ये देखिए बहुत कठिन कैच हो सकता है, लेकिन लगभग लिया था। बहुत अच्छा एफर्ट, बेहतरीन एफर्ट, क्योंकि लंबा छोर है वहां पे और लगभग जो 20 गज का ये इनर सर्कल है वहां पे पहुंच गए थे। लेकिन ऐसी कैचेस कभी कभी आपके हाथ से छूट सकती है, तो लेकिन बेहतरीन एफर्ट वहां पे फील्डर द्वारा। तो 2 रन के साथ इस ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के बाद स्कोर है 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पे चल रही है साई बुर्गेश्वर चोडन और किंग्स ब्रदर ओजिंग, इनके बीच में यह मुकाबला। अभिषेक और ये भी छूटी, ये भी तेज तर्रा शॉट थी, कवर ड्राइव बहुत ही तेजी से जा रही थी यहाँ पे और अच्छा रोका, यहाँ पे चौका पे रोका। कैच थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन लेना चाहिए था। लगातार 2 गेंदों पर 2 मौके, लेकिन दोनों कठिन मौके, वो आसान नहीं है, लेकिन कोशिश अच्छी की थी। ये देखिए ये शॉट लॉन्ग ऑफ की दिशा में सीधे पता चला कि 6 रन के लिए, देखा भी नहीं इस गेंद को, बहुत ही अच्छा शॉट। 3 के बल्ले से आता हुआ ये 6 रन सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। अच्छा प्रहार, करारा प्रहार और एक अच्छी रणनीति के साथ उभरे हैं। जब भी मिलता है आगे मौका तो पूरी ताकत झोंकते हैं उस शॉट में। इस बार भी स्विंग किया, ये चौका, इसे रोकना लगभग नामुमकिन सा होगा क्योंकि यहाँ पे तेज बाउंड्रीज है फाइन लेग की दिशा में। जब ये बाहर जाता है गेंद तो पीछे ही दौड़ना पड़ता है और ज्यादातर गेंद ही जीतती है यहाँ पे। तो 1 और 4 रन, ये अच्छा मोमेंटम। यहाँ पे छक्का मिला, चौका मिला, यतीम के बल्ले से स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन। यहाँ पे इसको विद स्पिन विद टर्न खेला गया, ये ऑफ करके डाला था गेंदबाज ने। ये अच्छा शॉट, ऊपर गई है गेंद, कितना पीछे जाएगी? जी आ गई, पीछे गई और ये 6 रन के लिए बहुत ही बढ़िया स्विंग, बहुत ही बढ़िया आउटकम। क्या बल्लेबाज जिस तरीके से यहाँ पे पोजीशन में आते हैं, और ये भी ऑफ कटर थी लेकिन बाउंस पर खेल गई है। स्विंग काफी अच्छा है बल्लेबाज विराज का और यतीम का। यतीम यहाँ पे ये बड़ी ओवर करने के प्रयास में, क्योंकि दूसरा ओवर जो था वो सिर्फ 7 रन आए थे और यहाँ पे ये जरूरी है कि एक ओवर काफी महंगा आ जाए गेंदबाजी करने वाली टीम किंग ब्रदर्स के लिए। और यहाँ पे स्विच, ये भी 6 रन के लिए जाएगी, ये भी सीमा रेखा के बाहर। हवाई फायर, कोशिशें जारी है गेंदबाज की, लेकिन विराज यहाँ पे अपनी ताकत दिखा रहे हैं, दम दिखा रहे हैं। सिर्फ लेग साइड में नहीं बल्कि स्विचर के जरिए भी मैं यहाँ पे 6 रन बटोर सकता हूँ। क्या आतिशी बल्लेबाजी, और इस ओवर में पूरा छा चुके हैं यहाँ पे यतीम। 6 रन 4, उसके बाद 6 3 छक्के और 1 चौका। इसके बदले स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 41 रन। तो 41 रन, ये बड़े स्कोर के आसार है, ये बड़े स्कोर के आसार है। और एक चमाट और एक बड़ा हिट सीधा मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से यहाँ पे, यानी कि स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन 1 विकेट खोने के बाद। ये बहुत महंगी ओवर, पहली 2 ओवर जो थी वो किंग ब्रदर ओजरी के पक्ष में थी, लेकिन यहाँ पे आए कुल 29 रन, 4 छक्के और 1 चौकों की बदौलत 29 रन बनाए बल्लेबाज युवराज ने।
47 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद अब आए हैं चौथी ओवर रोहित लेकर। तो अब यहां पे जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है और यतीन लय में दिख रहे हैं, तो अब विराज और यतीन की ये पारी जो है साझेदारी है वो अब यहां पे डट रही है, सज रही है और अच्छे से खेल रहे हैं दोनों। लाइन में आकर जहां पे मौका मिलता है वहां पे चौका और छक्का बटोरते हैं। ये भी थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, जरूर प्रयास भी किया था, लेकिन चूंकि वहां पे थोड़ा सा तेज मारने का प्रयास किया था, अगर टाइमिंग करते तो ये मौका बन जाता था। तो रोहित यहाँ पे दाएं हाथ के गेंदबाज राउंड विकेट गेंदबाजी के लिए आए। ये शॉर्ट गेंद, यहाँ पे पुल शॉट, यहाँ पे फील्डर तैनात, ये अच्छी कैच, बेहतरीन कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच। ये आसान नहीं था, बहुत ही मुश्किल कैच थी, इसको आसान कर दिया इस फील्डर ने। लगता है करीब से करीब 15 से 20 मिनट और भागे अपने दाई ओर और इस विकेट को लिया। काफी अहम था, मोमेंटम जा रहा था यहाँ पे साई बोर्डेश्वर चरण के खेमे में, तो ये कैच काफी जरूरी और अहम था। तो विराज, ओपनिंग बल्लेबाज विराज को यहाँ पे चलता किया 13 रन पर। तो नहीं यहां पे कोशिश की थी, इनसाइड आउट शॉट खेलने का प्रयास किया था, लेकिन डॉट गेंद। ये अच्छी ओवर है, फिलहाल इस ओवर से एक भी रन आया नहीं है, तो थोड़ा सा धीमे डाल रहे हैं, थोड़ा सा लेग कटर डाल रहे हैं। ये भी अच्छी, यहां पे कैच हो सकती है और कैच लिया, यहां पे गेंदबाज ने आकर कैच लिया। हालांकि दोनों के बीच में यहां पे थोड़ा सा जो कम्युनिकेशन था, जो बातें थी वो सही से हुई नहीं, लेकिन फिर भी कैच लपक लिया है। यानी कि 4 गेंदों पर 2 विकेट लिए हैं और एक भी रन अभी नहीं दिया है फिलहाल रोहित ने। तो वापसी कर रहे हैं यहाँ पे फिर एक बार किंग ब्रदर्स ओवरसीज की टीम। और ये भी शॉट, यहाँ पे पुल शॉट खेलने का प्रयास किया था, छोटी छोटी थी लेकिन थोड़ी सी तेज भी आई और इस वजह से पुल शॉट जो हुआ वहां पे एज लगा और दोनों ने यहाँ पे दौड़ लगाई, विकेट कीपर ने और गेंदबाज ने, लेकिन गेंदबाज ने यहाँ पे लपक लिया है। तो कट एंड बोल्ड का डिस्पोजल होगा ये। तो बहुत बेहतरीन है जिस तरीके से टप्पा यहाँ पे गिरा रहे हैं, अच्छे स्पॉट पर गिरा रहे हैं और अच्छी सटीक लाइन के जरिए यहाँ पे बल्लेबाज को बांध के रखा है। फिर एक बार तैयार थे यहाँ पे गेंदबाज, लेकिन रोहित तैयार नहीं, तो वापस गेंद ये यहाँ पे फेंकनी होगी। और ये बहुत करीबी मामला था, बहुत करीबी, बहुत ही खराब थ्रो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बैकअप था जरूर। अंदरूनी किनारा और स्टंप के काफी नजदीक था, ये काफी नजदीक था। अभी भी एक भी रन आया नहीं। क्या शानदार ओवर है ये, और ये भी कैच हो सकता है जी नहीं, और ये चौका नहीं। बहुत अच्छा बैकअप था वहां पे, बहुत बढ़िया बैकअप। और एक रन ना तो ये मैडन ओवर, तो रन निकाले नहीं है यहाँ पे। शायद बल्लेबाज यकीन है अपने आप को स्ट्राइक पर लेना चाहते हैं, इस वजह से ये मैडन डबल विकेट का ओवर जाता हुआ गेंदबाज से रोहित के खाते में। तो देखिए किस तरीके से कांटा बदलता है। पिछले ओवर में आए थे 29 रन, तब मुकाबला और मोमेंटम जो था साई बोर्डेश्वर चरण के साथ था, उनके पक्ष में था, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो इस ओवर में 2 विकेट चटके हैं और मोमेंटम को काफी उनके तरफ बदल दिया है, झुका दिया है यहाँ पे रोहित ने अपनी गेंदबाजी के जरिए। तो अब आखिरी ओवर, स्कोर वहीं पर रुका हुआ 47 रन पर, 3 विकेट के नुकसान पर। बॉलर विकास, तो अब इस स्कोर बोर्ड में थोड़ा सा विकास होना जरूरी।
तो यहाँ पे लॉटरीज जो है, लॉटरी कूपन जो फैसिनो बाइक है आपको दिख रही है, ये लॉटरी के जो विनर्स है उनको मिलेंगे। तो लॉटरी कूपन जो है वो कैंटीन में उपलब्ध है, अगर आप लेना चाहते हो तो कैंटीन में से आप ले सकते हैं। और ये देखिए, ये बहुत खराब गेम, बहुत खराब गेम, अपने आप को वार्म अप भी नहीं किया, तैयार नहीं किया, और इस वजह से यहाँ पे ये अबाउट वे स्नो बॉल और फ्री उठाएंगे और आपाली करेंगे उठकर, जिनके पास अनुभव है, जो कप्तान है, जिनके पास काबिलियत है, बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं, गोवा के लिए कैप्टनसी किए हैं उन्होंने प्रेसिडेंट कप में, तो बड़े खिलाड़ी है। और ये देखिए, ये स्लोअर डालते हुए गेंदबाज, तो ये गति नहीं देंगे यहाँ पे, पता चला जिस तरीके से यहाँ पे पहली गेंद यहाँ पे फेंकी थी, तो आपाली ने कहा है कि आप आराम से गेंद डालिए, दबाव मत लीजिए, फिलहाल गेम हमारे पक्ष में है, तो आप अच्छी गेंदें डालेंगे तो हमको यहाँ पे मौका मिलेगा ये मुकाबला जीतने का। तो समझा रहे हैं युवा खिलाड़ी को। उसके बाद एक अच्छी गेंद, देखिए फिर एक बार स्लोअर यहाँ पे गेंद जाती है, लेकिन गति नहीं है, इस गेंद पर गति नहीं है, तो रोकने का मौका मिलेगा और 2 रन निकालेंगे, तीसरे का कोई भागेगा नहीं, क्योंकि ये स्ट्राइक लेंगे यहाँ पे यतीन। तो 3 रन फिलहाल इस ओवर से आए हैं और इसी के साथ 50 रन पूरे यहाँ पे साई दुर्गेश्वर चोरन। लेकिन मुझे लगता है खेमा कुछ और ज्यादा रनों की मांग करेगा। 50 रन हालांकि पिछले ओवर में होने चाहिए थे, लेकिन पिछला ओवर जो था वो मेडन डबल विकेट चला गया रोहित और उनकी टीम किंग ब्रदर्स के पक्ष में। तो अब आखिरी ओवर में 4 गेंदें बची है, कितना स्कोर यहाँ पे सोचेंगे। गेंदबाजी काफी धीमी, काफी स्लो, लेकिन बढ़िया। ये देखिए, ये गति थी यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा आगे गिरा ये गेंद, कोई मौका नहीं, रनआउट का मौका आसान सा, और ये देखिए आउट। इनको छोड़ना नहीं चाहिए था ये एंड, और यहाँ पे हरीश आउट होकर वापस और नॉन स्ट्राइकर पर ही रहेंगे यहाँ पे यतीन। तो ये गलती की, ये बड़ी चूक, क्योंकि स्ट्राइक पर आना चाहते थे यतीन, हरीश को रुकना चाहिए था वहां पे स्ट्राइकिंग एंड पे, लेकिन अपना एंड जो था वो छोड़ चुके थे और आसानी से रन आउट, यानी कि 1 ही रन जुड़ेगा, स्कोर 51 रन। इसको स्वीप किया और ये शॉट, ताकत थी शॉट में, स्लोअर गेंद थी, उसको पिक किया यहाँ पे और दे दिया है बड़े शॉट के लिए। ऐसी शॉट की और ऐसी फिनिश की काफी जरूरत है यहाँ पे साई दुर्गेश्वर चोरन के लिए। तो इस 6 रन के बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 57 रन पर अब जा पहुंच चुका है ये स्कोर। तो अगर यहाँ पे कम से कम और एक 7-8 रन बन जाते हैं तो एक 65 के आसपास स्कोर जा सकता है, तो अच्छा स्कोर हो सकता है, इतना बढ़िया भी नहीं लेकिन अच्छा कहा जा सकता है। यहाँ पे ड्राइव किया, इसको रोकना चाहिए था, अब रोकना नामुमकिन, सीधा गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। तो मैंने पहले ही कहा था और थोड़े रन आते हैं तो अच्छा होगा ये स्कोर। तो इस 4 रन के साथ स्कोर है 61 रन 61। तो पुनीत के 2 बढ़िया शॉट और अब थोड़ी से बेहतर दिख रही है यहाँ पे टीम, थोड़ा सा बेहतर स्कोर दिख रहा है साई बुर्गेश्वर चोरन का। वो जो मेडन ओवर दिया था वही यहाँ पे कुछ शायद घातक का साबित बन सकता है सेकेंड इनिंग्स में। ये दिया फिर टॉस गेंद थी और यहाँ पे दे दिया 3 गेंदें अच्छी और 3 गेंदें उतनी खास नहीं, तो इस वजह से 3 गेंदों में आए हैं कुल 16 रन और बहुत ही बड़ा फिनिश यहाँ पे मिलता हुआ बल्लेबाज पुनीत के बल्ले से 6-4-6 के साथ यहाँ पे समाप्त किया और उसके साथ 67 रन 67 रनों की यहाँ पे
जो जो पारी है वो समाप्त हो चुकी है 5 ओवर के बाद साइड छोड़न की। तो 68 रन 68 रन चाहिए यहाँ पे जीतने के लिए।
sum up the over number 1 after the completion of the first over. It is 2 for 9. Second ball, and it will be bowled by Yatin. First ball down the ground into the job, and the ball will race away to the boundary. Yes, it does. Suchit has started to open up now, betting on 5 runs. This time once again, straight to the man, bit of a fumble, trying for that single, but denied rightfully by Apali Kalangutkar because he knows the wicket of Suchit is a wicket with the prize at this moment. The shot in the air, the fielder will land in no man's land, will be picked up at 1 bounce, will be just a single, and now that man, Akali Kalangutkar, is on strike. So then a single as far as this over is concerned. Trying to sweep, asking for a wide. Yes, says the umpire. The main umpire, Ritesh Naik, and alongside him at the square leg, it is Pinnabalkar, 2 of the experienced umpires when it comes to go on cricket circuit. This time trying to hit the ball very hard, but couldn't time it properly. Apali gets a single, gets to the other end, and now it's up to Suchit. How he will bat for the rest of the deliveries remaining in the over. This in the air might be another chance. The bowler judges, and finally is that man Suchit, who is walking back to the pavilion. It's 9 for the loss of 1. Well, so requesting the batters to please hurry up. This time once again swinging, asking for a wide signal by the umpire. So another extra is to tell him using the double digits is 10 for 1.
Bashir, the new man at number 3. This time down the ground, will just be the run to sum up the over number 2 after the completion of the second over. It is 11 for the loss of 1. All runs on the scorebook. Next match will be played between Tigers Taligawa and D-Star Ogwa. Requesting the captains to please come to the come box for the toss. लास्ट बॉल सिंगल है ना? लास्ट बॉल सिंगल है. Second runs on the scoreboard, third over of the innings, and it will be this time let's it go, but no reaction from the umpire. Dot ball to start of the proceedings in the third over. 11 for 1 in the third over. We are of the chase, and Navesh, the left arm. Dravish into the attack. A single. Requesting the Tigers Taligawa skipper and the skipper of D. Bashir to please come for the toss. Next delivery from Dravish. So far, dot and a single. Slower delivery in the air. Might be a chance. Dot. And will be another single. It is said in the cricket that catches in your matches. Every catch comes to you should be taken. And this was the easiest of one. That should be next delivery. Swing and miss, another dot. नंतर 2 सिंगल आणि आता this time no proper timing. This has been story all day along, and now for the batter is out in the center, Apadi and his opening partner were struggling with the timing. Now one down batter is also struggling with the timing a bit. Next delivery. This time stylish Apali unleashes 1 bounce, 2 bounce into the boundary positions. Yes, it goes. It will be a boundary. With this boundary, the score moving to 18 runs for the loss of 1 after the completion of 3 overs. Ball 50 more required.
in comes the bowling change. 50 रन आहे 12 बॉला. Chinmay, 12 deliveries, 50 to get. चिन्मय This time India away from that field and waiting for the umpire signal. पहिला काय केलं तर 6 It's looking like it's a maximum signal by the umpire. So more 6 runs added to the tally, moving to 24 with this 6 more 44 from here on. From 11 deliveries is a requirement for the team Apali Kalanguttar and his company. Next delivery. Once again, up and over the infield into the gap, and the ball will race away to the boundary as it does. The score moving to 28. भाई अभी 40 more. रात को ही करने का सब कुछ. 40 more. Next DB. This time tries to switch it a delivery. Good comeback by the bowler after being hit for a 6 run for delivery. Then in comes the boundary. Then in comes the dot ball. This time once again into the sculling region. It will go away and it will be a boundary. Once again in this over, there has been a flurry of runs already. The score has moved to 32. शॉट राइट. This time a good looking shot. India, the fielder will see serve over his head and it will be another much more good looking shot. सर बॉल काढ बघा. ताणी काढला तू गेल काढ. Thirty runs more from here on. कोण जिंकला? बॉन्ड जिंकला. This time keeping it away from the hitting out of the bat, and the umpire says it's a legal delivery to sum up the over number 4 after the completion of 4 is 38 for the loss of 1, and in 6 deliveries it will be 5 maximums, 30 runs to be scored in the final over of the chase. The news from the center for the next match is that the Star Olga have won the toss and elected to field first. In comes the final over. In comes the final over and it will be bowled by अभी बद्री का भी first ball
No proper timing. Chance for an out. A single run. Sagar into the effect to build the final over. This time once again a decent delivery of full and one beating the batter all on up. Dot ball in the final over, good bit of boarding as well. The pressure which is applied by the bowlers. It's been kept up, another decent delivery, another dot ball. This time in the air, the fielder will see it's all over. It's another maximum. It's coming late, but it's too late now for the team batting. They were chasing 68 and they are far behind now in this game. This time slower one attempted away from the guidelines of the wide umpire signals it a wide delivery. This time once again in the air, the field will be a mere spectator. Next delivery, another slow run, ending up bowling a full toss, straight to the man, and he takes it, and it will be a commanding victory for the team. She board your short sudden hard luck Apali Kanangatkar and team commanding performance by Sri Borgeshwar Jordan. What a match it was. From the start applied the pressure and applied it till the end. So the man of the match goes to Yatin for his brilliant knock of 37 runs. Requesting Yatin to please come and collect the man of the match award. So the news from the center for the next match is that the Stars Olga have won the toss and elected to field first.
facing the fielding side. Deep stars will go to please set the field quickly, and also kind request to the opponents to please back up and come to the ground. And a note going out to the both keepers. Please send your 12th man before the first ball is bowled. Now the two officials out in the center, Sir Rupesh Naik alongside Sir Pratish Naik, and the third umpire, experienced one, Punya Palgar. In case you are just joined us now, this is Amikundekar Shashaka 3.0 2026, right here at the beautiful venue of requesting the man of the match, your team, to please come up and collect the man of the match award. It's a kind request the player of the match of the last match, your team. The next match between कॉर्डलेस माइक चालू है. नमस्कार मित्रांनो, मी भूषण गोळे. आम्ही कुणायकर चषक ही स्पर्धा 29 एप्रिल ते 3 मे या रोजी होत आहे. या स्पर्धेमध्ये सहभागी झालेल्या सर्व खेळाडूंना, आयोजकांना आणि संघ मालकांना माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू. man of the match of the last match, यतीन मागचं दुसरा मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड कलेक्ट कर गेस्ट ऑलरेडी पावला असा दुसऱ्या लागी मागण्यासाठी मॅच मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड जो असा तो मॅच कलेक्ट करतो. फील्ड मॅच जाता आणि ती जाता डी स्टार्स ओल्ड गोवा आणि तालिगाव टायगर्स यांच्यामध्ये. डी स्टार्स ओल्ड गोवा टॉस जिंकता आणि पहिली करता फिल्डिंग. ओव्हर टू सर हरीश काकडकर इन द कॉम बॉक्स. यहाँ पे आज के दिन का तीसरा मुकाबला टॉस जीता है यहाँ पे डी स्टार ओल्ड गोवा की टीम ने. इनके कप्तान साजू बॉन्ड और गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. और जी हाँ, हालांकि आजकल गेंदबाज टॉस जीते तो गेंदबाजी ये डिसीजन बहुत ही आसान डिसीजन होता है किसी भी कप्तान को. तो यह अहम मुकाबला है क्योंकि टाइगर्स तालिगांव की टीम बहुत ही तगड़ी टीम और उनके साथ उनके खेमे में उनके कप्तान मुख्तार कादरी जो कि गोवा के एक लेजेंडरी क्रिकेटर है. बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा रुतबा है दोनों क्रिकेट में, लेदर बॉल क्रिकेट कहें या टेनिस बॉल क्रिकेट. हालांकि बहुत मान सम्मान दिया जाता है उनको जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट आगे लेके गए हैं. विनर से बहुत बड़े बड़े प्रतियोगिता जिस तरीके से गोवा में घटती हैं, बहुत बार चैंपियंस रह चुके हैं, प्लेयर ऑफ द सीरीज और बहुत किताबें उनके नाम. तो अब देखेंगे किस तरीके से आगे बढ़ते हैं. हालांकि क्या मुकाबला था जो पहला मुकाबला सुपर ओवर में चला गया था. वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट. दैट्स सो फार वंडरफुल क्रिकेट. तो यहाँ पे देखिए क्रीज का इस्तेमाल किया है और ये लॉफ्ट किया है फाइल की दिशा में. बाउंस था वहां पे, थोड़ी सी छोटी गेंद थी. जानते हैं कि यहाँ पे मारेंगे तो 4 रन आसानी से मिलेंगे. तो सैफ नॉन स्ट्राइकर की छोर पर
किस तरीके से ये शॉट खेला गया और फाइन लेग की दिशा में। तो अगर आपको तेज मारने की जरूरत नहीं है, अगर आप अच्छा प्लेस करते हैं और विकेट के फील्डर के ऊपर से मारते हैं तो चौका तो यहाँ पे आसानी से मिल सकता है। ये फिर एक बार उठाने का प्रयास, थोड़ी सी बाउंस, और अभी भी बहुत फिट रखते हैं अपने आप को। पहले देखा नहीं, पहले समझा नहीं गेंद कहाँ पर थी, तो लगता है लग गया उनको यहाँ पे। ये चोट ऊपर आया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस, और कह रहे मैं ठीक हूँ। क्रॉस शॉट खेलने के प्रयास में कभी कभी एज जो है लग जाता है और ऊपर आता है। दोनों की टीमें जो है वो तीसवाड़ी तालुका से है, ओल्ड गोवा की टीम कहा जाए, डी स्टार या टाइगर्स तालीगांव। ये बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़े नाम है और अच्छा लगता है कि हर एक तालुका से यहाँ पे जो प्लेयर्स है, खिलाड़ी है, उनकी टीमें है जो खेल रही है आमिकोड़े का चषक में। इस बार अच्छी गेंद, इसको ड्राइव करने का प्रयास किया था। कभी कभी सोच जिस तरीके से होती है कि लेदर बॉल क्रिकेट के माहिर खिलाड़ी दोनों बल्लेबाज, तो यहाँ पे गेंदें कम होती है। लेदर बॉल क्रिकेट में आपको 20 ओवर का खेल या उससे ज्यादा खेलने को मिलता है, समय मिलता है, वक्त मिलता है। टेनिस क्रिकेट में वो वक्त नहीं मिलता है किसी भी बल्लेबाज को, तो आते ही अपने शॉट्स खेलने पड़ते हैं। ये बहुत ज्यादा बाहर और यहाँ पे अतिरिक्त रन जरूर जुड़ जाएगा खाते में। तो वही कह रहा था कि यहाँ सैफ जो कोचिंग करते हैं लेदर बॉल क्रिकेट में युवा प्रतिभावान खिलाड़ियों को, तो लेदर बॉल क्रिकेट में उनका बहुत बड़ा नाम है। और हालांकि मैंने देखा है कई बार टेनिस बॉल क्रिकेट में बड़े बड़े पारियां खेलते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा समय चाहिए। तो विकेट की तरह थोड़ा सा आगे आते हुए यहाँ पे सिग्नल करते हुए लोग अंपायर को। नमित यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कवर ड्राइव खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद जो थी और लगभग यॉकर, वाइडी शॉकर, तो जो यहाँ पे स्क्रीज करने का जो मौका था वो मिला नहीं, तो सीधा जो फील्डर के हाथ में एक ही रन जुड़ जाएगा। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। ये देखिए शॉट क्या पिक किया यहाँ पे लेग साइड में, बहुत ही उम्दा शॉट। थोड़ी सी आगे थी विद द टर्न, यहाँ पे खेला स्क्वायर लेग की दिशा में और 6 रन बटोरे। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ये बल्ला घुमाते हैं। हालांकि इतनी बुरी गेंद थी नहीं, लेकिन ये है मुख्तियार कादरी का जलवा। देखिए कलात्मक शॉट का कलाई के जरिए खेला गया, ताकत थी इस शॉट में, और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। अच्छी शुरुआत मिलती है यहाँ पे, एक चौका और एक छक्का मुख्तियार कादरी के बल्ले से। ये इनसाइड आउट शॉट, यहाँ पे फील्डर तैनात, ताकत नहीं थी शॉट में और यहाँ पे कैच छोड़ दिया। अरे भाई ये मुख्तियार कादरी है, खेल रहे हैं, उनका कैच आप छोड़ नहीं सकते हैं। ये लंबी इनिंग्स खेलने के लिए माहिर है। ये आसान सा मौका था, ये बहुत आसान मौका था, और मुख्तियार कादरी की कैचेस छोड़ना तो आपको महंगा पड़ सकता है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 14 रन बिना कोई विकेट को। बड़ा मौका और बड़ा जीवन दान दिया है यहाँ पे बड़े खिलाड़ी को। तो साजू बॉन्ड, देखिए काफी रिस्पेक्ट करते हैं साजू बॉन्ड मुख्तियार कादरी को। जिस तरीके के बड़े खिलाड़ी है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है ऐसे बड़े खिलाड़ियों से, और बातें भी करते हैं कभी कभी। लेकिन आज दोनों विपक्षी खेलों में, दोनों विरोधी या टीम में यहाँ पे खेल रहे हैं अपने आमने सामने। यहाँ पे ये दूसरा मौका दिया है, फील्डर वहां पे तैनात, और इस बार कोई मौका नहीं, साजू ने लिया है यहाँ पे बड़ा विकेट, बोल्ड स्ट्राइक करते हुए। दूसरा मौका गवाया नहीं, पहला मौका जरूर गवाया था मुख्तियार कादरी। और फिर एक बार इनसाइड आउट शॉट खेलने के प्रयास में गेंद ऊपर गई, उनको यहाँ पे जो डिस्टेंस था वो मिला नहीं,
तो इस वजह से ताकत की कमी और मुखियात कर दी वापस 14 रन पर पहली बड़ी विकेट यहाँ पे खोती हुई टाइगर्स तालियां। जिस तरीके से बॉन्ड ने सेलिब्रेट किया था यहाँ पे जाकर उस फील्डर को दाद दी, कांग्रेचुलेट किया और पता है उनको कि कितने बड़े खिलाड़ी हो और कितना बड़ा विकेट था वो, तो सेलिब्रेशन तो बनता है जरूर। और उसके बाद अब आए हैं मैदान में यहाँ पे गौरीश खांडेपारकर और एक बहुत ही बेहतरीन लेदर बॉल के खिलाड़ी। तो लेदर बॉल के बहुत खिलाड़ी हैं इस टीम में, बहुत बढ़िया खेलते हैं दोनों साइड में, ऑफ साइड और लेग साइड में। ये काफी ज्यादा बाहर, तो बॉन्ड को पता है कि ये जो बल्लेबाज है किस तरीके से खेलते हैं, काफी बार खेल चुके हैं इनके साथ, इनके विरुद्ध, और उनको पता है कि किस तरीके से फील्ड सजानी चाहिए इन बल्लेबाजों को। ये थोड़ा सा बाहर था, बल्लेबाज शफल हुए, इस वजह से बाहर की ये गेंद और बल्लेबाज मांग कर रहे थे, लेकिन जो शफल होते हैं तो अंपायर को देखना पड़ता है कि वाइड है कि नहीं है। कई बार विरोधाभास होता है बल्लेबाजों के विचार में, लेकिन अंपायर जो होते हैं वो रूल के हिसाब से, और ये तगड़ा शॉट, लेकिन सीधा हाथ में उनकी ताकत नहीं थी, उतना अच्छा संपर्क नहीं था, लेकिन शॉट अच्छा खेले थे, ऑन द राइज खेले थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ताकत कम और इस वजह से आउट होते हुए गौरीश खांडेपारकर। और एक बड़ा झटका, साजू बॉन्ड पूरा छा रहे हैं यहाँ पे मैदान में, 2 बड़े विकेट लिए हैं और पूरा जोश में मैदान पर। 15 रन पर 2 विकेट खोती हुई है यहाँ पे टाइगर्स तालिबान। हालांकि शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन उसके बाद सिर्फ एक ही रन आया इस ओवर में और 2 विकेट अभी भी 3 गेंदे डाल चुके हैं बॉन्ड वहां, और उसमें से 2 विकेट चटकाई हैं उन्होंने, और एक जो मिला है वो बल्ले से नहीं बल्कि अतिरिक्त रन था। और अब तेग बहादुर आए हैं मैदान में। सैफ अली अभी भी नॉन स्ट्राइकर के छोर पर, हालांकि इतना स्ट्राइक मिला नहीं उनको, तो अभी भी काफी समय है। पिछले मुकाबले में हमने देखा था जिस तरीके से एक ओवर मैडम घटा था, लेकिन उसके बाद काफी बढ़िया फिनिश हुआ था और 67 रन जो खड़े किए थे वो काफी थे साई वर्गेश्वर टीम के लिए। अगर आप अच्छी गेंदबाजी करें तो मुझे लगता है 65 का आंकड़ा अगर छूती है कोई टीम तो यहाँ पे डिफेंड कर सकते हैं अच्छी गेंदबाजी के जरिए। ये सीधा खेला गया, वहां पे कोई तैनात नहीं, और ये जाएगी सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। थोड़ा सा शफल किया, बॉन्ड ने भी वो फॉलो किया, लेकिन अपने शॉट को खेल चुके थे। तो क्या ये फील्डिंग रणनीति सही थी, क्योंकि उन्होंने एक स्विच हिट के लिए तैनात किया था और इस वजह से लॉन्ग ऑफ जो है वो पोजीशन ओपन हुआ था, वो अंदर आए थे मिड ऑफ के दिशा में। तो बेहतरीन यहाँ पे सोच तेग बहादुर की, और यही होना चाहिए, प्लेइंग विद द फील्ड जिसे कहते हैं। अपने आप को स्विच हिट खेलने के लिए रोका और डाउन द ग्राउंड खेला, और फिर एक बार वही फील्ड रख रहे हैं बॉन्ड। इस बार अक्रॉस द लाइन, हालांकि यहाँ पे भी मौका था कवर्स की दिशा में खेलने का, लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलने का, लेकिन फिर भी अक्रॉस द लाइन खेले। यहाँ पे डॉट गेंद, स्कोर है 21 रन। इस ओवर से आए हैं सिर्फ 7 रन अभी, और थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली, जो डीप पॉइंट जो रखा था स्विच हिट के लिए उसको अंदर लाया गया है। तो देखेंगे किस तरीके की गेंद डालते हैं, शायद ये सीधी होगी या अंदर आएगी ये गेंद।
या सीढ़ी डाली, क्योंकि उसको अंदर लाया गया था, अगर लेग स्पिन डालते तो उसको रखते वहां पे। तो ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं क्रिकेट में, आपको परखना पड़ता है, जांचना पड़ता है। और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हेलो 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 हेलो, लाइव चेक करो। तो यहाँ पे आगे बढ़ने का प्रयास, सीधे मारने का कोशिश की थी, लेकिन थोड़ी सी यॉर्कर यहाँ पे हुई और 1 ही रन का इजाफा बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर। तेज बहादुर और सैफ अली दोनों मैदान में जुटे हैं, एक साझेदारी की जरूरत आस लगाए बैठे हैं यहाँ पे टाइगर्स तालिगांव। ये ऊपर गई, क्या पीछे जाएगी? वहां पे जी हाँ, ताकत थी और यहाँ पे शॉट के जरिए आता हुआ दूसरा सिक्सर तेज बहादुर के बल्ले से। दोनों शॉट से लॉन्ग ऑफ की दिशा में यहाँ पे के लिए अच्छा यहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल कर रहा था कि बॉल वहां पे थे, लेकिन उतनी ताकत है तेज बहादुर के बाजुओं में कि सीमा रेखा को पार गेंद को भेज सके। तो इस 6 रन की बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन। और यहाँ पे और एक, ये बहुत बढ़िया शॉट है, ये लेग कटर था, इसको स्विंग किया, बढ़िया स्विंग, अक्रॉस द लाइन खेली, लेकिन पूरा कंट्रोल में थे इस शॉट के ऊपर। तेज बहादुर आप पूरे लय में दिखाई दे रहे हैं, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। 2 बड़े झटके झेलने के बाद अब तेज बहादुर यहाँ पे अपने जो टाइमिंग है वो सही से यहाँ पे संपर्क कर रहे हैं। और एक वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत बल्लेबाजी है तेज बहादुर द्वारा। और ये हैट्रिक ऑफ 6 पहले लॉन्ग ऑफ की छोर में, इसमें बाद लगातार 2 मिड विकेट की छोर में, बहुत ही अच्छी और आतिशी बल्लेबाजी। ये अच्छे शॉट्स है, अक्रॉस द लाइन खेले जरूर, लेकिन रुका, अपने आप को थोड़ा सा होल्ड किया और उसके बाद शॉट खेले, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन 40। ये बाहरी किनारा और यहाँ पे रन आउट हो सकते हैं, थोड़ी सी चूके रन आउट की कोशिश, बहुत ही अच्छा प्रयास किया था शॉर्ट थर्डमैन कृषा के फील्डर ने, लेकिन उसके बाद ये तेज रन बहुत ही बढ़िया सैफ अली द्वारा और स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर थे 21 रन। इस ओवर में कुल 20 रन आए हैं, 6 रन और 2 सिंगल के बदौलत। वाह, खूबसूरत, क्या स्वीप शॉट है, ताकतवर स्वीप शॉट, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। जिस तरीके से हम आईपीएल में देखते हैं स्वीप शॉट्स खेलते हैं बड़े बड़े बल्लेबाज, लेकिन टेनिस क्रिकेट में इसको एग्जीक्यूट करना बहुत कठिन होता है, लेकिन आसानी से और बहुत खूबी की नजाकत के साथ यहाँ पे खेला गया है शॉट सैफ अली द्वारा। तो ये बहुत ही बड़ा ओवर मिलता हुआ, कुल
26 रन आए हैं इस ओवर से और 4 छक्के और उसमें से दो इक्के शामिल है। तो स्कोर है 3 ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो जिस तरीके से यहाँ पे गेंदें बाहर जा रही हैं तो बहुत मुश्किल हो रही हैं। वो उस गेंद को वापस लाने के लिए दूसरी पुरानी गेंद है उसको लिया जा रहा है। स्कोर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन, अच्छा स्कोर 47। तो मैं पहले कह रहा था कि अगर 65 और उसके पार जाए स्कोर तो उतना आसान नहीं होगा। इस बार थोड़ा सा चूके ऑफ कटर डालने का प्रयास, लेकिन ऑफ लाइन के बाहर रखा था। तो बहुत से गेंदबाजों ने यहाँ पे चूक की है कि सीधे विकेट के ऊपर यहाँ पे गेंदबाजी की। तो तेज बहादुर बहुत ही स्ट्रांग बल्लेबाज है लेग साइड में। तो अब ये प्रयास होगा कि थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर रखें, पूरे लय में है और एक अच्छी ओवर आती है तो ये स्कोर अच्छे इसको भी घुमाने का प्रयास किया था, थोड़ी सी अंदर आई। ऑफ कटर बढ़िया डालते हैं यहाँ पे इस तरीके से। दिनेश पिछले मुकाबले में भी काफी अच्छी गेंदबाजी की थी और जब उनकी गेंदबाजी अच्छी थी उस डिफेंड में दूसरे इनिंग्स में, उसके बाद उनको यार सुपर ओवर में भी गेंदबाजी करने का मौका दिया था साजू बॉन्ड ने। तो यहाँ पे सोच है ये उतने आसान गेंदबाज है नहीं, तो सुपर ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी की थी, अब भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस मुकाबले में। अरे देखिए लगातार 3 डॉट गेंद यहाँ पे रिफर कर रहे हैं, शायद बल्ला ऊपर था इस वजह से अंपायर सोच रहे हैं कि बल्ला नीचे ग्राउंड किया क्या ऊपर था। तो थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है अंपायर के मन में, इस वजह से यहाँ पे रिव्यू किया गया है थर्ड अंपायर को। तो देखेंगे कि बल्ला नीचे गया है कि नहीं गया है। स्लो मोशन में यहाँ पे देख रहे हैं थर्ड अंपायर। तेज बहादुर अगर आउट होते हैं तो बहुत नजदीकी है, बैट भी नीचे आया था। तो अंपायर स्लो मोशन में यहाँ पे देख रहे हैं कि नॉट आउट। तो बल्ला जो है वो नीचे आया था और ग्राउंड हुआ था लाइन के पीछे। तो नजदीकी मामला, लेकिन जब संपर्क हुआ था और बेल से ऊपर उड़ी थी तब बल्ला नीचे था। तो बहुत ही करीबी मामला जरूर था। अच्छी विकेट कीपिंग यहां पे। अभी 3 डॉट गेंदे खेल चुके हैं। मैंने पहले ही कहा था कि दिनेश दिखते आसान गेंदबाज है, लेकिन जब ऑफ कटर डालते हैं तेज ऑफ कटर तो अगर टप्पे पर गेंद पड़ती है तो उनको मारना उतना आसान नहीं होता है। 3 लगातार प्रयास किए बड़े शॉट के लिए, तीनों के तीनों असफल इस ओवर में तेज बहादुर द्वारा, जिन्होंने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी और आसानी से 3 छक्के बटोरे थे पिछले ओवर में। अब यहां पे स्ट्रगल करते कुछ दिख रहे हैं दिनेश के खिलाफ।
इस बार संपर्क सही, इस बार थोड़ा सा बाहर, यहां पे फील्डर सिर्फ देखते रह गए। ऊंचा लंबा शॉट, करारा प्रहार, 3 लगातार डॉट गेंदों के बाद ये मिलता हुआ 6 रन। 53 for 2, 53 रन यहां पे। और यहाँ से बाहर से भी यहाँ पे मुख्तार कादिर कह रहे हैं कि आड़ा शॉट मारने का प्रयास ना करें, जितना चाहिए सीधा, क्योंकि आपके पास ताकत है, और ये सही सोच है। इस बार ये सीधा खेला, ये देखिए, ये उनको बताया गया था कि एक लेजेंडरी क्रिकेटर द्वारा कि सीधे बल्ले से किए, क्रॉस मत खेलिए, और उसका यहाँ पे बहुत सफल एग्जीक्यूशन करते हुए तेग बहादुर, इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 59 रन, 59। बहुत सफलतापूर्वक शॉट यहां पे खेले, दोनों बड़े हिट, 3 डॉट गेंदे, उसके बाद 2 सिक्सर। ये बाहर वाइड करार दी जाएगी, रन आउट, और 1 रन शायद, और 2 रन भी जुड़ सकते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पे मिस फील्डिंग हो रही है। चौका मिला, यहाँ पे चौका मिला, 3 भागकर और 1 वाइड के जरिए, यानी कि 4 वाइड, 4 वाइड। तो वाइड के जरिए मिलता हुआ चौका, बड़ी चूकें कर रहे हैं यहाँ पे, बड़ी गलतियां, और ये उनको महंगी पड़ेगी जब चेस के लिए आएंगे। 63 रन, 1 गेंद अभी भी बाकी। सैफ अली बहुत देर बाद यहाँ पर स्ट्राइक पर आ चुके हैं इस चौथे ओवर में, और स्वीप किया सीधा हाथ में, जी हाँ सीधा हाथ में, और स्ट्राइक लेंगे तेग बहादुर से। सैफ अली ने कोशिश जरूर की थी, लेकिन वो फ्लैट गई, पैरेलल गई ग्राउंड की, और फील्डर के हाथ में कोई चूक नहीं इस बार। तो चौथी ओवर की समाप्ति और स्कोर है 63 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी आखिरी ओवर यहां पे, यहां पे आप जोरदार घुमाया, फिर एक बार क्रॉस खेलने का प्रयास, यहां पे डॉट गेंद, फिर एक बार ये स्लाइस किया पॉइंट की दिशा में, कम से कम 2 रन जरूर मिलेंगे, चौका भी मिल सकता है। दोनों फील्डर यहां पे भागते हुए पीछे, और 3 रन की मांग, लेकिन तेग को स्ट्राइक पर होना चाहिए, और 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 65 रन। सोहेल, शोएब यहां पे नॉन स्ट्राइकर के छोर पर, लेकिन स्ट्राइक यहां पे रखेंगे तेग बहादुर। ये शॉर्ट गेंद यहां पे, जी हाँ चौका, नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा रोका, मेरे को लगा था कि यहां पे चौका मिलेगा, अच्छी सोच, और रन आउट नॉन स्ट्राइकर की छोर पर। तेग बहादुर को स्ट्राइक पर लेना चाहते थे, अच्छी यहां पे शोएब ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया, और 1 विकेट का पतन। लगभग चौका था यहां पे, लेकिन अच्छी सोच, पीछे दौड़ गए, यहां पे पता था कि बॉल टर्न होगी,
और यहाँ पे रोका, अगर उनको भेजती तो यह चौका जरूर मिलता। तो अब सिर्फ 3 गेंदें बची है, स्कोर 66 है। 66 है। तो 66 रन है, 66। तो देखेंगे यहां पे आखिर की 3 गेंदें बची है। तेग बहादुर स्ट्राइक पर, इस बार अच्छा शॉट, 4 रन जरूर मिलेंगे। तेज तर्रार शॉट यहां पे सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर और सीधे बल्ले से वी एरिया में खेला गया और इसके साथ स्कोर बढ़ता हुआ 70 रन। क्या पारी खेल गए तेग बहादुर, 44 रन सिर्फ 16 गेंदों में, उनमें 6 बड़े छक्के जड़ चुके हैं और 1 चौका। तो 6 छक्कों के साथ 1 चौके के साथ 44 रन की पारी तेग बहादुर द्वारा। क्या यहाँ पे अपना 50 रन का आंकड़ा हाफ सेंचुरी करने में कामयाब होंगे या नहीं, ये आखिर की 2 गेंदें हमें देखने को मिलेगी। यहां पे भी इनसाइड आउट शॉट, यहां पे भी प्रयास करेंगे कि स्ट्राइक पर आए और यहां पे दिया, निखिल को आउट किया तेग स्ट्राइक पर और स्कोर 71 रन। निखिल को सेक्रीफाइस करना पड़ा फिर एक बार शोएब की तरह। शोएब ने भी किया था और निखिल ने भी वही किया और अपने अच्छे बल्लेबाज जिन्होंने 45 रन की नाबाद पारी अभी फिलहाल वो चल रहे हैं, तो उनको स्ट्राइक देने के प्रयास में अपने आप को यहां पे आउट किया। अभी संतोष आए हैं यहाँ पे मैदान में, तो एक ही गेंद बची है, तो स्ट्राइक पर तो तेग बहादुर होंगे। अगर ये गेंद 71 रन, हालांकि बड़ा नहीं है लेकिन छोटा भी नहीं है, एक अच्छा लक्ष्य, लेकिन उसके साथ ये अगर गेंद जाती है तो और अच्छा होगा। ये स्कोर 45 रन पर खेल रहे हैं और ये शॉट और इसी के साथ 50 रन पूरे। क्या शानदार पारी तेग बहादुर द्वारा, मैदान में डटे रहे शेर की तरह, दहाड़ रहे हैं पूरे मैदान में और ये 7वां छक्का है उनके बल्ले से। क्या बेहतरीन पारी खेल चुके हैं, 77 रन पर यहां पे अपनी टीम को लाकर खड़ा किया है, एक बड़ा अच्छा लक्ष्य है। मुख्तार कादिर ने शुरुआत अच्छी की थी, उसके बाद लगातार 2 विकेट गिरी, लेकिन उसके बाद पूरा संभाला इस पारी को तेग बहादुर ने और संभाल कर अपनी टीम कर एक अर्धशतकीय पारी के साथ 77 रन पर ले चुके हैं। तो बेहतरीन प्रदर्शन, उसमें से बहुत बड़े शॉट यानी कि क्रॉस बैटेड शॉट भी खेले और स्ट्रेट जो थे वो काफी खूबसूरत थे, जो लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑफ ऑन की दिशा में वी एरिया में खेले, तो वो बेहतरीन शॉट थे। कमाल की पारी और याद रहेगी, यादगार रहेगी ये पारी जरूर तेग बहादुर को और बाकी सबको। तो अब देखेंगे 78 रन का पीछा किस तरीके से करते हैं यहाँ पे डी स्टार और गोवा।
So 78 to get in 5 overs is the equation in front of the Stars Old Goa when they come out to bat in the second innings. There's a chase coming up. 78 to get in 5 overs is the equation. .78 to get in 5 overs is the equation in front of the Stars Old Goa, and the two openers out in the center. To chase this down is at the striker's end. It will be Sergio Bond and skipper alongside Namit. Calm, cool customer Sergio Bond, as it was said by my fellow commentator Sir Harish Kakodkar. He respects the experienced guy, the veteran cricketer Mukhtar Kadri, a lot, and so does Old Goa, and he is coming on to bowl the first over in front of Sergio Bond. This is going to be a great contest here. Mukhtar Kadri in front of Sergio Bond. Here is the first ball. First ball, trying to play that ball, missing all ends up. This is the variation I was talking about. He is not only experienced but a thoughtful bowler. Things before bowling every ball. What needs to be done? Once again in the air, full settling underneath it, takes the catch. Here's the first wicket. It's 0 for 1. The Stars Old Goa. Safety catcher takes the catch in the offside region and sends back the batter. Sergio Bond walking back to the pavilion without troubling the scorers. It's 0 for 1. Once again welcoming all to Ambir Kundaikar Chashaka 2026. This is a day 2. Strong boys, that man Rajesh, the name my name at number 3. This time in the gap, beating the fielder. That fielder who has taken the catch on the previous delivery, beating him into the boundary cushion, so that's the ball. And to get off the mark with the boundary, Rajesh Kankar. 4 for 1 in the first over. Mukhtar Kadri once again in the air. The fielder will pick it up on 1 bounce. Trying to turn back for second, but no. So is the striker.
a single run. The score moving to 5. 5 for 1 in the first over. This time once again in the air and away from the fielders. Two running behind the ball will give up the chase in the boundary cushions, and in comes the signal from the umpire. It is a boundary. So both the batters have hit one boundary each. 9 runs on the scoreboard. Picked up 1 wicket, Mukhtar Qadri, and prize wicket of Sajid Bond. What is coming up next? Once again played along the ground. Saif Ali fielding there. Bit of a wave throw and a single cultured up. With a single, the score will move into double digits. It's 10 for the loss of 1. In comes the bowling change. In comes the second over. 10 for 1 and needing another 66 from 24 deliveries is the equation. And in comes the bowling change. In comes the bowler. Nikhil. In comes Nikhil. The left arm Chinaman, first ball, trying to switch it. The batter missing the ball completely. Starts off with the dot. एक अलग ही मजा होता है चाइनामैन को गेंदबाजी करते हुए देखना. निखिल की अगली गेंद. इस बार नेक्स्ट साइड में खेला इस गेंद को बाउंड्री राइडर पिकअप करेंगे, थ्रो करेंगे, तब तक मिल जाएगा सिंगल. और इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचेगा टेनिस बॉल नेल्सन 11 रन 1 विकेट के नुकसान पे. दूसरा ओवर जो कि प्रगति पर लेफ्ट आर्म चाइना में निखिल रुजिकर गेंदबाजी करते हुए. दूसरा ओवर पारी का. इसके बाद 3 ओवर आने शेष. इनकी बची 23 गेंदे और 23 गेंदे बनाने 67 रन्स. 22 गेंदों में बनाने माफ कीजिएगा 67 रन्स. एक बार फिर से बल्लेबाज है तैयार. इस बार हवा में खेला है शॉट, फील्डर से दूर और डायरेक्ट जाएगी स्कर्टिंग्स में, मिल जाएगा छक्का. तो बढ़िया बल्लेबाजी. पहले गेंद को जांचा पर का डॉट खेला, उसके बाद लिया सिंगल, उसके बाद एक बड़ा शॉट. और यहाँ पे जैसे वो शॉट आया कप्तान दिखे गेंदबाज की ओर. इस बार फुल टॉस, सीधा हाथ में. और यहाँ पे रिव्यू मांगा गया है. और रिव्यू मांगा गया है ऑन फील्ड अंपायर, स्कॉलिंग अंपायर प्रतीश नाइक और उनके साथ मेन अंपायर की भूमिका में. यह था नो बॉल के लिए वेस्ट हाइट फुल टॉस डाली
डाली गई थी और उसकी हाइट को चेक किया जाता हुआ थर्ड अंपायर पुण्य पालकर। चेक किया जाता हुआ अभी भी डिसीजन आना पेंडिंग। नो बॉल की जांच की जाती हुई थर्ड अंपायर द्वारा। और जी हाँ, नो बॉल करार दी जाती हुई थर्ड अंपायर पुण्य पालकर चेक करने के बाद मिलता हुआ नो बॉल और इसके साथ ही स्कोर जाके पहुंचता हुआ। नो बॉल एक ही रन एक्स्ट्रास के माध्यम से मिलता हुआ स्कोर पहुंचता हुआ 18 रन। अगली गेंद गति में परिवर्तन स्लो और डिपॉजिटेड इनटू द स्टैंड्स। दूर चली जाती हुई एक बेहतरीन छक्का था और क्या बल्लेबाजी इस ओवर में अब तक दोनों बल्लेबाज गेंदबाज पर हावी होते हुए। स्कोर पहुंचता हुआ 24 रन। 24 रन है स्कोर बुक पे। निखिल शुरुआत तो बढ़िया की थी पर अब तक इस ओवर में 2 छक्के। अगली गेंद निखिल की। 2 balls to go, 2 balls to go। अगली गेंद इस बार उड़ाने की कोशिश एक बार फिर से मिलता हुआ डॉट बॉल। अच्छा कमबैक 2 छक्कों के बाद निखिल का कमबैक के लिए जाने जाते हैं गेंदबाज और वही करके दिखाते हुए राजेश जो कि स्ट्राइक पे अब तक खेलते हुए 17 रनों पे। अगली गेंद इस बार तेज गेंद स्विच हिट करने की कोशिश में नाकामयाब। ओवर की समाप्ति डॉट के साथ 2 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 14 रन इस ओवर से, पहले ओवर से आए थे 10 रन, 14 रन इस ओवर से, तो कुल मिला के 14 रन 24 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अभी भी बची 18 गेंद में बनाने 54 यहां से ये मैच जीतने के लिए। डिस्टेंस होल्ड
दोनों दो बल्लेबाज जो कि बल्लेबाजी करते हुए नमित और राजेश सजीव बॉन्ड जिनका विकेट चला गया था पहली ओवर में। और गेंदबाजी में गौरेश, तीसरा ओवर। गौरेश का आगमन बॉलिंग क्रीज पर। स्लोवर में गति में परिवर्तन, शॉर्ट बॉल थी लेकिन जांच नहीं पाए बल्लेबाज। कीपर के दस्तानों तक तय करेगी गेंद फासला और डॉट बॉल के साथ ओवर की शुरुआत। इस बार हवा में गेंद, कैच का मौका और जाएगा लपका। गेंदबाज खुद उसके नीचे और कॉटन बोल्ड के साथ दूसरा विकेट। और नमित दूसरे ओपनर भी बैक टू द पवेलियन। इन्होंने बनाए 6 रन, स्कोर वही रुकता हुआ 24 पे 2 तीसरे ओवर में। नए बल्लेबाज संदेश जिनका आगमन होता है अट्टे कट्टे खिलाड़ी। देखने में ऐसा लगता है कि लंबे लंबे हिट्स लगाने में माहिर। 24 रन 2 विकेट के नुकसान पे अभी भी बनाने हैं। 16 गेंद में 54, यहाँ से डी स्टार छोड़ गया। अगर ये मैच जीतना है यहाँ से 16 गेंद में 54 रनों की है जरूरत। अगली गेंद गवरेश के सामना करेंगे संदेश पहली गेंद के अपने। पहली गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई शरीर पे आके लगी है। डॉट बॉल के साथ आगे बढ़ेगा इस ओवर में करवा तो सुंदर गेंदबाजी अब तक। पहली गेंद डॉट, उसके बाद विकेट और उसके बाद फिर से एक बार नए बल्लेबाज को एक गेंद डॉट। अगली गेंद इस बार लेग साइड में खेल दिया इस गेंद को। गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, मिलेंगे पूरे 4 रन। तो पहले रन से इस ओवर में अब तक संदेश के बल्ले से और स्कोर जाके पहुंचेगा 28 रन 2 विकेट के नुकसान पे। मात्र इस ओवर में 4 रन 1 विकेट अब तक। अगली गेंद 50 रनों की यहां से जरूरत। इस बार छोड़ा है बल्लेबाज से दूर, गाइडलाइन से भी दूर, वाइड का इशारा और एक रन अतिरिक्त के माध्यम से जोड़ा जाता हुआ 29 पे 2। 49 रनों की जरूरत यहां से। अगली गेंद इस बार हवा में गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। तो बहादुर बन जाएंगे दर्शक और बड़ा शॉट आता हुआ संदेश के बल्ले से। यहां से बनाने स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं 35। अगली गेंद इंपॉर्टेंट गेंद रहेगी। एक बार फिर से छोटी गेंद, उसको भी पहुंच दिया पार्क के बाहर, मिल जाएगा और एक बड़ा शॉट, स्कोर पहुंच जाएगा 41 2 विकेट के नुकसान पे 3 ओवर्स की समाप्ति के बाद। और बचे हुए 2 ओवर्स में बनाने 37, 12 गेंद में 37 रनों की जरूरत। बारह गेंद में 37 रनों की जरूरत है। अगला ओवर पेनाल्टीमेट ओवर और गेंदबाजी में एक बार फिर से बदलाव दिखता हुआ। गेंदबाजी करने आते हुए
अनिश स्ट्राइक पर रहेंगे सीनियर पार्टनर राजेश. 37 to get in 12 deliveries is the equation. Anish, the bowler, to start off the proceedings in the penultimate. And here comes the first ball of the penultimate over. 37 required from 12 is the equation. Score still on 41 for the loss of 2. This two, Rajesh and Sandesh out there in the center. First ball into the gap, and the ball going into the boundary positions. The first ball boundary in the penultimate over. The score moving to 45 for the loss of 2, and 11 deliveries, 33 to get. Next delivery. Once again a full toss picked up, deposited into the stands. What a batting this is from Rajesh. 2 balls 10 runs already in the penultimate. And certainly the equation has come down to 27 of 10 deliveries. Of 10 deliveries, and Rajesh well and truly on track now. The bowler will be feeling the pressure, and to calm him down, in comes the skipper. The role of the skipper, Mukhtar Kadri, will be important here. What he thinks, what he is going to tell his bowler, because he is a fighter. He fights till the last. Now, as we can see, telling his bowler, take your own time and bowl. Once again in the air, this time take Bahadur. No, it's another fielder who puts it down. Will be couple of runs more to Rajesh and his team. With this couple, the score moving to 53. More 25 from 9 deliveries. Bowler fumbles in the run up, and rightfully pulls out of it. Next delivery. This time once again in the air, the keeper takes the catch, and is the prize wicket of Rajesh, which has fallen at a crucial time in this match. The score remains on 53 for the loss of 3. 29 required, rather 25 required in 8 deliveries. 25 required in 8 deliveries, and Rajesh walking back to the pavilion. And new batter comes in to join Sandesh. He is Shubham. Invokes Shubham. 2 deliveries in this over, and over to come after this. So 8 deliveries remaining, 25 to get, and invokes Shubham. What over this has been, first a boundary, then a sixer, then a couple of runs, then a wicket. Shubham, what can he do? 2 deliveries remaining in this over. Or the bowler, can he play the tricks? Next delivery. Poses slow one, missing the bat, all ends up
Dot ball by the bowler Anish. Last ball of the over coming up. Shubham to face Anish with the last delivery. 7 balls, 25 is the equation. Another experienced guy behind the stumps. This time once again asking for a wide, but no. Says the umpire to sum up the over number 4 after the completion of 4 overs. It is 53 for 3 and 6 balls. The last over to come, and 25 quarter century required in 6 deliveries to win this match from here on for the Stars Old Goa. Sandesh on strike at the non-strikers end. It will be Shubham, and to bowl the last over. Discussions are going on, and it's going to be, I think, the trump card of the team. Taligaon Tigers. It is going to be, I think, Take Bahadur into the attack to bowl the final over to defend 25. Can he defend 25, or can Sandesh put upper hand on him? It's going to be Take Bahadur to bowl the final 6 deliveries in the innings, or rather in the match for the team Taligaon Tigers. Good thinking by the skipper Mukhtar Kadri, keeping the experienced guy in Take Bahadur to bowl the final over, because he knows he can defend the smallest of the targets. Sandesh on strike. In comes Take Bahadur with the first ball of the final over. First delivery of the final over, and in comes Take Bahadur. The batter opts out. 25 of 6. 25 of 6. Here is Take Bahadur, the experienced Take Bahadur with the ball. First ball taken on the full in the air. Landing in no man's land, and denying a single. 5 balls, 25 is the equation. 5 balls, 25. And keeper behind the stump, experienced Dheeraj Kolkar, also playing the tricks alongside the skipper in Mukhtar Kadri. This time trying to bowl a slower one, picked up, deposited in stance by the batter. Now 4 balls, 19 to get. 4 balls, 19 to get. Sandesh the man on strike. 59 for the loss of 3. 4 balls, 19. What is the answer for that sixer from Take Bahadur? Four balls, 19. Here is the next ball from Take Bahadur. Once again, swing miss. Well fielded. It's going to be a dot ball. 3 balls, 19. 3 balls, 19 to get. Sandesh on strike after denying that a single on the first ball, hitting the second ball out of the park, missing the third one, and 19 of 3. This time played along the carpet straight to the man in the lakeside region on the boundary. Will be again a dot ball. 2 balls remaining, 2 balls, 19 is the equation. Now the match has tilted in the way of Taligaon Tigers. This time once again off the legs are turned down in the lakeside region.
will be a boundary, and in comes the last delivery with 15 required of single delivery. This time, once again, beating the batter, and the match is won by Taligaon Titans. Taligaon Tigers by 14 runs. 14 runs, and we will be soon coming out with the man of the match. The man of the match goes to that man who scored a 50 runs with the bat, and picked up 10 runs in the over while defending bowled the last over. It goes to Take Bahadur, and requesting Sir Damu Naik to please hand over the man of the match award to Take Bahadur. The call going out to the skipper of Sai Bodgeshwar and the skipper of Taligaon Tigers to please come up for the toss of the next match. It's a kind request to the skippers to please come up for the toss. Sai Bodgeshwar Jordan and Tigers Taligaon. Skippers, please come up for the toss. Requesting Take Bahadur to please come up the podium and receive the man of the match award. He's already and giving away the man of the match of the previous match. It is Take Bahadur for his brilliant 50 and just a 10 run over while defending. Bowled the last over, a decent one. Requesting the skippers Taligaon Tigers and the skipper of Sai Bodgeshwar Jordan to please come up for the toss.
So the next match will be played between Sai Bodgeshwar Chowdan and up against the mighty Taligaon Tigers led by the veteran skipper in Mukhtar Kadri. Now we are all set for the first innings. It will be Mukhtar Kadri with the ball and requesting umpires to please wait on. Requesting YouTubers, the scorer, to please come upstairs. It's a kind request to the scorer. Requesting by the umpires in Punya Palkar and Pratish Naik on field. Rupesh Naik, the third umpire, and the match is about to start. तो यहाँ पे पहली गेंद पर सफलता हो सकती है जी नहीं, थोड़ी सी आगे गिरी ये गेंद। लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलने का प्रयास जरूर किया था मुख्तियार कादरी, नाखुश वहां पे, लेकिन ये कैच जरूर नहीं था क्योंकि बहुत आगे थी और जो फील्डर थे वो वहां पे पॉइंट की दिशा में तैनात थे, वो सीधा बीच में गिरी ये गेंद, तो मौका नहीं था मुख्तियार कादरी। और थोड़ी सी बाहर रखी लेकिन फिर भी गाइडलाइन के अंदर, एंगल था वहां पे, राउंड विकेट एंगल जरूर था और वाइड की मांग कर रहे हैं, लेकिन जब गेंद बैट के सामने से गई तो गाइडलाइन के अंदर गई, इस वजह से वाइड करार नहीं दिया। इस बार यहां पे इनसाइड आउट शॉट, लेकिन अच्छे से फील्डर वहां पे तैनात। जिस तरीके से यहाँ पे फील्ड सजाई गई है उसी तरीके की गेंदबाजी कर रही है, जानते हैं कि कहां टप्पा गिराना है, कहां बल्लेबाज खेलेंगे शॉट, तो ये अनुभव होता है और अनुभव की कोई कमी नहीं है इस खिलाड़ी में। ये देखिए ये कैच, ये भी नहीं, थोड़ा सा आगे रही, पता होना चाहिए था कि ये गेंद काटा बदलेगी जरूर। यहाँ पे एक के बदौलत 2 रन दिए, ये मुख्तियार का देख रहे थे, नाखुश, काफी नाखुश, उनको पता था कि आप अगर कैच नहीं लोगे तो गेंद काटा बदलेगी, तो ये बेसिक होती है क्रिकेट में। 1 रन के बदौलत यहाँ पे 2 रन दिए, दूसरे बल्लेबाज को यहाँ पे गेंदबाजी करने का मौका मिलता, वो गवाया। छोटी छोटी चीजें होती है लेकिन बहुत बड़ी होती है क्रिकेट में, और ये जानते हैं मुख्तियार कादरी। 4 बिना कोई विकेट खोए, फिलहाल 4 गेंदे यहाँ पे डाली है मुख्तियार कादरी ने। स्वप्निल स्ट्राइक पर, ये फुल टॉस गेंद, यहाँ पे कोई फील्डर नहीं, ये चूक, यॉर्कर डालने का प्रयास किया था लेकिन यहाँ पे ये फुल टॉस गिरी ये गेंद और आसानी से डीप स्क्वायर लेग की दिशा में चौका बटोरा। बहुत ही आसान शॉट था क्योंकि फुल टॉस थी, कहीं भी ये मार सकते थे। पावर प्ले का ओवर है, स्कोर है 8 रन। पहला चौका आता हुआ यहाँ पे स्वप्निल के बल्ले से और साई बोडगेश्वर चौड़न टीम के लिए ये प्री क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है। यहाँ पे फील्डर तैनात, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, थोड़ी सी चूक, दूसरे रन का प्रयास और सफलतापूर्वक दूसरा रन हासिल किया। यहाँ पे फील्डिंग के लिए बहुत कठिनाई पेश होती है किसी भी फील्डर को, और एक ओवर की समाप्ति के बाद पिछले ओवर में भी 10 रन दिए थे पिछले मुकाबले में, और इस मुकाबले में भी 10 रन बिना कोई विकेट, लेकिन पिछले मुकाबले में उनको बॉन्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट मिला था, लेकिन इस बार बिना कोई विकेट के चल रही है साई बोडगेश्वर चौड़न, 10 without loss।
तो दूसरी ओवर लेके आए हैं गौरीश खांडेपारकर। पहले 3 गेंदें काफी बढ़िया डाली थी पिछले मुकाबले में, लेकिन उसके बाद बाकी के बचे 3 गेंदों में उनको 14 रन कूटे थे और ये मुकाबला काफी बैलेंस रहा था। अब विराज होंगे स्ट्राइक पर। देखेंगे किस तरह की लेंथ, पिछली बार उन्होंने थोड़ी सी छोटी रखी थी गेंद और ये बहुत ही अच्छी लेंथ, बैक ऑफ द लेंथ जिसे कहा जाता है। फाइनल की दिशा में गति का इस्तेमाल करके चौका बटोरने का प्रयास में थे बल्लेबाज, लेकिन गेंद सीधा स्किड होकर विकेट कीपर के हाथों में देवदास खोलकर वहां पे पीछे रहे हैं। बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी, बहुत लेदर बॉल, बहुत क्रिकेट खेल चुके अपने प्राइम समय में। जिस पर थोड़ी सी बाहर और बल्लेबाज यहां पे सफल नहीं हो, इस वजह से यहां पे वाइड करार दिया अंपायर ने। स्कोर बढ़ता हुआ 11। गौरीश खांडेपारकर जो जहां पे गेंदबाजी करते हैं वो हार्ड लेंथ होती है, लेदर बॉल क्रिकेट में जैसे टेस्ट मैच लेंथ कहा जाता है। काफी बार वो लेंथ टेनिस क्रिकेट में भी काफी कारगर और एक अच्छा लेंथ कहा जाता है। देखेंगे किस तरीके से आगे बढ़ते हैं गौरीश। ये आउट हो सकता है, जी हाँ, यहाँ पे बाहर रखा था आउटसाइड ईज और जाना पड़ेगा यहाँ पे वापस विराज को। क्रॉस द लाइन खेला और बल्ले का पूरा निचला इलाका रखा यहाँ पे और इस वजह से लीडिंग एज और कोई गलती नहीं यहाँ पे विकेट कीपर द्वारा। तो पहले विकेट का पतन होता हुआ 11 रन पर। नए बल्लेबाज पिछले मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच के विनर यतीन आए हैं मैदान में। क्या पारी खेली थी उन्होंने, 37 रन की दमदार शॉट्स खेले थे और अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स खेले थे। तो गौरीश खांडेपारकर के सामने अब होंगे ये देखिए कैच हो सकती है, फील्डर आ रहे हैं वहां पे नीचे और लिया है तेग बहादुर, छोड़ेंगे नहीं ये कैच। लगातार 2 गेंदों पर 2 बड़े विकेट से गौरीश खांडेपारकर को इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, गेंद सीधा ऊपर गई मिड विकेट के छोर पर, वहां पे फील्डर तैनात थे, आए और ये कैच बखूबी उन्होंने जज किया और लिया। दूसरी विकेट 11 रन पर 2 विकेट पर चल रही है साई वर्गेश्वर। ये बड़ा झटका, यतीन बिना कोई खाता खोले वापस पेविलियन में। तो पुनीत आए हैं यहाँ पे नए बल्लेबाज, हैट्रिक पर होंगे गौरीश खांडेपारकर। 3 गेंदे 1 रन और 2 विकेट, ये है उनका स्टैट्स फिलहाल, लेकिन बाकी की 3 गेंदे भी अच्छी डालनी चाहिए गौरीश को। और बहुत ही अच्छी गेंद, लाजवाब गेंद, ऑफ स्टंप को लगभग छूती हुई ये गेंद और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे जो गेंद डाली हैट्रिक के लिए, लेकिन गति का इस्तेमाल कर रहे हैं और हार्ड लेंथ भी यहाँ पे डाल रहे हैं। तो बल्लेबाज को बहुत ही कठिनाई पेश कर रहे हैं यहाँ पे गौरीश। पिछली बार उन्होंने तीसरा ओवर डाला था, इस बार उनको प्रमोशन दिया दूसरी ओवर। ये भी आउटसाइड एज और ये मुख्तार कादरी थोड़ी सी चूके और अच्छा यहाँ पे जी नहीं चौका, ये गेंद ने काटा बदला। मुख्तार कादरी को बाद में मौका नहीं था, यहाँ पे अच्छा प्रयास किया था यहाँ पे फाइनल किए फील्डर ने, लेकिन ये लकी बाउंड्री मिली यहाँ पे। तो कभी कभी बहुत ही सबसे अनुभवी खिलाड़ी भी चूक कर सकते हैं क्रिकेट में, इससे यहाँ पे फील्डिंग करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत कठिन है ये इनफील्ड और आउटफील्ड।
ये भी आउटसाइड एज, इस बार रोका है यहाँ पे, इस बार रोकने में सफल। इस बार भी काटा बदला था यहाँ पे गेंद ने, लेकिन मुख्तार कादरी का दाया हाथ जो था वो सही से आया। और 2 ओवर की समाप्ति, क्या शानदार ओवर, 2 विकेट लिए और सिर्फ 5 रन दिए हैं। 15 रन पर 2 विकेट, साई बड़गेश्वर छोड़न चल रही है। अब निखिल को गेंदबाजी खिलाया गया, और देखिए ये सोच क्योंकि पिछले मुकाबले में थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं रही उनकी गेंदबाजी, और जो गेंद था वो भी थोड़ा नया था दूसरे ओवर में। अब थोड़ा सा मुझे लगता है ऊपर की सतह थोड़ी सी रफ हो चुकी होगी, और ये सीधे बल्ले से सीधा स्लॉट में, और 6 रन के लिए सीधा स्लॉट में, और लॉन्ग ऑफ गेंदबाज के ऊपर से खेला गया तीर की तरह ये शॉट 6 रन के लिए। निखिल जुगी कर आए हैं गेंदबाजी के लिए, आते ही उन पर दबाव डालने का प्रयास, डोमिनेट करना चाहते हैं निखिल जुगीकर को यहां पे स्वप्निल। ये थोड़ी सी छोटी रखी गेंद, स्विंग अक्रॉस द लाइन, वहां पे फील्डर तैनात तो 1 रन मिलेगा। और निखिल जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं दाएं हाथ के और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जिसे कहा जाता है, लेकिन उतनी मुझे लगता नहीं कि प्रैक्टिस होगी। अभी अभी आए हैं, धरती पर पैर रखा है क्योंकि ज्यादातर समय जो है वो समंदर में बिताते हैं निखिल, तो अब थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर मिलेगी तो और बेहतरीन कर सकते हैं। 22 रन पर 2। ये फिर एक बार अक्रॉस द लाइन, लेकिन वहां पे फील्डर तैनात, और ये देखिए ये पहले ही उठाने का प्रयास किया था, बहुत बड़ी चूक, आके निकाल ली, गेंद से आके हटा दी, और आके हटाएंगे तो ऐसा ही नुकसान, ऐसा ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुख्तार कादरी सिखा रहे हैं किस तरीके से फील्डिंग करनी चाहिए, और तेग बहादुर ने तो इतना क्रिकेट खेला है तो उनको पता चाहिए किस तरीके की फील्डिंग करनी चाहिए। लेदर बॉल जिस तरीके से हम फील्डिंग करते हैं उस तरीके की टेक्निक यहां पे जरूरी होती है। 26 रन, इस बार अच्छी गेंद, ये बेहतरीन, ये थोड़ा सा सीधे रखा, विकेट पर रखा, और 2 रन की मांग, क्योंकि पता था उनको तेग बहादुर दबाव में थे। अभी अभी चौका यहाँ पे मिस फील्डिंग के जरिए दिया था, वो तो दबाव को उन पर और दबाव डालना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन इस बार अच्छी फील्डिंग। 27 रन, छोटी छोटी चीजें जो है बहुत मायने रखती है क्रिकेट में। इस बार यहां पे क्या खूबसूरत कैच, नहीं कह रहे हैं जी नहीं, तो 1 रन, लेकिन बहुत ही अच्छी स्पोर्टिंग स्पिरिट वहां पे तेग बहादुर, बहुत अच्छी स्पोर्टिंग स्पिरिट आजकल क्रिकेट में कम देखने को मिलता है। ये रिफर भी किया जाता और थोड़ा सा समय भी गवाते, तो सीधा कहा कि मैंने कैच नहीं लिया, ये 1 बाउंस है। ऐसे स्पोर्टिंग स्पिरिट ज्यादा दिखनी चाहिए टेनिस क्रिकेट में। ओ खूबसूरत गेंद, यहाँ पे क्या आउट, जिया आउट, स्टंप किया इनको देवीदास कोलकर ने, क्या बेहतरीन स्टंपिंग यहाँ पे। और ये लेग कटर जिस तरीके से प्रभावित करते हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था, बड़े बल्लेबाज थे और उनको जाना पड़ा। बहुत ही बढ़िया विकेट कीपिंग यहाँ पे। तो तीसरी विकेट, तीसरी सफलता मिलती हुई टाइगर्स तालिगांव को। 28 रन पर 3 विकेट खोती हुई 3 ओवर की समाप्ति के बाद। (28 for 3 after 3 overs. Sai Badgeshwar Chodan. So let's see who's going to bowl the last 2 overs. I think it's Tegh Bahadur. Tegh Bahadur is going to bowl the silver player of the match in the previous game. Exceptional batting of 51 not out.
and then coming on bowling a decent over. So he's going to be bowling this fourth over. Ball is a little bit older, so he's going to skid on. He's going to come quicker. Swapnil is, I think, the big hope for Sai Bodgeshwar. Lovely bowling inside out. Should get a boundary. Exceptionally good shot. No, the ball has stopped. Oh, he still sneaks in. I think this should have been stopped. The fielding has not been the best from Tigers Taligaon. Losing some. I think there is not a problem if you concede 2 runs, but you should save the boundaries. So put the body behind, put the ball back inside. That's what they are not doing. 32 for 3. Swapnil looking very dangerous. Second boundary in his innings. He's going at a very good strike rate. That's good one. That's very nicely bowled. Drag the length slightly back. Trying to heave across. And I think the ball also kept a little low there. Tegh Bahadur doesn't have that much pace compared to what he started with in his prime days and in his young days. He used to bowl outright fast. As a good leather ball cricketer, hitting the hard length. Lovely bowling, good one, good one. You could see from the grip of the hand that he was bowling the leg cutter. Batter trying to swing hard. It was very strange. Opportunity was there if he could have played it towards the long leg region, but he just missed it. So in spite of considering a boundary, Tegh Bahadur bowls 2 dot balls against Swapnil, who is going at a strike rate of more than 200. Lovely bowling this one. Just inside. This one was a straight one. Just kept it away from the reach. He had to fetch it. So great mixture here. And great composure shown by Tegh Bahadur. Sometimes the slow leg cutters, sometimes the off cutters, sometimes the skidders that pitches and goes straight. This time ball slow ball, and the batter picked it up. I think the length was a little shorter and it was straighter. Should have been outside. Great batting here from Swapnil, getting his second 6. 38 for 3. Still a good over. It's considered 10 runs. And if you can bowl a dot ball, the last one, it will be still a good over. They should restrict this team to under 50 or 55. Although it's not a great total, but Swapnil will be looking to get somewhere close to 60 run mark. This is Viraj. So Viraj it is, and Viraj concedes a dot ball. अभी 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर 38 for 3 after 4. Nice delivery. Just kept it outside. Better had shuffle, but he didn't target the stumps. So he's thinking well. He was taken for a few runs. The batters tried to dominate him in the first half of his over, Anish. But he came back very nicely. Gone, aged and taken back once again. Good wicket keeping there by Devidas. He's catching it very nicely. Second catch coming to him, and the batter departs. 38 for 4. So Aniket is the one to depart.
So in comes Harish. In the air. Who's going to take it? No, it's falling short. Never timed it. Full toss ball just playing across and it's not hitting the sweet part of the bat. So bowlers and the bowling side, Tiger Taliban will be really happy. Bowled well in the previous game. I think this is better bowling effort. They learn from the mistakes in the previous game and trying to bowl with the variations with a good line and length. This time he is trying to bowl to the non-striker. This happens. This is a part of the game. Sometimes you tend to miss. Yesterday also in IPL game, one of the bowlers did try drop the ball in the bowling mark. Sunrisers Hyderabad winning that one against Mumbai Indians. What a big totals are being chased in the IPL. 240 is also looking very small total now in 20 overs. And yeah, that's a wide. So you can imagine 265 being chased, 240 being chased, keeping more than 2 overs spare. I think you feel sorry for the bowlers. Nothing there for the bowlers on those wickets. The same can be said. If you are bowling like this, I think bowlers should be given credit. 40 runs so far. Anish will be looking to continue into his rhythm. Nicely bowled. And he is allowed to give a single. And that's very smart. If the ball didn't hit, then he could have got another run. The batter will have been back on strike. 41 runs at this stage. Slight bowling change. They had bowled Nikhil the second over and Anish the fourth. So they got fourth over from Tegh Bahadur and Anish the fifth one. So I think it has worked here for them in this particular game. Minute changes. Trying to swing very hard. Gets the bottom part of the bat. And will be just a single down towards the deep mid-wicket region. So that's slower ball. Change of pace with a leg spinner's grip. Score? 42. Ball कितनी लिया? One ball remain here. Just the 42 on the board. Great performance here from all the bowlers of Tigers of Taiwan. Anish need to finish well. In the air. Who is coming underneath? And Tegh Bahadur takes it very nicely. Overall a rocking performance here from the Tigers. They rode here in the bowling department. It started well by Mukhtar Qadri, just conceding 10 runs in the first over. And then wickets, a couple of wickets there for Gaurish Kandeparkar, who proved the chain there. So both those wickets were very big wickets from Gaurish and just conceded 5 runs. And the momentum was then back in the Tigers Taligaon. So all the bowlers bowling quite economically and finishing off at a total of just 42. I think they'll be delighted. They were very pleased, very happy. Mukhtar Qadri as well with the performance of the boys where they stood very firmly and bowled very intelligently on this wicket. So variations with the slower off cutters, leg cutters, and that line, pretty much accurate bowling. So 43 runs are required. Let's see the run chase in a short while.
पहला बॉल और पहली विकेट और मुझे लगता है सबसे बड़ी विकेट मुख्तार कादरी बैक टू द पवेलियन 0 for 1 टाइगर्स ऑफ तालिगांव. Puneet picks up the first 0 for 1 in the chase of 43 and at the non-strikers end it is catch well taken by Dravesh and the first wicket going to the pavilion without troubling the scorers and at the non-strikers it's looking like पहले दोन बॅट्समन कोण आहे नॉन स्ट्राइकला कोण आहे Gaurish at the non-strikers end and in walks Saif Ali. पण तोही करताला हवा Next really. नॉन स्ट्राइकला कोण आहे आता पडल्या सार सुद्धा हांवें डिसेंट येतालो पूण थंय करतालो नॉन स्ट्राइकला कोण आहे आता नॉन स्ट्रायक पर गौरी पहिला कॅच आउट Next delivery played down the ground once again will be another dot. What a over. The scoring is yet to be opened and the big wicket, the big fish into the back in the pavilion. Mukhtar Kadri without troubling the scorers in this important match, chasing 43 to win. Let's it go wide in the signal. The scoring is off in running with the extra. Good judgment by the batter as well. Seeing that ball pitching outside the guidelines of the wide and letting it go through to the wicket keeper. Next delivery. Good bit of bowling by the bowler as well. India, will this be taken? Will this be taken? Yes, it is. The second wicket goes down back into the shade. And it is looking like Saif Ali who is walking back to the pavilion. 1 for 2. And in the bordering stages are the Tigers of Taligaon and in walks the new man Sheikh Bahadur, the experienced Sheikh Bahadur walks out in the middle. Scored 50 with the bat in the last match. Will be having a confidence, but singles team 1 for 2 needs a cautious study. Chasing just 43, but the 2 wickets that have fallen down have created a pressure not only on Sheikh Bahadur but the rest to follow as well. 1 for 2. Next delivery. This time India away from the field and away from all of them and will be resting in the boundary positions. The score moving to 5 and first boundary from the bat of that man taking that confidence through in this match as well. Left off, starts off from where he left off in the last match. Next lady. Short ball now, looking to assist leg. 1 for the over. 1 for the over has been signalled and also a wide that has been signalled by this colleague umpire. This will start 6 for 2.
Hitting another 37. Takes swings, takes misses. A dot ball to sum up the over number 1 after the completion of 1. It's 6 for 2. And hitting another 37 from 24. Second over, and the man on strike, Yatin, the bowler, and man on strike is first ball played away in the leg side region, will just be the one to take the tally to 7. Next delivery. This time watchfully played outside edge of the bat. Oh, away through. We'll allow them to scamper for 1 as well. 8 runs on the scoreboard. We are still into the second over. 8 for 2. 35 required from 22. Full line delivery, almost a Yorker, and well digged out by the batter. Dot ball. Second over. Yatin bowling a decent spell here. Couple of singles, then a dot. This time going big and big enough to clear the boundary for a maximum from the bat of Gaurish. The first 6 of the innings, and takes the score in double digits. 14 for the loss of 2 are the Tigers. Taligaon needing another 29 from 20 deliveries is the equation. This time down the leg, helped away, and another biggie from the bat of Gaurav, and 2-2 for Gaurav, taking the tally to 20. Gaurav batting on 13 of 4 deliveries with 2 maximums. To his credit, batting at a strike rate of 325. This time once again the bowler needs to control here. 23 from 19. Once again down the ground. Will just be the one turning back for second. Denied by Gaurish. Take Bahadur was looking for that second run. And 15 of the over. And after the completion of 2, it's 21 for the loss of 2. 6 in the first over. Then in comes the expensive over from that man Gaurish, and the score moving to 21. 15 of the second over. Needing another 22 from 3 overs is the equation for Taligaon Tigers. That wicket of Mukhtar Qadri in the very first over created some pressure, but it was released in the second over, and in comes the third over. Aniket, welcome to the crease with a catch on the boundary, and the batter says the back to the pavilion.
Gauresh walks back to the pavilion. Was a brilliant innings, brilliant cameo. Aniket picks up the wicket with the very first ball of the third over. It's 21 for the loss of 3, needing another 22 from 17. Nikhil Vijigara, the new batter in 17 balls, 22 is the equation. Left-hander in round the stumps comes the ball. Decent delivery. A pacey one carried quickly to the keeper. Third ball. This time once again playing along the ground just for a single to open up the account for the batter Nikhil. First runs on the board with the bat for Nikhil in this match. 22 for the loss of 3. They are into the third over. This time once again goes down the ground and onto the side screen and a maximum. Baka पोवपा जाय पूण 28 for the loss of 3 in the third over, and the current run rate is 10.50 and required run rate has come down to 6.34, 6.43 now. Take Bahadur 14 की 15 ना certainly looks in great touch. हाँ Was a chance certainly from the reaction of the bowler. It seems that it was a catch which has been put down. 7 runs for 1 wicket. Sets of the bowler Aniket would have been second for him and would have been a prize wicket of Teek Bahadur. This time we'll be having our eyes to the umpire. Leg by CC signal to sum up the over number 3 after the completion of 3 overs is 29 for the loss of 3, needing another 14 from 12 deliveries. Next in comes the penultimate over, and it will be bowled by Dravesh into the attack to bowl the penultimate, needing another 14 from 12 deliveries. And the man on strike, Teek Bahadur. First ball will be bowled by Dravesh, right arm round this time, rather left arm over, taking away from the batter
starts off with a dot. Eleven balls 14 is the equation. Take Bahadur on strike. Alongside him, it will be Nikhil Ujikar. This time once again Take Bahadur getting away, changing the field as well. Once again a single with his 30 for the loss of 3, needing another 13 from 9 deliveries, and a great bit of bowling by the bowler as well. Dravesh has just given away a single in this over so far. Next delivery. Once again, the fielder will pick it up on one bounce right on the boundary, and meanwhile another single was looking like easier of targets, but now it is coming down to a wire, coming down to a nail-biting finish. 8 balls, 12 runs. And it can be just a matter of 2 shots as well. And Take Bahadur takes the down to 6. 6 required now. What a shot down the ground from Take Bahadur. And the equation certainly has come down to 6 of 7. 6 of 7. Just one big shot. And the Taligarh Tigers are into the next stage. What will be the answer of the bowler? Once again in the air. And it is taken. It is taken. It has gone down to 6 balls 6 now. Last over to go. And 6 runs to get is the equation for the Taligarh Tigers. And last ball of the previous over, the wicket has gone down. Is 37 for the loss of 4, and 6 balls 6 required. The chase of 43, and after the completion of 4 overs, 37 for 4. And in walks the new batter to replace Take Bahadur, who will be at the non-striker's end. And to force the first delivery in the final over, it will be Nikhil Ujikar. And to bowl that final over, lots of discussions are going on, and the bowling has been given to Sagar. New batter who has walked in is Devidas Kalkar. The wicketkeeper batter walks in. Here's the first ball of the final over, 6 required.
of the overs are taken on the second attempt, and now it has come down to 6 or 5. So बॉलांक जाय 5 बॉलांक जाय 6 आणि निमणी ओव्हर पहिल्याच बॉलाक पडटा विकेट आणि ती विकेट निखिल देजीकराची आणि नवा बॅटर क्रिजीर येता अनिश 5 बॉलाक जाय 6 काय कितें मॅच जस्ट चेस करताले 43 बट अशें म्हणटा क्रिकेटीन लो टोटल्स प्रोड्यूस गुड मॅचीस आणि त्यात जाता 5 बॉलांक हांगा जाय 6 आणि नवो बॅटर क्रिजीर येता अनिश तो आसतलो स्ट्रायकर फुडलो बॉल घेवन येता पयल्याच बॉलाक विकेट काडलेलो बॉलर सागर फुडलो बॉल रायट आर्म ओवर द स्टंप्स घेवन येता सागर फेस करतलो अनिश कितें करतलो अनिश तें पळोवचें पडटलें पयलो बॉल फेस करतलो आपल्या कोटांतलो अनिश आनी डावन दी ग्राउंड खेळटा प्रॉपर टायमींग जायना फिल्डर आसा थोडेशें फंबल जाता दुसऱ्या रनाक धांवता बॅटर 2 रन मेळटा आनी 2 रना सयत स्कोर फुडें सरता आनी पावता 39 5 गड्याच्या मोबदल्यान 4 बॉलांक जाय 4 आणि इट हॅज कम डावन टू रन अ बॉल सिच्युएशन 4 बॉलांक जाय 4 स्ट्रायकर आसतलो परत एकदा अनिश फेस करतलो सागराक बऱ्यांतली बरी बॉलिंग हांगा दाखयता सागर 2 बॉल घालता पयल्या बॉलाक काडटा विकेट दुसऱ्या बॉलाक दिता 2 रन फुडलो बॉल घेवन येता बॉलर 4 बॉलाक जाय 4 रायट आर्म ओवर द स्टंप्स परत एकदा फुडलो बॉल उखलून मारता डावन द ग्राउंड फिल्डर आसा फिल्डर पिक करता मजगती दुसऱ्या रनाक धांवता बॅटर्स 2 रन जाता कंप्लीट 2 रना सयत स्कोर पावता 41 रन स्कोर बोर्डा लागता 3 बॉलांक जाय 2 3 बॉलांक जाय 2 फुडलो बॉल डावन दी ग्राउंड खेळटा साइड स्क्रीन आणि मेळटा चौक मॅच सोंपता मॅच जिखता तालिगांव टायगर्स आणि फुडल्या स्टेजीन करता प्रवेश आणि पळोवचो पडटलो मॅन ऑफ द मॅच कोण आसतलो ह्या मॅचीचो गौरेश खांडेपारकर जाता ह्या मॅचीचा मॅन ऑफ द मॅच आणि रिक्वेस्ट आसतली गौरेश खांडेपारकराक की येवन मॅन ऑफ द मॅच जो आसा तो कलेक्ट करचो मॅन ऑफ द मॅच ऑफ दिस मॅच गोज टू गौरेश खांडेपारकर आणि कॉंग्रॅच्युलेशन्स तालिगांव टायगर्स जिखता ही मॅच पावता फुडल्या स्टेजीन आणि आयच्या दुसऱ्या दिसाचो पयलो सेशन हांगा सोंपता स्टे ट्यून्ड वी विल बी कमिंग बॅक विथ द सेकंड सेशन प्रिटी क्विकली
हॅलो हॅलो आरव आर्यन शैले आणि सनिशा क्रिकेटर सावेवर दोन्ही टीमी लागी मागता की मॅच टसा घ्यायच्या दोन्ही कॅप्टन फील्ड मॅच जी जाता ती आरव आर्यन शैले आणि सनिशा क्रिकेटर सावेवर दोन्ही कॅप्टन लागी मागता मॅच टसा घ्यायचे सनिशा क्रिकेटर सावेवर आणि आरव आर्यन शैले दोन्ही कॅप्टन लागी मागता की टॉस घ्यायचे इम्रान मुल्ला आणि पोझिशन कॅप्टन मॅच टॉस घ्यायचा हॅलो 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 दोनों कैप्टन के बीच टांस बेहतरीन मुकाबला बड़ा मुकाबला लाइव टेलीकास्ट हॅलो नितीन सराला की मागता की माझं कॉम्बॉक्स कनेक्ट कर तसंच कॅप्टन सावेवर मागचा बेगीन टसावयचो तुझं पोझिशन कॅप्टन हांगा रावल्लो आसा जर तूं बेगीनच्या बेगीन टसाक पावना जाल्यार तुजी ओवर्स आसा ती डिडक्शनाक वयतली
आणि मागीर तुका कोणाकूच ब्लेम करपाक मेळचो ना. अभी इसके बाद जो मुकाबला होगा बहुत रोमांचक मुकाबला होगा. सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अपना जगह और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और इसके बाद जो मुकाबला बहुत ही जल्द मुकाबला शुरू होने वाला है. Requesting the skipper of Survivor मास्टर टॉसाक बेगीन यो. It's a last call going out to you, skipper of Survivor. It's the last ball going out to the skipper. It's a strict warning by the organizers. जर तू हांगा 1 मिनटा भितर पावना जाल्यार तुजे ओवर डिडक्शन जे आसा ते स्टार्ट जातले. मागीर तू कोणाकूच ब्लेम करूं शकना. कॅप्टन ऑफ सर्वायवर दिसाक आनीक 5 मॅची जावपाक जाय, सो मातशें कॉपरेट करात. हेलो टॉप टीम, दोनों टीमों के बीच डांस हवा में लहराया गया
और टांस गिरा आरओ के पक्ष और बैटिंग कौन करेगी आरो ने टॉस जीत कर बैटिंग आरो ने हाँ समीक्षा समीक्षा टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया और यह मुकाबला सबसे बड़ा मुकाबला दोनों टीमों में बड़े बड़े बैट्समैन हिटर के रूप में जाने जाते हैं, अच्छे अच्छे सिक्स लगाते हैं और यह मुकाबला काफी अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा सभी दर्शकों को। लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब पे जुड़े रहिए। और हमारे अनुभवी अंपायर बड़े बड़े मैचों का अनुभव इस कड़ी धूप में हो जलवा दिखाने का मौका और ट्वेल्व मैन कमेटी बॉक्स पर संपर्क करें। हमारी आवाज कैप्टन तक जा रही तो अपना जल्द से जल्द दोनों सलामत जोड़ी को क्रीज पे भेजें। ट्वेल्थ मैन कमेटी बॉक्स पे संपर्क करें। आरव लेवन शेल्डे आणि सनीक्षा क्रिकेटर्स सावयवेर एम कितना होगा 5 होगा ना कितना बार यूज हो रहे हैं 5 वाला ना यह मुकाबला 5 ओवरों का खेला जाएगा। मात्र 30 बॉल आपके पास 30 बॉल में आपको विशाल स्कोर की जरूरत है और दोनों सलामत जोड़ी क्रीज पे जाते हुए मैच सनीक्षा क्रिकेटर्स सावयवेर एम
स्ट्राइकर बैटमैन्स नेम स्ट्राइक पे यतीन और नॉन स्ट्राइक पर सनिकेत, दोनों ही बड़े बड़े बैटमैन्स और उनके सामने बॉलर होंगे। अभी डिस्कस चल रहा है कैप्टन महोदय द्वारा पहला ओवर किसको सौंपा जाएगा। पहले ओवर की वो बड़ी जिम्मेदारी जो बहुत जल्द देखने को मिलेगी। अंपायर का फैसला सर्वमान्य फैसला। बॉलर नेम विनेश, विनेश को पहली बॉल और पहली बॉल उठा के खेल दिए और वहां पे फील्डर मौजूद और 1 रन से संतुष्ट और 1 रन से उनका खाता खोला और टीम का 1 रन और स्ट्राइक को चेंज किए और बैट्समैन तैयार और अंपायर को क्रॉस करते हुए धीमे धीमे और उठा के खोल दिए। नीचे फील्डर मौजूद। इस तरह से मिस फील्डिंग वहां पे बड़े बैट्समैन का विकेट अगर आप इसी तरह से छोड़ेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। बड़ा बैट्समैन मिस फील्डिंग, पहले विकेट का पतन हो सकता था, वहां पे कैच ड्रॉप और अगर यह मुकाबला आपको अपने पक्ष में करना है तो अच्छी गेंदबाजी और अच्छी फील्डिंग करनी पड़ेगी। और फिर से तीसरी बॉल को उठा के खोल दिया सीमा रेखा के बाद 6। अंपायर का इशारा 6, पहला 6 निकलता हुआ पहले ओवर में। तीसरी बॉल को सीमा रेखा के बाहर उठा के खेले हैं पुलियम पास 6, उनके बल्ले से लाजवाब सा 6। अगर इसी तरह से आप कैच छोड़ेंगे तो नुकसान आपके सामने। और फिर से उठा के खेल दिए स्ट्रेट दिशा में सीमा रेखा के वहां 4 रन, दनदनाता हुआ चौका, बेहतरीन शॉट स्ट्रेट दिशा। इसके पहले 6 और 4 रन। इस 4 रन की वजह से स्कोर जा पहुंचा है 12 रन। और फिर से उठा के खेल दिए हैं और सीमा रेखा के बाद 4 रन, बैक टू बैक 3 बाउंड्री, जिसमें पहला 6 और बैक टू बैक 2 4 देखने को मिल रहा है। अच्छी बैटिंग कही जाएगी यहां पर। अगर यह मुकाबला जीतना है तो अच्छी गेंदबाजी की जरूरत है। पहला ओवर प्रगति पर बेहतरीन था स्कोर, स्कोर बोर्ड 16 रन जो हमारे स्कोर बोर्ड पे शो कर रहा है। 16 रन पहला ओवर प्रगति पर। और फिर से अगली बॉल के लिए बैट्समैन तैयार और वहां पे अच्छी गेंद कही जाएगी। और 1 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन बिना विकेट के नुकसान पे। हमारे बड़े मैचों का अनुभव दोनों अंपायर महोदय, अंपायर अनुभवी अंपायर, बड़े बड़े मैचों में इनका बुलावा आता है ऑनलाइन द्वारा। और दूसरा ओवर बॉलर नेम
इमरान दूसरा ओवर लेके आए हैं इमरान। देखते हैं इमरान अपनी टीम के लिए क्या कर सकते हैं। और पहली बॉल और वहां पे अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी बैटमैन्स को। बाहरी बॉल और वहां पे चतुर्भरी गेंदबाजी कही जाएगी इमरान के रूप में, जो दूसरा ओवर कैप्टन द्वारा सौंपा गया। और फिर से अगली बॉल के लिए तैयार और वहां पे फील्डर मौजूद और वहां पे अच्छी फील्डिंग कही जाएगी, लेकिन वहां पे 4 रन मिलेगा। बेहतरीन सा शॉट, रोमांचक मुकाबला। यहां पे आइए और लाइव टेलीकास्ट को देखिए और जुड़िए यूट्यूब से। और फिर से अगली बॉल के लिए तैयार और फिर से मारने का प्रयास। वहां पे बॉल डॉट, बल्ले बॉल से कोई संपर्क नहीं। बढ़िया बैटिंग कही जाएगी। दोनों सलामत जोड़ी क्रीज पे टिकी हुई है दूसरा ओवर प्रगति पर और वहां पे फील्डर मौजूद है। वहां पे एक रन आसानी से मुकम्मल। अगर यह मुकाबला जीतना है आपको तो 6 और चौके आपको जरूरत है। एक अच्छा स्कोर की जरूरत है क्योंकि सामने अच्छे अच्छे बैटमैन्स हैं। बढ़िया मुकाबला इस धूप में, कड़ी धूप में लाइव टेलीकास्ट और वहां पे फुल टॉप और फुल टॉप सारा 6 बेहतरीन सा शॉट, कलाई का प्रयोग और अंपायर का सारा 6 20 कहा जाएगा। इसको 2 दर्जन 6 बोला जाएगा। अगर आप इसी तरह से कैच को मिस करेंगे तो रिजल्ट आपको सामने बेहतरीन सा नुकसान देखने को मिलेगा। अगर हम मैच अपने पक्ष में करना चाह रहे हैं तो अच्छी गेंदबाजी की जरूरत है और यहाँ पे मारने का प्रयास, लेकिन बॉल नीचे और बैट पे हल्की हल्की संपर्क की वजह से 1 रन से आसानी से मुकम्मल। स्ट्राइक को चेंज किए हैं और 2 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 28 28 रन 12 बॉल समाप्त। अभी मात्र आपके पास 18 बॉल शेष बॉल। 18 बॉल में आपको एक विशाल स्कोर की जरूरत है। अभी बिना विकेट के नुकसान पर काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। दोनों सलामत बैटमैन्स, दोनों जोड़ी टिकी हुई है क्रीज पे। स्कोर 28। हाँ 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 बॉलर नेम असली। खाते का पहला ओवर और टीम का तीसरा ओवर असली द्वारा और अंपायर का सारा फ्लाइट और लेग बाई 4 रन। असली को तीसरा ओवर सौंपा गया। तीसरे ओवर के पहली बॉल पे हाइलाइट और लेग बाई 4 रन। और वहां पे अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी, तीखी गेंदबाजी कही जाएगी। और फिर से ऑफ दिशा में नीचे फील्डर मौजूद, 1 रन से संतुष्ट। तीसरा ओवर प्रगति पर
एक ही 6 आया अभी तक में, दो आया ना। और उठा के खेल दिए हैं, स्टिंगर रखा के बाद 6, अंपायर का इशारा 6, तीसरा ओवर में। और अभी तक टीम का तीसरा 6 देखने को मिला है इनके बल्ले से। तीसरा ओवर प्रगति पर लंबे लंबे 6, 3 6 आ चुके हैं और इस 6 की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 40 रन। और फिर से एक दिशा में और 1 रन। और अंपायर का इशारा रिव्यू। और हमारे कैमरामैन द्वारा और थर्ड अंपायर द्वारा चेकिंग के रूप में रिव्यू लिया गया है। और कुछ ही पलों में आपके सामने थर्ड अंपायर प्रतीश नायक द्वारा रिजल्ट। अनुभवी अंपायर, बड़े बड़े मैचों का अनुभव इनके अंदर। और अंपायर का सारा फेयर डिलीवरी, बेहतरीन सा अनुभव। मैं आपके पहले भी बताया था, बड़े बड़े मैचों का अनुभव है इनके अंदर, वो कला है, वो जज्बा है इनके अंदर। बड़े बड़े मैचों में इनको बुलावा आता है ऑल गोवा। और अंपायर के सारा व्हाइट, 1 रन अतिरिक्त के रूप में, जो व्हाइट के रूप में स्कोर बोर्ड पे 1 रन को हम प्लस करेंगे। दोनों टीमें और फिर से मारने का प्रयास, बॉल नीचे और हल्के संपर्क की वजह से बॉल अच्छी तरह से उठी नहीं है। और 1 रन वहां पे। और तीसरा ओवर की लास्ट बॉल, देखते हैं इस बॉल पे क्या आता है। अभी तक इस इनिंग में 3 6 देखने को मिला सभी दर्शकों को। काफी दर्शक बेचैन, बेखुश। और वहां पे उठा के खेल दिए हैं नीचे फील्डर, हवाओं से दूर। और वहां पे आपस में टकराते हुए अच्छी फील्डिंग कही जाएगी। और 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 45 रन, नॉट आउट, एक भी विकेट नहीं। अच्छी बैटिंग कही जाएगी। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन, 45। मात्र अभी आपके पास 12 बॉल, शेष बॉल 2 ओवर और है आपके पास। 2 ओवर में आपको इतने रन इकट्ठा करने हैं कि जिससे आपको विजय की तरफ बढ़ने में वो दिक्कत ना हो। बढ़िया सा बॉलर 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 कौन बॉलर कौन बॉलर नेम निखिल। कैप्टन द्वारा चौथा ओवर सौंपा गया निखिल के रूप में। देखते हैं निखिल कितने विकेट लेते हैं। अभी तक एक भी विकेट इस टीम के द्वारा से लिया गई नहीं है। देखते हैं चौथा ओवर में क्या कर सकते हैं। चौथा ओवर को जिम्मेदारी उनको दी गई है। और वहां पे बहरी और अंपायर का इशारा व्हाइट, बैटमैन से थोड़ी ही दूर बहरी बॉल को पेश कर रहे हैं। और अंपायर का इशारा व्हाइट। और फुल टॉप पे और उसमें 6, बेहतरीन सा 6। अंपायर का इशारा, नो बॉल, नो बॉल को फिर हिट
यानी आपके पास फ्री डिलीवरी, और इस 9 बॉल पे 6 मारना आसान नहीं होता है, लेकिन वो बैटमैन करके दिखाए हैं। सीमा रेखा के बाहर उस बॉल को तूफान की तरह भेजे हैं, और यतीन के बल्ले से निकलता हुआ, और फिर हिट पे कोई भी रन नहीं। अच्छा कमबैक बॉलर द्वारा, और यहां पे दोनों सलामत जोड़ी पार्टनरशिप, 20 बॉल 53 रन का योग दिया है। और वहां पे अच्छी गेंदबाजी, तीखी गेंद, बैटमैन से कोई चांस नहीं, लेग दिशा में खेलने का प्रयास, वहां पे बाल बाल बीट हुए हैं। अच्छा कमबैक बॉलर द्वारा, चौथा ओवर दिया गया है इनको कैप्टन के रूप में। और उठा के खेल दिए, नीचे बॉलर मौजूद, और वहां पे कैच छूटा। इसके पहले ही ओवर में कैच छूटा, और ये चौथे ओवर में दूसरा कैच, और यहाँ पे मिस फील्डिंग, और यहाँ पे 2 रन आसानी से मुकम्मल। अगर इसी तरह से आप कैच पे कैच छोड़ेंगे तो आपको नुकसान भुगतना पड़ेगा। और स्कोर 55, चौथा ओवर प्रगति पर। अभी तक एक भी विकेट देखने को नहीं मिला है। और यहाँ पे व्हाइट, 1 रन और इजाफा हुआ व्हाइट के रूप में, जो बुरी बॉल को संपर्क कर रहे हैं। वहां पे अंपायर द्वारा व्हाइट। अभी तक और फुल टॉप, सीमा रेखा के बाद अंपायर को सारा 6, लाजवाब सा 6, बेहतरीन सा 6, और इनके बल्ले से इसी तरह से 6 देखने को मिलता है। मैं इसके पहले सभी दर्शकों को आगाह किया था कि ये बड़े बड़े 6 के रूप में जाने जाते हैं, जो अभी तक क्रीज पे टिके हुए हैं, और इनके बल्ले से लाजवाब सा 6 देखने को मिला है। स्कोर 62 बिना विकेट नुकसान पर। और वहां पे आर्कर का उपयोग सीधे जड़ में डालने का, लेकिन वहां पे बैटमैन्स Meanwhile, a call going out to the skipper of Bhumika and Kanka to please collect the jerseys and this time down the ground goes Yatin Naik and he goes big. Requesting the skippers of Bhumika and Kanka and the skipper of match fixing Karapur to please come for the toss. 4 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 68। अभी तक एक भी विकेट देखने को नहीं मिला है, उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं मिली है। 4 ओवर की समाप्ति पर 68 रन। बॉलर ने अरविंद लास्ट ओवर अरविंद
और यहाँ पे डेड बॉल। और वहाँ पे अच्छी गेंदबाजी अल्विन के रूप में, जो लास्ट ओवर इनको सौंपा गया कैप्टन महोदय द्वारा। और यहाँ पे विकेट लास्ट ओवर में रन आउट आए और इस दोनों जोड़ी को तोड़े लास्ट ओवर में अल्विन के रूप में। नेक्स्ट बैट्समैन बल्लेबाज नेम रन आउट क्या नाम बताया? ऋषिकेश ने। और इनका स्थान लेने आए हैं ऋषिकेश। देखते हैं क्या कर सकते हैं लास्ट ओवर में ऋषिकेश। और एक रन से अपना खाता खोलें और स्ट्राइक को चेंज किया है। बढ़िया गेंदबाजी कही जाएगी अल्विन के रूप में, जो कैप्टन द्वारा लास्ट ओवर सौंपा गया। बढ़िया गेंदबाजी। और वहां पे फुल टॉप, और फुल टॉप का रिजल्ट आपके सामने 6, लाजवाब सा 6, बेसनल 6 कहा जाएगा। बढ़िया। और इस तरह से यतीन का अर्धशतक पूरा इनके बल्ले से निकलता हुआ 50 रन पूरा। और 50 रन क्या पारी खेले हैं, 19 बॉल में 50 रन जड़ चुके हैं। बेहतरीन सा बल्लेबाजी और घातक बल्लेबाजी साबित हुए हैं। और फिर से उठा के खेल दिया है बैक टू बैक 2 6, लंबा 6 और स्कोर 81। बढ़िया बल्लेबाजी चल रही है अभी तक, जो क्रीज पे टिके हुए हैं और शतक बनाकर खेल रहे हैं। उसके बाद 2 बैक टू बैक 6 इनके बल्ले से निकलता हुआ। और फिर से उठा के खेल दिए हैं और सीमा रेखा के बाहर 4 रन, दनदनाता हुआ चौका। बीएसएनएल इंडिया बैक टू बैक 2 6 और एक चौका देखने को मिला है इनके बल्ले से। मैं इसके पहले भी आगाह किया था कि बड़े बैट्समैन के रूप में जाने जाते हैं, हिटर के रूप में जाने जाते हैं, जो लास्ट ओवर में देखने को मिला। लास्ट बॉल और यहां पे लेग बाय दिशा में सीमा रेखा के बाद 4 रन, दनदनाता हुआ चौका। बैक टू बैक 2 6 और 2 चौके देखने को मिला है। और स्कोर 89, बड़ा स्कोर, विशाल स्कोर 80, 89, 90 रनों का टारगेट दिया है, यानी आपको जीतना है तो 90 रन कंपलसरी। विशाल स्कोर। मात्र 5 ओवरों का मैच खेला गया जिसमें 89 रन बनाकर 90 रनों का दरकार दिया है। बेहतरीन सा बल्लेबाजी। अब तक का हाई स्कोर जो इस मैच में, मैच का दूसरा दिन है इस टूर्नामेंट में, हाई स्कोर 89 रन, मात्र 30 बॉल में 89 रन टीम के लिए खड़ा किए हैं। बेहतरीन सा बल्लेबाजी कही जाएगी, जितना ही तारीफ करूं उतना ही कम पड़ेगा। अगर यह मुकाबला जीतना है तो आपको इसी तरह से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, 6 और चौके लगाने पड़ेंगे। Meanwhile, a call going out to the skippers of match fixing Karapur and the skipper of Bhumika 11 Kanka to please come for the toss.
It's a kind request to the keepers, Bhumika Leven Kanka and Max Fixing Karapur. It's the second and the final call to you. Meanwhile, a mammoth score of 90 runs been posted by the team from Savaveram. What a knock it is from the one of the stalwarts of Goa, Yatin Naik. When it comes to the ball cricket, tennis ball cricket, we see him wait like that. And once again, he stood and he stood tall for his team. What a knock, scoring 50 runs in quick time. नमस्कार मित्रांनो, मी भूषण गोळे. आम्ही कुनायकर चषक ही स्पर्धा 29 एप्रिल ते 3 मे या रोजी होत आहे. या स्पर्धेमध्ये सहभागी झालेल्या सर्व खेळाडूंना, आयोजकांना आणि संघ मालकांना माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू. Scoring 64 of 21 delivery, 6 sixes and 4 boundaries to his credit there. Yatin Naik, what innings to take his team to mammoth score of 89-90 to be chased down by Arav Aryan Shelde and invokes the two batters. It's Ashley Carvalho alongside that man who played in that President's Cup was a part of the squad. Both of them, Imran Mullah and Ashley Carvalho, two openers out in the center, part of that President's Cup squad Goa. Both have made incredible marks in the Goan cricket. Imran Mullah and Ashley Carvalho, who is going to take the strike. It's going to be Ashley Carvalho who is taking the strike. Alvino Carvalho rather, both the brothers playing in this team, Alvino Carvalho and Ashley Carvalho. So Alvino Carvalho will be going to take the strike and the pace to start of the proceedings. First ball goes Alvino and goes back deep into that crowd. It's a maximum. Starts and stops with a maximum. Next delivery, trying to keep that ball away from the hitting of arc of Alvino. Producing a dead ball. Imran Mullah at the other end will be itching to come on strike. Next delivery from Diptesh. Again keeping away, Nick through to the wicket keeper and the first wicket down in front of Alvino. It's a 6 for the loss of 1. Ariana Shelley. Now the honors will be upon the team of
Aravari and shoulder in box. Vireshijam at number 3. संडे का आएंगे पब्लिक संडे पब्लिक रहेगी इसमें Vireshijam comes out to bat at number 3 with Diptesh. First ball a sixer, then a dot, then a prize wicket of Elvino Carvalho. In box, Vireshijam. Another stalwart of Goa. Vireshijam comes out to bat at number 3. First ball being faced by Vireshijam of his innings. Tries to swing hard, played into the leg side region, and in comes the single to get off strike Vireshijam of the blocks. The score moving to 7. We are still into the first over. Decent over so far from Diptesh, picking up the prize wicket of Elvino Carvalho and keeping Imran Mullah at the non-striker's end. Now on strike Imran Mullah. Tries to go big appeal. No, says the umpire. A dot ball. A slow one that dipped on Imran Mullah and was not able to play that ball. Imran ends up giving a dot. Next match will be a nail biter once again. Bhumika 11 Kamka in action. This time down the ground. Brilliant fielding. Keeps it down to 1. Single to sum up the over to Imran Mullah and score taking down to 8 runs without a loss after the completion of 1 over. Requesting the skippers of Bhumika 11 Kanka and skipper of match fixing Karapur to please come for the toss. Requesting Rajat Kudalkar to please come up for the toss and also the skipper of match fixing Karapur to please come for the toss. After the completion of first, it is 8 without a loss in the chase of 90. So, more four was remaining and need another 82. This time Imran Mullah. This is Imran Mullah for you. Goes down the ground and goes for maximum. Welcome to the crease. Yes, to the bowler. Ambar Naik, another stalwart of Goa. Ambar Naik, welcome to the crease. This is going to be the best of Goa battle. Ambar Naik against Imran Mullah. First ball, welcome to the crease, says Ambar. Says Imran Mullah to Ambar Naik. Once again, clears the field. No, straight down the throat of the fielder. This time, Ambar Naik answers the question and picks up the wicket of Imran Mullah. His second wicket down at the score of 14 for 2. Aryan Shelly. Imran Mullah. Hello, inbox Ashley Carvalho.
के लिए बोलिए ना एक आधे खिलाड़ी. Ashley Carvalho starts off with a dot ball. Brilliant bit of bowling by Amber Naik as well. First ball tongued away by Imran Mullah for a maximum. Then comes back with his wicket and then a dot. This time once again straight to the field. Saniket Palka fielding down there. Another dot. Requesting the skipper of match fixing Garapur to please come up for the toss. Your position captain is already here. This time once again straight in the hands of the mighty Yatin Naik and Ashley Carvalho walking back to the pavilion without troubling the score. Second wicket from Naik in his over. First ball. This time just single. Niman walked in, picked up a single, went to the other end. The score moving to 15 after the completion of 2. चौका मिलेगा और जी हाँ चौके के साथ स्कोर जाके पहुंचेगा. न्यू बैटर अठारह रन 2 ओवर्स की समाप्ति 10 रन इस ओवर से. दो विकेट्स अमर नाइक के नाम 10 रन लेकर 2 विकेट से उनका स्टैट्स. और गेंदबाजी में बदलाव. गेंदबाजी के लिए गेंदबाज एक बार फिर से हवा में गेंद नो मैंस लैंड में जाके गिरेगी. मिल जाएगा सिंगल. तनिष कड़ेकर गेंदबाजी के मोर्चे पर तीसरी गेंद. एक बार फिर से मिल जाएगा सिंगल. बीस रन पे फर्स्ट स्कोर. एक बार फिर से पैडल कर दिया इस गेंद को और मिल जाएगा चौका. और ये बढ़िया बल्लेबाजी. अगर हम बात करें बल्लेबाजों की तो इस बार हवा में गेंद कैच का मौका और जाएगा लपका. और ऐसा लगता है गया था लपका पर छूट गया. कैच मिल जाएगा सिंगल. 25 रन लग जाएंगे स्कोर बोर्ड पर.
हवा में गेंद, इस बार बनाए कैच का मौका और इस बार जाएगा लपका विकेट कीपर द्वारा और एक विकेट जाता हुआ आर्यन शेल्ड इन डीप ट्रबल। और चाहिए तो उधर जाके ले लो बाद में। हाँ क्या है भैया डायरेक्ट गया नहीं तीन ओवर्स की समाप्ति, 3 ओवर्स की समाप्ति के बाद 25 रन स्कोरबोर्ड पर और नए बल्लेबाज जाते हुए बैटर्स नेम प्लीज। ट्वेल्व बाय 65 to get पेनल्टीमेट ओवर की पहली गेंद बॉलर है सरिगेट पालकर मिल जाएगा सिंगल। स्कोर जाके पहुंचेगा 26 रन स्कोरबोर्ड पे लग जाएंगे। इस बार हवा में खड़ी हो गई गेंद, फील्डर बरसठ प्रयास मिल जाएगा 6। बत्तीस रन स्कोरबोर्ड पे। हालांकि मैच अब औपचारिकता है शेष और आर्यन शेल्ड एक पार्ट टारगेट उनके सामने। इस बार बढ़िया शॉट अलॉन्ग द ग्राउंड, फील्डर तैनात, मिल जाएगा सिंगल। स्विच हिट का प्रयास, डॉट बॉल। फुल टॉस और सीधा फील्डर के हाथ में पर कैच ड्रॉप और एक सिंगल जोड़ा जाता हुआ 34 पे पहुंचता है स्कोर। एक आसान सी जीत यहां से होनी चाहिए अगर हम और रिव्यू मांगा गया है नो बॉल के लिए और अंपायर प्रतीश नायक पर अब जिम्मेदारी आ गई है कि नो बॉल वेस्ट आए, नो बॉल चेक करे और डिसीजन दे ऑन फील्ड। थर्ड अंपायर कॉल वेदर इट इज नो बॉल और अ फाउल डिलीवरी। इट्स लीगल बॉल, इट्स अ फेयर डिलीवरी। तो स्कोर वही रुकेगा जाके 34 रन 4 विकेट के नुकसान पे। तीसरा ओवर तनिष्क का समाप्त। जैसे ही नो बॉल फेयर डिलीवरी आई, एक हल्की सी मुस्कान दिखी तनिष्क डेकर के
चेहरे पे। चौथा ओवर। संकेत पालकर 33 रन स्कोरबोर्ड पे। एक बार फिर से बढ़िया शॉट पर मिल जाएगा और एक सिंगल। 36 पे पहुंचता है स्कोर। हरीश गेंदबाजी करते हुए। हवा में गेंद, कैच का मौका, कैच जाएगा लपका। लवकर टाकायचं ना स्कोर. 36 रन स्कोरबोर्ड पे। लवकर टाकायचं ना माझ्या रात्री स्कोर. 5 37 फॉर द लॉस ऑफ 5 और वीरेश एजियम आउट होगी वापस डगआउट। नए बल्लेबाज कोणतरी टाइम रे एक तरी किती करपा. हवा में गेंद, कैच का मौका और कैच जाएगा लपका एक बार फिर से। और एक विकेट तो हैट्रिक पर रहेंगे। अब हैट्रिक पे रहेंगे हरीश अगली गेंद के साथ। नए बल्लेबाज क्रीज पर, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज क्रीज पर। इस बार हवा में गेंद, एक बार फिर से फील्डर से दूर मिलेंगे पूरे 4। खालू आपको हो ना था किसी को बैठा देना देखने के लिए. एक ही रन मिला है। एक बार फिर से स्विंग मिस, डॉट बॉल। इसी के साथ कितना होगा मैच की समाप्ति। मैच जीता सनीक्षा सावेवरम। सनीक्षा विकेट सावेवरम और मैन ऑफ द मैच undoubtedly goes to that big name in Goan cricket circuit. It goes to Yatin Naik for his brilliant knock of 64 in 21 deliveries. Man of the match Yatin Naik. मैन ऑफ द मैच यतीन नायक। क्या पारी खेले हैं, आए और तूफान की तरह बहुत ही शानदार पारी खेले हैं। उनके बल्ले से 64 रन, भूमिका 11 का 6 6 4 चौवे देखने को मिला है। यतीन नायक के बल्ले से मैन ऑफ द मैच, उसके पूरे हकदार यतीन नायक। आज के मैच का सबसे बड़ा स्कोर, विशाल स्कोर 89 रन बनाकर मुकाबला अपने पक्ष में किए हैं। भूमिका 11 आणि मॅच फिक्सिंग करा.
भूमिका 11 और कारापुर ना। अगला मुकाबला भूमिका 11 कारापुर के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें टांस को लहराया गया। डांस कौन जीता? टांस भूमिका 11 द्वारा टांस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला। और ये जो जर्सी दिख रही है, ये जर्सी सीएसके के रूप में दिखी जाती है आईपीएल में। धोनी जर्सी नंबर धोनी येलो कलर। कौन सा फील्डिंग भूमिका 11 का कारापुर कारापुर मैच फिक्सिंग कारापुर। मैच फिक्सिंग कारापुर के बीच मुकाबला खेला जाएगा। और कुछ ही पलों में उनके दोनों सलामत जोड़ी क्रीज पे मौजूद होंगे। और इस धूप में जो अनुभव है मिलने का, ये फ्लाइंग ना फ्लाइंग मैच टांच वो मैच जीता। फिक्सिंग कारापुर। भूमिका जीती है टांच। भूमिका भूमिका मैच फ्लाइंग मैच फिक्सिंग मैच फिक्सिंग यहाँ पे सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैंने बस सांगतो तुला येते नाव आहे ना कारापुर पण आहे कारापुर के इस मैच में बड़े बड़े दर्शक जो मौजूद हैं, प्रिंस के नाम से जाने जाते हैं। मामाचा स्कोर बुगार बस म्हणतो कैडा वो करता है वो। तू करता हाँ आता कर रे दाखव इदा कर आलाय करूया ये राजा दाखव इथं लेग पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट तरी बस वो बताएंगे तुमको। पेज ओपन करो दूसरा। और कुछ ही पलों में मुकाबला शुरू। रजत पेन कोण रे यह मुकाबला 5 ओवर यानी 30 बॉल। 30 बॉल में आपको इतने इकट्ठे करने पड़ेंगे कि जिससे आपको विजयी पे है ना रजत कुला घोषित होने में कोई दिक्कत ना हो। और स्ट्राइक पे रजत कुला आमने सामने दोनों टीम में बड़े बड़े बैटमैन स्ट्राइक पे बैटमैन। बोला रजत कुला हाँ रजत कुला शुभम जा स्ट्राइक पे रजत है। रजत कुला अंपायर महोदय 2 मिनट के लिए मैच को रोका जाए। अंपायर महोदय हे स्टंप आहेत ना स्टंप थोडेसे वरती कर झोपले स्टंप 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 इस टाइम को सरळ कर सरळ थोड़ा से हाँ बरोबर अच्छी दिशा में करें। बैटिंग टीम है ना बॉलिंग। कोई एक अतिरिक्त खिलाड़ी बैटमैन इसके एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेटी बॉस को संपर्क करें, अपने खिलाड़ियों का थोड़ा नाम बताने में मदद करें। हे तुझी टीम कुठली माहिती वेगळे सांगते ना एक अतिरिक्त खिलाड़ी बॉलर त्याला बॅटिंग ना बॉलर बॉलर ने बॉलर बॉलिंग टीम तुमची और वहां पे काय ना काय टाकतो पहली बॉल का शुरुआत। अरे बॅटिंगला बॉलिंग दिली बॉलिंगला बॅटिंग दिली हे बघ पहिले नंतर पुढचं अच्छी बॉल, पहली ओवर शुरुआत
बड़ी शुरुआत। बॉलर नेम रुद्रेश। और इस तरह से 4 रन। क्लासिक शॉट, बहुत ही लाजवाब सा शॉट इनके बल्ले से निकलता हुआ। बॉलर फंसा ट्रिप में, बॉल गई गैप में, बेहतरीन सा गैप को ढूंढा और आसानी सा चौका पहला बॉल डॉट ना, उनको मिला। पहला बॉल डॉट इधर लिख, 0 लिख। हाँ। और उसके बाद और फिर से उठा के खेल दिए हैं। बॉल और बॉल से हल्के संपर्क की वजह से अच्छा सा वो संपर्क नहीं रहा और बाउंड्री के ही अंदर 1 रन आसानी से मुकम्मल। और इधर 5 रन कट कर। स्ट्राइक को चेंज किए और उनके सामने होंगे शिवम, शुभम। और शुभम के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका, इनके बल्ले से पहला चौका और अच्छी शॉट कही जाएगी। बेहतरीन सा शॉट इनके बल्ले से निकलता हुआ 20 रन चौका, जो नॉन स्ट्राइक पे थे, स्ट्राइक को चेंज किए और अच्छी तरह से बॉल को पढ़े और लेग दिशा में आसानी से चौका। 9 रन कट नहीं, ऐसे लाइन। अभी तक आवाज बढ़ाई ना। बहुत ही लाजवाब सा बैटिंग साबित हो रही है। हे 3 बॉल झाले. पहिला बॉल सांग मला. डॉट. दुसरा और फिर से तैयार और वहां पे आरकर मारने का प्रयास और वहां पे 1 रन डॉट फोर सिंगल. और एक रन से स्कोर बोर्ड। 9 रन सिंगल ना. कितना कितना पाचवा सिंगल ना. 10 रन सिंगल. 10 रन। और फिर से मारने का प्रयास, वहां पे अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा और 1 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन। सिंगल लिया. बिना विकेट के नुकसान पर अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी। पहला ओवर 10 रन खर्च किए। बॉलर कौन होंगे? बॉलर कौन होंगे दोस्त? अरशद अरशद ने अरशद ने और कैप्टन द्वारा दूसरा ओवर सौंपा गया अरशद के रूप में। अब देखते हैं अरशद क्या कर सकते हैं, कितने रन देते हैं और कितने विकेट लेते हैं। मात्र उनको 6 बॉल और वहां पे फुल ओवर, वहां पे शिवा रखा के बाद 4 रन, दनदनाता हुआ चौका। बीएसएनएल इंडिया, बेहतरीन सा शॉट इनके बल्ले से निकलता हुआ। स्ट्राइक पे शुभम जा। शुभम के बल्ले से कितना चौका शुभम के बल्ले से निकला? 2 मारा। अभी तक इनके बल्ले से 2 चौके देखने को मिला है। अच्छी और वहां पे गूगली बॉल और वहां पे बैटमैन से कोई चांस नहीं। बैट को आसानी से विकेट कीपर के दस्तानों में बेहतरीन गेंदबाजी कही जाएगी। अच्छा कमबैक। और फिर से मारने का प्रयास, वहां पे बैक टू बैक बॉल को बीट, अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी। जो लेंथ पे बॉल और सीधे एक टप्पा का प्रयोग और विकेट कीपर के दस्तानों में अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी। बैटमैन को बड़ी हिट लगाने में दिक्कत काफी महसूस। और वहां पे मारने का फिर से प्रयास, बल्ले पे हल्के संपर्क की वजह से 1 रन आसानी से मुकम्मल। बढ़िया गेंदबाजी कही जाएगी जो कैप्टन द्वारा दूसरा ओवर सौंपा गया। हर्षद
और यहाँ पे 1 रन पूरा। अभी तक इनके दूसरे ओवर में 6 रन देखने को मिला है। लास्ट बॉल प्रगति पर और वहां पे उड़ा के खेल दिया है हवा में, नीचे फील्डर तैनात और वहां पे अच्छा कैच, सुपर कैच जो हवाओं को लहराते हुए हवाओं के नीचे पकड़ा गया कैच को और उस कैच को बहुत बड़ा सा विकेट के रूप में जो इनके बल्ले से 2 चौके देखने को मिला है और वहां पे कैच हवाओं में उछाला गया और नीचे फील्डर मौजूद। इस तरह से आसानी से 1 विकेट। बढ़िया गेंदबाजी कही जाएगी हर्षद द्वारा जो 6 रन खर्च करके और बड़ा बैट्समैन के रूप में पवेलियन को वापस किया है। 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी हमारे बीच लगभग 2000 दर्शक उपस्थित रोमांचक मुकाबला देखने के लिए। ऐसा मुकाबला बहुत कम देखने को मिलता है जो यहाँ पे बड़ा मुकाबला, बड़े बड़े टीमें हिस्सा ली हैं इस टूर्नामेंट में। लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब पे जाइए और अपना मनपसंदा भाषा को सिलेक्ट कीजिए और वहां पे लाइव जुड़े रहिए। सिद्धेश और अगला बॉलर होंगे सिद्धेश और इनके बल्ले से जबरदस्त सिक्स। सिद्धेश के पहली बॉल को आसानी से सीमा रेखा के बाहर 6 रन दनदनाता हुआ 6 इनके बल्ले से पहला 6 निकलता हुआ। अच्छी फॉर्म रजत के बल्ले से ना और इस छक्के की वजह से स्कोर बोर्ड 22। बढ़िया स्कोर। फिर से अगली बॉल के लिए तैयार और इस तरह से उठा के खेल दिया है। काफी ऊंचाइयों गेट नीचे फील्डर मौजूद। इस तरह से आसानी सा कैच, बहुत ही लाजवाब सा कैच जो एक फील्डर को रजत के रूप में पोलिविया वापिस किए। अच्छा सा कैच वहां पे। इस तरह से 2 विकेट के नुकसान पर बढ़िया सा फील्डिंग और उतनी ही अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी। 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगला बैट्समैन कौन? ये बैट्समैन कौन अगला? रोशन। और उनका स्थान लेने जा रहे हैं रोशन। देखते हैं रोशन के बल्ले से क्या निकलता है। पहली बॉल पे 6 या चौका देखने को मिलता है या सिंगल से अपना खाता खोलते हैं और स्ट्राइक को चेंज करते हैं। इस बॉल पे रिजल्ट आपके सामने कुछ ही पलों में। बढ़िया मुकाबला, रोमांचक मुकाबला दोनों टीमों के बीच। और इस तरह से फुल टॉप और पवेलियन पार 6 इनके बल्ले से निकलता हुआ 6 और बल्ले से खाता खोलने और 6 रनों का उपहार। बहुत ही लाजवाब पारी आए और बॉल को सही दिशा में भेजें। बोल 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 दे दो।
अच्छी बैटिंग। रजत ना रजत ना रजत रोशन ने रोशन के बल्ले से पहला 6, इस छक्के से अपना खाता खोलें। फिर से अगली बॉल के लिए तैयार, और यहां पे बल्ले पे हल्की हल्की संपर्क की वजह से किल्ली पे बॉल जा टकराई और इस तरह से उनका विकेट, इस तरह से 3 विकेट का पतन हो चुका है। अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी। बढ़िया गेंदबाजी, जो छक्के खाकर और अगली बॉल पे किल्ली बोल्ड। अगला बैट्समैन वेदांक ना वेदांक। देखते हैं वेदांक के बल्ले से क्या निकलता है। आकर्षक पारी को क्या साबित करते हैं वेदांक। येलो कलर की जर्सी में देख रहे हैं। अच्छा कमबैक बॉलर द्वारा। और हमारे कमेटी के जितने छोटे और बड़े वॉलेंटियर हैं, जहां कहीं भी हैं, चारों दिशा में फैल जाएं और बॉल को अच्छी तरह से ढूंढ के लाने का प्रयास करें। मैच का काफी समय, कीमती वक्त न जाए और इस कड़ी धूप में। और यहाँ पे अच्छा उछाल और विकेट कीपरों के दस्तानों में सीधा एक टप्पी का प्रयोग। अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी सिद्धेश द्वारा। बढ़िया गेंदबाजी कही जाएगी। और लास्ट बॉल, और यहाँ पे उठा के खेल दिए लेग दिशा में, नीचे फील्डर मौजूद। इस तरह से 1 रन और 1 रन से इनका खाता खुला और इस 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 29। 3 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन। स्कोर बोर्ड लाइव टेलीकास्ट 3 विकेट के नुकसान पर। देखते हैं मात्र अभी आपके पास 12 बॉल शेष बॉल। आपके 12 बॉल में देखते हैं आप क्या कर सकते हैं, क्या पारी खेलते हैं, कितने 6 निकालते हैं, कितने चौका निकालते हैं। इस 12 बॉल में आपको एक तूफान बल्लेबाजी की जरूरत है। बढ़िया मुकाबला। बॉलर कौन रहा है? सचिन सचित 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 लतीन लतीफ लतीफ और बॉलर होंगे लतीफ। कैप्टन महोदय द्वारा चौथा ओवर सौंपा गया। चौथा ओवर की पहली बॉल पे सामना करेंगे और वहां पे मारने का प्रयास, लेकिन वहां पे मिस फील्डिंग, और मिस फील्डिंग का रिजल्ट आपके सामने। अंपायर के सारा 4 रन, B4 चौका, जबरदस्त चौका लहराता हुआ। अगर इस तरह से आप मिस फील्डिंग करेंगे तो काफी नुकसान होगा आपको। So Vedang, the well-built man, is on strike. Once again, India, Vedang goes, tries to go big, and wicket of that big lad. Vedang is walking back to the pavilion cheaply.
trying to play that ball in the fine leg region. नाही 33 for the loss of 4. Involves Ritesh. Ritesh involves Ritesh to replace Vedang. The score starting on Pritesh rather. The score starting on 33. First ball a boundary, then a wicket of Vedanga to the bowler Latif. Involves Pritesh to face Latif with the remaining 4 balls in his over, and over to go after that. 33 on the scoreboard. This time India might be taken. Yes, it is another one. Pritesh walking back to the pavilion without troubling the scorers. 2-2 for Latif. Will be on a trick with the next delivery. Score stagnant on 33. माची गेम फास्ट करची. प्लेयर्स तसेच अंपायराकडे एक रिक्वेस्ट, मॅच कॉपरेट करात आणि गेम फास्ट करात. मॅच फास्ट करा. दोन्ही टिमी लागीं मागता मातशी गेम फास्ट करची. भूमिका 11 काणका तशेंच मॅच फिक्सिंग कारापूर, कित्याक सेकंड सेशन अशी पयलीच गेम आनी हेज्या फाटल्यान खुबशे गेमी खेळपाचे आसात. जर बॅड लायट गेली तुमी फुडल्या स्टेजीक पावले जाल्यार तुमकांच प्रॉब्लम जातलो. कॉपरेट करात आणि मॅच क्विकली गेम्स जे आसा ते फिनिश करपाक हेल्प करात. फुडला बॅटर क्रिजीर जॉइन जाता आणि न्यू बॅटर जावन आसा धनेश. फुडला बॉल डावन दी ग्राउंड खेळटा बॅटर, लेफ्ट हँडेड बॅटर, राउंड स्टम्प्स बॉलर येता, डावन दी ग्राउंड खेळटा, मेळटा सिंगल. स्कोर जाता 34. लतीफ फुडला बॉल घेवन तयार. फुडला बॉल उबारून मारपाचो यत्न करता, बाउंड्री मेळटा बॅटराक. या बाउंड्री सयत स्कोर पावता 38 रन्स. चौथी ओव्हर चालू आसा. 38 रन्स स्कोर बोर्डार लागता. फुडला बॉल क्रुशियल आसतलो. पहिल्या बॉलाक चौको, त्यानंतर 2 बॉलांक 2 विकेटी आणि 1 सिंगल 1 चौको. फुडला बॉल उकलून मारता आटामाट इवन बॅटर रिझल्ट आणि लास्ट बॉलाक मेळटा चौको. बॉलराक म्हणटा टाटा बाय बाय सोक्यान. स्कोर पावता 42 44 रादर 44 स्कोर पावता आणि ओव्हर सोंपता. 4 ओव्हरीचो खेळ मजगती सोंपता. 4 ओव्हरीन फाटल्यान स्कोर जाता 44 रन्स स्कोर बोर्डार. पयली बॅटिंग करता भूमिका 11 काणका अप अगेन्स्ट मॅच फिक्सिंग कारापूर. निवणे ओव्हर आणि निमण्याचो बॉल पहिल्या इनिंगीचे आणि बॉलिंग घालपाक बॉलर येता सचित. निमण्याचो बॉल आणि सचित घालतलो बॉलिंग. मॅच फिक्सिंग कारापूर निमणी ओव्हर बॉलिंग इनिंगेची घेवन येता सचित आणि स्ट्रायकर आसतलो तो. फुल बॉल उगलून मारता बॅटर, फिल्डर अंडरनीथ धरता कॅच. निमण्या ओव्हरीच्या पहिल्या बॉलाक पडटा विकेट.
आणि आउट जात आता बॅटर धनेश. न्यू बैटर क्रेजी रहता प्रचोद भूमिका लवेनकान का. The winners of the tournament organized by Ganpati Bappa Moria recently at Pasola Panchayat ground. हांगा खेळटा first round आणि first round in the spot of bother 44 on the scoreboard in the last over. Even a defendable score, but in the first innings still running at 44. प्रजोत नव बॅटर क्रेजी रहता पहिल्या प्रजोत किती करतात उरल्या ते निमणे 5 बॉल. फुल बॉल उकळून मारता प्रयत्न करता प्रजोत पूर्ण बॉल वळता स्ट्रेट इन द फिल्डर पूर्ण मेट आता सिंगल आणि स्ट्रायकर येता बॅटर आता मात महादेव पोहोचवटला. महादेव हांगासरल्यान उरल्या ते 4 बॉल. कशें खेळटा महादेव फुडलो बॉल घेवन येतलो सचित टू महादेव. 45 रन स्कोरबोर्डा लागता. उकलून मारता महादेव नो लुक शॉट आणि इनटू द क्राउड. या सौकार सहित 50 रन स्कोरबोर्डा लागता. 51 परत एकदा उघडून मारता महादेव आता मार फिल्डर बोरी फिल्डिंग एक बरा एफर्ट दिता आणि सर्टनली उसको जूम करो अच्छा हो एक चौकच असा तवा डॉट बॉल जाता. महादेव स्टील ऑन स्ट्राइक. फुल बॉल फिल्डर असा डॉट बॉल जाता. परत एकदा महादेव खेळटा परत एकदा डॉट बॉल. फुल बॉल फिल्डर असा पिकअप करता मजगती. दुसऱ्या रनाक धावता बॅटर्स थ्रो 2 रन मेळटा. तिसऱ्या रनाक धावता बॅटर्स अपील जाता आणि अंपायर म्हणटा यस मजगती 2 रन मेळटा आणि विकेट पडटा. सो 2 रना फाटल्यान स्कोर जो आसा तो पावता 53 रन आणि 54 रनाची गरज आसतली जेन्ना बॅटिंग करपाक येतले भूमिका लवेनकाणका इन द चेज टू डिफेंड that 54 in front of the match fixing Karapur. Match fixing Karapura फुड्यान असा 54 रनाचें आव्हान आणि आता बॉलिंग येवन दिसतलो लायक्स ऑफ रजत कुडाळकर महादेव सारकिले बॉलर इवन शुभम झा आणि स्टे ट्यून्ड वी विल बी कमिंग टू यू सून विथ द सेकंड इनिंग्स. रन बनाकर 54 रनों का टारगेट दिया गया है. 30 बॉल 54 रन.
2 सेकंड 2 सेकंड मध्ये होती डाउनलोड. पार्टी परत करून बंद. हा बघ. फिलिंग घेतली मी समज 12. फील्डिंग के कैप्टन जल्द से जल्द अपना फील्डिंग सजाएं. हा मग 7 घेते 12 होते नाही. बरोबर. विनर्स ना रे. ड्रॉ दी तुझ्याकडे आल्या. ना 4-5 जाऊन जाय नो. तिरपन रन बनाकर 54 रनों का टारगेट दिया गया है. और दोनों सलामत जोड़ी क्लीच में जाते हुए Next match will be played between Pariam Cricketers Pariam and Saniksha Cricketers. However, I am to please requesting by the captains to please come up for the tops. Pariam Cricketers and Saniksha Cricketers. However, I am. कौन है टाइप का? हर्षद और स्ट्राइक पे होंगे हर्षद और नॉन स्ट्राइकर सचित. हर्षद स्ट्राइकर में रहा है. स्ट्राइकला कोण आहे? बॉलर कौन है भाई? हर्षद मास्टर में करा. शुभम बॉलर होंगे शुभम झा. और शुभम का सामना करेंगे हर्षद. बुला टॉस को बुला. परियम और पहला ओवर शुरू और इस तरह से पहली बॉल पे उठा के खेल दिया सीमा रेखा के बाहर 6. पहली बॉल को सीमा रेखा के बाहर 6 रनों से स्वागत किए उनका. और इस छक्के से उनका खाता खुला और बॉलर का स्वागत छक्के से. एले बरोबर. परियम नो. और इस तरह से मारने का प्रयास वहां पे ते लाव ना यूज भी. डॉट. और फिर से वही शॉट मारने के प्रयास में फिर से बॉल डॉट. अच्छी बॉल शुभम द्वारा जो पहली बॉल को 6 और 2 बॉल डॉट किए हैं. और फिर से लेग दिशा में उठा के खेल दिए हैं सीमा रेखा के बाद फील्डर दौड़ता हुआ. और इस तरह से अंपायर के सारा 4 रन दंडनाता हुआ चौका. और वो भी अंपायर का इशारा 4 रन. Captain of Survivor, you are requested to report the come box as quick as possible. Captain of और फिर से रिवर्स हिट और 6
लाजवाब शॉट कहे जाएगा इनको बल्ले से, बेहतरीन सा शॉट कहे जाएगा। अच्छी बैटिंग इनके अंदर, बड़े बड़े सिक्स के नाम से जाने जाते हैं। और फिर से बैक टू बैक 2 6 सीमा रेखा के बार, लाजवाब शॉट। और एक ओवर में 3 6 और एक चौका की मदद से स्कोर 22, 22 रन, महंगा ओवर। बढ़िया बैटिंग कही जाएगी। और सचित का खाता नहीं खुला, स्ट्राइक को अपने पास रखें और स्ट्राइक को 3 6 और एक चौका के रूप में जो स्कोर को आसानी से 22 रनों का उपहार दिए हैं एक ओवर में। बेहतरीन सा शॉट कहा जाएगा। ये बॉलर कौन है भाई? रजत रजत दूसरा ओवर लेके आए रजत, और वहां पे बैटमैन को कोई चांस नहीं, भारी बॉल को पेश किए और इस तरह से डॉट बॉल। और फिर से अगली बॉल के लिए बैटमैन तैयार, और वहां पे फिर से वही बॉल और बैटमैन बड़ी अपील, और वहां पे हमारे अनुभवी अंपायर का फैसला, सर्वमान फैसला, अपने वादे पे कायम और अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी। दूसरा बॉल लेके आए हैं, उस तरह से हवा में उठ कैच को उछाला गया और नीचे फील्डर मौजूद, इस तरह से बड़ा विकेट, एक विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर अच्छा कमबैक फील्डिंग द्वारा, शुभम द्वारा। इनका इनका अभी तक खाता नहीं खुला और इनका खाता नहीं खुला, खाता खोलने के प्रयास में विकेट को आसानी से दे बैठे, नीचे फील्डर मौजूद। अगला बैटमैन सिद्धेश, देखते हैं सिद्धेश क्या करते हैं इस बॉल पे, 6 या चौका या खाता खोलते हैं या स्ट्राइक को चेंज करते हैं। और अभी तक नॉन स्ट्राइक बैट्समैन का, और वहां पे अंपायर का इशारा व्हाइट, जो दूसरे ओवर में इजाफा हुआ, एक अतिरिक्त रूप में व्हाइट के रूप में मिला, पहला व्हाइट। बढ़िया गेंदबाजी सोम द्वारा, अच्छी बॉल, बैट्समैन को कोई चांस नहीं, विकेट कीपरों के दस्तानों में बॉल, अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी। एक टप्पा सीधा विकेट कीपर को दस्तानों में बॉल चुनते हुए, और फिर से अगली बॉल के लिए बैट्समैन तैयार, और वहां पे हल्की हल्की संपर्क की वजह से कैच का चांस वहां पे थर्ड मैन की दिशा में। दूसरा ओवर का लास्ट बॉल, और वहां पे स्टेट दिशा में, और अंपायर का इशारा 6, और इस छक्के की वजह से स्कोर 29 रन। अच्छी बैटिंग कही जाएगी अभी तक। कितना 6 निकला है, कितना 6 आया 2 ओवरों में? 4। अभी तक 12 बॉल समाप्त, 12 बॉल में 4 6 देखने को मिला है, लंबे लंबे 6, और एक चौका देखने को मिला है।
बॉलर कौन? प्रजत। और अगला बॉलर होंगे प्रजत। टीम का तीसरा खाते का पहला ओवर प्रजत के रूप में। देखते हैं प्रजत क्या करते हैं। कैप्टन द्वारा बॉल उनको सौंपा गया, जिम्मेदारी दी गई तीसरा ओवर की। जिम्मेदारी में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, वो करने का मौका दिया गया है आज आपको इस टूर्नामेंट में। इस दर्शक के बीच, लाखों और सैकड़ों दर्शक के बीच आप हीरो का मौका। और अगली बॉल के लिए बैट्समैन तैयार और बॉल जड़ में और बैट्समैन उठा के खेल दिया सीमा रेखा के बाहर। 6 रन, बीएसएनएल 6, जबरदस्त 6। जितने ही तारीफ करूं कम पड़ेगा इस बैट्समैन को। अगर यह मुकाबला जीतना है तो अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, चतुर्भरी गेंदबाजी की जरूरत है यहां पे। अच्छा मुकाबला दोनों टीमें के बीच, दोनों टीमें जुझारू टीमें। कमेटी के जितने छोटे और बड़े वॉलेंटियर हैं चारों दिशा में फैल जाएं और बॉल को दूर के लाएं। और फिर से मारने का प्रयास, बल्ले पे हल्की संपर्क के और एक रन आसानी से पूरा किए। स्कोर 36। एक विकेट के नुकसान पर। और यहां पे व्हाइट, जो अभी इस मैच में 2 व्हाइट देखने को मिला है तीसरा ओवर प्रगति पर। अगर इसी तरह से अधिक रन आप देंगे तो मैच आपके हाथों से। और इस तरह से फिर से व्हाइट, बैक टू बैक 2 व्हाइट। आपको अधिक रन रोकना है और सही दिशा में बॉलिंग करना है, अच्छे लेंथ की जरूरत है आपको। और वहां पे फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, 1 रन से संतुष्ट। और फिर से उठा के खेल दिया है सीमा रेखा के बाद। 6 रन, जबरदस्त 6। आकर्षक पारी, काफी हुनर है इनके अंदर, ताकत है इनके अंदर स्ट्रेट दिशा में खेलने के लिए। बेहतरीन सा शॉट, घातक पारी अभी तक। और फिर से उठा के खेल दिया है उसी दिशा में, बैक टू बैक 2 6, लंबा 6, 150 मीटर दूरी। और यह मुकाबला जीतने के लिए 3 रनों की आवश्यकता। 13 बॉल 3 रनों का दरकरार। बढ़िया बैटिंग और यहां पे 12 बॉल 2 रनों की आवश्यकता। देखते हैं सिंगल लेते हैं, हवाओं में गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजते हैं। इस ओवर में पहली बॉल पे क्या करते हैं, 6 या चौका या सिंगल लेके मैच को टाई करते हैं। 12 बॉल 2 रन। अच्छा बैटिंग देखने को मिली इनके बल्ले से। 11 बॉल पे 42 रन बनाकर खेल रहे हैं। और यहां पे 4 रन, इस चौके से टीम विजयी करार। आकर्षक पारी, हर्षद के बल्ले से 12 बॉल 46 रन का पारी को अंजाम दिए हैं और मैच को विजयी कराएं।
हर्षद 2 बाउंड्री और 6 लंबे लंबे सिक्स लगाकर अपने हुनर को कायम रखे हैं इस कड़ी धूप में हर्षद। So the man of the match goes to that man. Brilliant innings of 46. What a innings it was. It goes to Arshad Matondkar. Hard luck Bhumika 11 Kanka. And next match will be played between the team from Savaveram taking on the Periam cricketers. Periam. Requesting the fielding side, Periam cricketers after winning the toss electing to bat first, requesting the fielding side to team from Savaveram to please set the field. Requesting the 12th man of both the teams to please come to the scoreboard. बैटमैन्स के एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेटी बॉक्स पे आके अपने खिलाड़ियों का नाम बताएं और एक अतिरिक्त खिलाड़ी 12 मैन फील्डिंग फील्डिंग या बैटिंग बैटिंग स्ट्राइक पे कौन है? साहिब नॉन स्ट्राइकर स्ट्राइक पे होंगे साहिल और नॉन स्ट्राइक तुकाराम। बॉलर नेम दिप्तेश। टीम का पहला ओवर, खाते का पहला ओवर दिप्तेश के रूप में और मुकाबला शुरू। और इस तरह से पहली बॉल पे स्वागत किए हैं चौका 4 रन अंपायर के सारा बाउंड्री बाउंड्री 4 रन स्वागत किए इनका चौका से। इनको बाहरी बॉल खिलानी पड़ेगी। अगर आप आड़कर और स्टंप रखने का प्रयास करेंगे तो बड़ी हिट लगाने में माहिर हैं और वहां पे बॉल डॉट पहला बॉल चौका और दूसरा बॉल डॉट। पहला ओवर
और साहिल के बल्ले से ऑफ दिशा में नीचे दो फील्डर मौजूद और इस तरह से 2 रन आसानी से मुकम्मल। बढ़िया फील्डिंग, गुड फील्डिंग। बोला इतना टाइम देता है ना। और फिर से मारने का प्रयास, बॉल नीचे और यहाँ पे 4 रन मिस फील्डिंग फील्डर द्वारा और सीमा रेखा को चुनती हुई बॉल 4 रन। साहिल के बल्ले से थोड़ा बैट्समैन का भी नाम लो मरे। कोई बोला ना। साहिल के बल्ले से अच्छा शॉट कहा जाएगा साहिल द्वारा। 2 बाउंड्री 2 चौके लगाकर क्रीज पे टिके हुए हैं और यहां पे फिर से मारने का प्रयास, बॉल को सही दिशा में भेजने का प्रयास और अच्छी तैनात फील्डिंग देखने को मिल रही है और यहां पे उठा के खेल दिया अच्छी शॉट और वहां पे अच्छा सा कैच फील्डर द्वारा, कैच को पकड़ा गया और बड़े बैट्समैन के रूप में साहिल का विकेट जो 2 चौके लगाकर पवेलियन पार भेजा गया। अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी बॉलर द्वारा, बैक टू बैक चौके खाने के बाद अच्छा कमबैक किए हैं कैच कौन ले? दिग्पेश। अच्छी गेंदबाजी, कैच कौन ले? बड़े बैट्समैन का विकेट। बैटर 1 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सुनील है ना अगला पता। अगला बल्लेबाज सुनील, देखते हैं सुनील साहिल का स्थान लेने आए हैं, उनको साहिल का जगह दिया गया है अंबर नाइट। और बॉलर होंगे अंबर अंबर नाइट। और देखते हैं साहिल की जगह आते हैं, क्या करते हैं साहिल। 2 चौके लगाए थे और यहां पे तीखी गेंदबाजी और गोगली का प्रयोग, बैट्समैन को कोई चांस नहीं, सीधे विकेट कीपरों के दस्तानों में बॉल। अच्छी बॉल, टप्पा का प्रयोग वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर्स ऑफ गोवा अंबर नाइट। और सबसे फास्ट बॉलर माना जाता है इनको ऑल गोवा। और यहाँ पे बड़ी अपील और यहाँ पे 1 रन और अंपायर का इशारा, आउट। कौन आउट था? दोनों अनुभवी अंपायर, बड़े बड़े मैचों का अनुभव इनके अंदर, अपने फैसले पे अपने नियम पे कायम रहने का वह हुनर है इनके अंदर। अच्छा रिजल्ट इनके सामने देखने को मिलता है। शैलेश नहीं बैटर आउट डालतो तो कराम ना। और न्यू बैट्समैन शैलेश शैलेश, देखते हैं क्या करते हैं, 6 लगाते हैं या खाता खोलते हैं 1 रन से या चौका मारते हैं। रिजल्ट आपके सामने कुछ ही मिनट में देखने को मिलेगा सभी दर्शकों को, जो स्ट्राइक पे धीमे धीमे क्लिच पे जा रहे हैं और क्लिच को संभालेंगे जिम्मेदारी अपने ऊपर लेके। और फिर से तैयार और यहां पे 1 रन से खाता खोलें। अभी तक और यहां पे उठा के खेल दिए हैं और यहां पे
पहला सिक्स देखने को मिला है और करारा सिक्स, लाजवाब सा सिक्स सुनील के बल्ले से। सुरेश ने तो दूसरा ओवर प्रगति ना, दूसरा ओवर पर गति, पहला सिक्स 17 सुनील के बल्ले से निकलता हुआ। स्कोर 17 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। और अच्छी गेंद, टप्पा का प्रयोग विकेट कीपरों के दस्तानों में। अच्छी गेंद बैट्समैन को बढ़िया गेंदबाजी। अंपायर का इशारा, व्हाइट। 1 रन अतिरिक्त के रूप में मिला है दूसरा ओवर प्रगति पर, जो व्हाइट के रूप में आया है। और फिर से उठा के खेल दिया है हवाओं में बॉल और सीमा रेखा के बाहर। 6 ताकत का प्रयोग, सीमा रेखा के बाहर 6 रन। दो ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 24, 2 विकेट के नुकसान पर। बड़े बैट्समैन का विकेट का पतंग, 2 विकेट। अगला बॉलर होंगे तनीश। टीम का तीसरा खाते का पहला ओवर तनीश के रूप में। तनिष कड़ेकर देखते हैं तनीश क्या करते हैं, कौन सा बॉल को पेश करते हैं। पहली बॉल पे क्या करते हैं, विकेट लेते हैं या सिक्स या चौवा की दिशा में जाते हैं तनीश। और यहां पे 1 रन आसानी से पूरा। अभी तक तीसरा ओवर प्रगति पर 2 चौवे और 1 छक्का देखने को मिला है, 2 सिक्स देखने को मिला। और इस तरह से कैच हवा में और नीचे फील्डर और बॉल फील्डर से काफी दूर और वहां पे 2 रन प्रयास और 2 रन आसानी से पूरा। कोण हो दोन काढलं तो लगता है इनके बल्ले से इस ओवर में 2 या 3 सिक्स देखने को मिलेगा। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 सिक्स ऑलरेडी पेश कर चुके हैं और अंपायर के सारा व्हाइट, 1 रन व्हाइट के रूप में और 2 सिक्स लगा चुके हैं। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी तक लगता है इस ओवर में और 1-2 सिक्स देखने को मिलेगा सभी दर्शकों को। और फिर से उठा के खेल दिया है, नीचे बॉलर मौजूद और इस तरह से बॉलर कैच को जकड़ते हुए काफी अच्छी बॉलिंग और उतना ही सुंदर सा कैच बॉलर द्वारा बॉल को फेंका और बैट्समैन सही संपर्क की वजह से हवा में कैच को उछाला गया और नीचे बॉलर मौजूद। इस तरह से 3 विकेट का पतंग बड़े बैट्समैन के रूप में और उनका स्थान लेने जा रहे हैं न्यू बल्लेबाज सुशांत। देखते हैं सुशांत क्या करते हैं, उनका वो जो हुनर है, जो 28 ना जज्बा है वो इनके अंदर ना स्कोरर देखने को मिलेगा। स्कोरर 28। और इस तरह से पहले बॉल पे उठा के खेल दिया नीचे दोनों फील्डर में। इस तरह से टप्पा का प्रयोग सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन और चौवा से खाता खोलें और इस चौवा की वजह से स्कोर जा पहुंचा। स्कोर बोर्ड 32, 3 विकेट के नुकसान पर।
बढ़िया गेंदबाजी। अगर यह मुकाबला जीतना है तो लंबे लंबे सिक्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी हिटर के रूप में बैटमैन जाने जाते हैं जो बड़े बड़े हिट लगाते हैं। और इस तरह से फिर से उठा के खेले और फिर से बॉल बॉलर द्वारा कैच को पकड़ा गया। अच्छा गेंदबाजी कही जाएगी। काफी उम्मीद लगाए बैठे दर्शक इनके बल्ले से सिक्स या चौका लगेगा, लेकिन आसानी से विकेट को देते हुए पवेलियन वापस जांच देते हुए। और उनका अगला बैटमैन नीलेश को छक्के और चौवे लगाना पड़ेगा अगर आपको अच्छा स्कोर, विशाल स्कोर खड़ा करना है तो आपको सिक्स और चौवों की जरूरत है। सिंगल और वाइड से काम होने वाला नहीं है। बड़े बड़े लंबे लंबे सिक्स और चौवों की जरूरत है। और फिर से बॉल तैयार और वहां पे अच्छा सा कैच। बैक टू बैक 2 विकेट, हैट्रिक का चांस और ओवर समाप्त। और इस तरह से इनको पवेलियन वापस भेजा गया। अच्छी बॉलिंग कही जाएगी। स्कोर 32, 5 विकेट के नुकसान पर 32 रन। वही तीसरा लेके आए थे ना। और सनिकेत पालकर, सनिकेत 7 नंबर सिंगल। तानिश कैप्टन द्वारा तीसरा ओवर सौंपा गया और उसमें 7 रन खर्च करके 3 विकेट का इजाफा किए तानिश। और अगला बॉलर होंगे और उठा के खेल दिया है, नीचे फील्डर मौजूद और इस तरह से आसानी सा कैच। जैसे लग रहा है पतझड़ का वो मेला है, वो मेले में वो जनता गुमराह हो रही है। और उसी तरह से यहाँ पे विकेट और इस तरह से 6 विकेट का पतंग। स्कोर 32। नया बल्लेबाज श्याम होंगे। देखते हैं श्याम क्या करते हैं। अभी तक स्कोर वहीं पे अच्छी तरह से बॉलर द्वारा, फील्डिंग द्वारा रनर को और स्कोर बोर्ड को रोका गया। 32, 6 विकेट। और श्याम उठा के खेल दिए हैं और वहां पे 2 रन। बढ़िया गेंदबाजी कही जाएगी। अभी तक और व्हाइट, अंपायर का इशारा व्हाइट, 1 रन व्हाइट के रूप में। और फिर से मारने का प्रयास और वहां पे बॉल डॉट। अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी, चतुर्भरी गेंदबाजी। बैट्समैन को कोई चांस नहीं पड़ी हिट लगाने में। अच्छी लेंथ, अच्छा रनअप और वहां पे मारने का प्रयास। बैट्समैन नाखुश होंगे अपने शॉट से। अच्छी तरह से बॉल बैट पे आ नहीं रही है
और इस तरह से 1 रन, स्कोर 36, 6 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर ना, चौथा ओवर प्रगति पर और फिर से मारने का प्रयास, बल का पूरा उपयोग कि बल्ले और बॉल से कोई संपर्क नहीं, सीधे विकेट कीपरों के दस्तानों में। अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी, बल्ले से दूर बॉल को पेश कर रहे हैं और यहाँ पे गैप को ढूंढा, बॉलर फंसा ट्रिप में, बॉल गई गैप में और यहाँ पे अंपायर के सारा 4 रन, दंदनाता हुआ चौका। इस चौका की वजह से स्कोर 40 रन 4 ओवर की समाप्ति पर, यानी 24 बॉल समाप्त और 40 रनों का। So it's the final over of the innings, and in comes Yogiraj. In comes Yogiraj to bowl the final over, and man on strike will be Sham. लास्ट ओवर। Final over of the innings. Up against Yogiraj, it would be Sham. Tried and tested formula. First ball a slow one, beating the batter, all ends up, starts off with a dot. Another slow one, this time picked up in the air. The fielder will be a mere spectator this time. It will be deposited into the stands by the batter. 46 on the scoreboard. We are away with the over. 2 ball done in the state. This time again a slow one, again beating the batter. Again a dot ball. Sham missing the ball completely. .46 on the scoreboard. Again swing in the air, this time the fielder settling underneath, takes the catch. I think Rushikesh it is taken the catch and picks up the wicket. And Sham walking back to the pavilion. Sankalpa, the new man in, will be facing final 2 deliveries of the innings. And new batter in Sankalpa, final 2 deliveries of the innings, Yogiraj. This time once again picks up a dot of the edge, fine edge to the wicket keeper, and first ball duck for Sankalp. Last ball of the innings. It will be, and invokes the new batter. Invokes Sunny. Invokes Sunny.
final delivery of the innings. It will be Sunny to face Yogi Raj, and score starting on 46. Yogi Raj will be on a trick. Swing miss and sums up with a dot ball. So the target in front of Puram Cricketers Puram when they come out to bat will be 47. 47 to win from 5 overs is the equation. नमस्कार मित्रांनो, मी भूषण गोळे. आम्ही कुनायकर चषक ही स्पर्धा 29 एप्रिल ते 3 मे या रोजी होत आहे. या स्पर्धेमध्ये सहभागी झालेल्या सर्व खेळाडूंना, आयोजकांना आणि संघ मालकांना माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा. नमस्कार मित्रांनो, मी भूषण गोळे. आम्ही कुनायकर चषक ही स्पर्धा 29 एप्रिल ते 3 मे या रोजी होत आहे. या स्पर्धेमध्ये सहभागी झालेल्या सर्व खेळाडूंना, आयोजकांना आणि संघ मालकांना माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू. नमस्कार मित्रांनो, मी भूषण गोळे. आम्ही कुनायकर चषक ही स्पर्धा 29 एप्रिल ते 3 मे या रोजी होत आहे. या स्पर्धेमध्ये सहभागी झालेल्या सर्व खेळाडूंना, आयोजकांना आणि संघ मालकांना. नमस्कार मित्रांनो, मी भूषण गोळे. आम्ही कुनायकर चषक ही स्पर्धा 29 एप्रिल ते 3 मे या रोजी होत आहे. या स्पर्धेमध्ये सहभागी झालेल्या सर्व खेळाडूंना, आयोजकांना आणि संघ मालकांना माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू. नमस्कार मित्रांनो, मी भूषण गोळे. आम्ही कुनायकर चषक ही स्पर्धा 29 एप्रिल ते 3 मे या रोजी होत आहे. या स्पर्धेमध्ये सहभागी झालेल्या सर्व खेळाडूंना, आयोजकांना आणि संघ मालकांना थँक्यू. नमस्कार मित्रांनो, मी भूषण गोळे. आम्ही कुनायकर चषक ही स्पर्धा 29 एप्रिल ते 3 मे या रोजी होत आहे. या स्पर्धेमध्ये सहभागी झालेल्या सर्व खेळाडूंना, आयोजकांना आणि संघ मालकांना माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा. नमस्कार मित्रांनो, मी भूषण गोळे. आम्ही कुनायकर चषक ही स्पर्धा 29 एप्रिल Yatina down on the very first ball. This might prove costly for the fielding side. Puram Cricketers right here from Puram. Changing side at the left-handed Saniket Palka comes on strike. Was a chance to pick up. That man Yatin Naik on the very first delivery. This time once again trying to swing in that leg side region, trying to access the leg side region over square leg, but missing the ball completely. Third ball.
One bounce straight to the man. Will be another single to bring back Yatin Naik on strike. Yatin back on strike to face the next ball from the bowler. Letting it go wide is the signal from the umpire Punya Palka. Another extra territory, trying to keep that ball away from the hitting arc of Yatin, ending up bowling a wide delivery. Next delivery from the bowler. Appeal towards the square leg, and both the umpires in discussion with each other. Third umpire being put into the action now. Requesting the third umpire to please come upstairs and check whether it is taken to age or not. Yatina this time once again Rishikesh the name and name. Starts off with the dot. Full toss on the ground. The ball carrying over the boundary. One bounce into the boundary cushions. So after the completion of the first over, it's 7 for the loss of 1.
Bowler's name, please. Sahil finishes off with 7 runs and a wicket, and in comes Balwant to bowl the second over. This time once again it is taken, and it's Aniket Palka once again getting out caught behind. Ambadaiga, the new man in. Requesting the officials to please do it quickly. Swing, missing the ball completely. Ambanaik, a dot ball coming. Dot ball to Ambanaik to start off his innings. Second over is in progress. This time full length, half a helicopter along the ground. Field fumbles, but meanwhile stops the ball. Couple of runs more to get off in running to Ambanaik, and the score moving to 9 runs on the scoreboard. Needing another. .38 and 21, and the Poles go for the toss, and it's Ambanaik. The wickets are falling in quick succession. Second wicket for Balwant is over. Second wicket for Balwant is over, and in walks Tanish Kadekar. Tanish Kadekar walking in to accompany Rishikesh. Chasing the target of 47 to win, and they are airing at 9 for the loss of 3. Next ball from Balwant would be bowling to Tanish Kadekar. This time played away in that gap, fielder patrolling the boundary, will cut it off, will be a single to get the score in double digits. It's 10 runs on the scoreboard for the loss of 3. Bowled well, Tanish in the first innings. Now has to bat to see his team through.
Balwant with the next delivery. Rishikesh on strike. This time down on one knee, sweeps the ball. Will be a single. The score moving to 11 after 2. It's 11 for the loss of 3, and 3 overs remaining. In the remaining 3 overs, 36 is the requirement. 18 balls, 36 is the requirement for the team from Savaram. And it will be a change in bowling. It will be Sankalp from the far end. Sankalpa from the far end, bowling the third over, and to face him it will be once again Rishikesh, who will be on strike. 36 from 18 is the requirement. Dot delivery coming. Dot to start off the proceedings in the third over from Sankalp. This time off the bottom of the bat, throw to the wicket keeper. Second dot consecutively. This time down the ground goes Rishikesh, fielder, yes, takes another one. The fourth wicket goes down in the form of Rishikesh. The score still remains on 11 for the loss of 4. The wickets are tumbling at regular intervals. Tanisha still batting at the non-striker side. In walks the new batter. Diptesh. First ball down the ground. Fielder fumbles, drops the catch, and will be just a single. Runs on the scoreboard. This time once again up and over the fielder's head. It goes away into the boundary cushion for another maximum. This time from the bat of tenniscricket.in. Score thick and fast, moving to 18 runs on the scoreboard. Can tenniscricket.in pick up the match from here? Is the big ask. Swing miss, another dot. Sums up the over after the completion of 3. It is 18 for the loss of 4, and the equation come down to last 12 deliveries.
29 are required from 12 is the equation in front of the team from Savevar. Saniksha cricketers Savevar need 29 from 12, and if they have to get those 29, the important wicket will be of Tanishka Dekers, and even Diptesh can bat. Diptesh can use the long handle, and in comes the bowling change to bowl the penalty mate. It will be Sunny. First ball, a slow one, played along the ground, will be a single to Diptesh. 19 on the scoreboard. Chasing 47. Now 28 from 11. Now the ball has carried away and gone for another maximum. What a batting defense! The score has certainly moved quickly to 25. Tanishka Dekar batting out on 13 with 2 Mehmet 6 is to his credit. Batting on 13 of 4 deliveries. Once again, trying to slow and once again the ball hit out of the park. The score quickly has moved to 31. We are still into the third over and already 13 have come of first 3 deliveries of Sunny, and putting him under hammer is Tanishka Dekar. At the moment this batter is keeping up the pressure on the bowler. How will the bowler come back? Once again excessive leg side region, and once again comes back strongly with the wicket of Tanishka Dekar. Eight ball 16 is the tally for Tanishka Dekar. Before getting out, he scored 16 of 8 deliveries. And a new batter joins in is Yogiraj. One for 5. Yogiraj the man on strike. Swings, misses, a dot ball. Final delivery to come up of the penalty made over Yogiraj. This time connects properly right from the middle of the bat, and it goes into the crowd. Six balls and 10 to get. 6 balls, 10 to get. And in comes the final over, and to bowl it will be Sushant. Requesting
Requesting the captain of match fixing Karapur to please be here. It's a first call to you, captain of match fixing Karapur. Quickly we will take the toss of the next match. This goes and goes big down the ground just beside the side screen, and it is a mammoth sixer. And 5 balls, 4 is the equation. This time shuffling across, missing the ball completely, another dot. 4 balls 4. 4 balls 4 is the equation. The match has come down to the wire. The match has come down to the wire. 4 balls 4. Changes in the field, runnable situation. 4 balls 4. Here is the next ball. Tries to slide and away from that field, and away it goes into the boundary cushions, and the match has gone the way of the team from Salvadoran, and the man of the match. The man of the match goes to that young talent who has made his name in the leather ball cricket as well as tennis ball cricket. It goes to tenniscricket.in. Requesting tennis to please come up and take the man of the match at the presentation arena. Requesting the captain of match fixing Karapur and captain of Saniksha cricketers Salvadoran to please come for the toss of the next match. Match fixing Karapur captain. Match begin toss घेऊचा. Match fixing Karapur. Captain match fixing Karapur match begin toss घेऊचा.
So the second last match of the day, and it will be Sunning cricketers however taking on the match fixing Karapur. So the two opponents out in the center, the two stalwart batters of Goa. One end Arshad Matondkar and another Sachit Sawant was worked out to the middle and to bowl the first over from the far end. Now they have gone to, once again it is the pitch, the start of the proceedings. पहिला बॉल शॉट मारता उभारून आणि बॉल वयता तनिष्कडेकर एका बोरा फड्डिता पूण कॅच सुट्टा आणि मजगती मेळटा 2 रनान स्कोर ऑफ इन रनिंग 2 रन विनागड्याच्या मोबदल्यान स्कोर बोर्डार लागता 2 रन स्कोर बोर्डार लागता पहिल्या बॉलाक 2 रन अर्षद मातोंडकर बॅक ऑन स्ट्राईक फुडला बॉल घेऊन बॉलर तयार दिप्तेश अप अगेन्स्ट अर्षद मातोंडकर हे असलेला बॅटर टू वॉच आउट फॉर फुडला बॉल घेऊन दिप्तेश परत एकदा अर्षद उभारून मारता फिल्डरच्या तकले वयल्यान बॉल वयता बाउंड्रीच्या दिशेन मेळटा चौक पहिल्या बॉलाक 2 रन दुसऱ्या बॉलाक चौक वॉट अ स्टार्ट ऑन द पार्ट ऑफ मॅच फिक्सिंग करापूर अर्षद मातोंडकर इन प्राईम फॉर्म आदल्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच अर्षद मातोंडकर परत एकदा थंचानूच करता कंटिन्यू 2 बॉलांक मारता 6 रन फुडला बॉल घेवन दिप्तेश फुल बॉल उभारून मारता अर्षद मातोंडकर आता मार फिल्डर अंडरनेथ आणि धरता कॅच पहिली विकेट पडटा अर्षद मातोंडकर बॅक टू द पवेलियन 6 for 1 श्रेयस धरता कॅच मगान ताका सगळं शेव म्हणटा शेव धरता कॅच आणि पहिली विकेट पडटा 6-1 अर्षद मातोंडकर बॅक टू द पवेलियन न्यू बॅटर क्रिकेट होता आणि न्यू बॅटरचा अनुसार सिद्धेश अर्षद मातोंडकराची विकेट पट्टा आणि गडेगाज बॅटर मॅच फिक्सिंग कारापुराचा होता क्रिजीर 6-1 जाता पहिली विकेट काढता दिप्तेश पहिल्या बॉलाक चौको पहिल्या बॉलाक 2 रन त्यानंतर दुसऱ्या बॉलाक चौको आणि तिसऱ्या बॉलाक अर्षद मातोंडकराची विकेट जी आसा ती हांगा पडलेली आसा आणि फुडला बॅटर क्रिजीर होता सिद्धेश नंबर 3 फुडला बॉल घेऊन आता दिप्तेश ताका फेस करतलो सिद्धेश मॅचीन पहिल्याच फावट फुल बॉल बॅटाची एज लागता खंय तरी स्टम्प्साक क्लोज असा बॉल वयता आणि यतीन नायक शॉर्ट फाईन लेग करता फिल्डिंग बरी ओव्हर आता मेरेन दिप्तेशाची परत एकदा उकलून मारता कॅच सुट्टा रन आउटाचा चान्स पण शो खंय तरी दिसता की बॉल त्याच्या हातींतल्यान फंबल जाता आणि मजगती मेळटा तो सिंगल आणि सिंगला सहित स्कोर पावता
7 रनाचेर एका गड्याच्या मोबदल्यान दिपेश फुडला बॉल घेऊन फुडला बॉल दिपेश घेऊन येता स्ट्रायकर सचिन फुडला बॉल उभारून मारपाचा परत एक प्रयत्न करता खंय तरी हांगा घेवन आपटा तो बॉल पयले ओव्हर दड बॉला सयत सोंपता आनी पयल्या ओव्हरी फाटल्यान स्कोरबोर्डा लागता फक्त 7 रन एका गड्याच्या मोबदल्यान आनी ती विकेट जावन आसा हर्षद मटणकराची. पयली ओव्हर सोंपता पयल्या ओव्हरी फाटल्यान 7-1 मॅच फिक्सिंग कारापूर. मजगती बॉलिंग जाता चेंज. वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर्स ऑफ गोवा अंबर नायक घालता बॉलिंग. फुडलो बॉल उभारून मारता बॅटर आणि बेसिक्स ऑफ द गेम स्ट्रॉंग दवरता फिल्डर पुटिंग युअर बॉडी बायंड द बॉल. तेजे एक्झाम्पल दाखयता फिल्डर कॅचीक वयता पण तशेंच कॅच सुट्टा म्हणून आपली बॉडी जी आसा ती बायंड द बॉल घालता. एकूच रनाचेर बॅट्समॅनाक बॅट्समॅनाक एकूच रनाचेर रावचे पडटा आणि सचित स्ट्रायकर फुडलो बॉल स्विंग करपाचो यत्न करता खंय तरी किपर फंबल जाता. यतीन नायकूय बॉला मेरेन पावना आनी बॉल वयता बाउंड्रीच्या भायर आनी इनसायड एज लागून बॉल वयता चौके खातीर टोर्नामेंट बाउंड्रीच्या भायर आनी स्कोर जाता डझन ऑफ रन्स ऑन द स्कोर बोर्ड. 12 रनाचेर स्कोर पावता एका गड्याच्या मोबदल्यान मॅच फिक्सिंग कारापूर. सेकंड लास्ट गेम ऑफ द डे. फुडला बॉल घेवन बॉलर खंय तरी उखलून मारपाचो यत्न करता बॉलर आनी फिल्डरा मदीं बॉल पडटा पूण मेळटा तो मजगती सिंगल. अंबर नायक बऱ्यातला बरो एक गडेगाचो ऑलराउंडर गोंय राज्याचो when it comes to tennis ball and ball cricket. Full ball straight on the ground ubaरून मारता Shreyas. what a take Shreyas down on the boundary जज करपाक जाय आशिल्ली ती जज करता आनी एक ब्रिलियंट कॅच धरता तो Shreyas आनी आउट जाता बॅटर. सिद्धेश आउट जाता एक बऱ्यातली बरी सध्याच्या मॅचीतली वन ऑफ द बेस्ट कॅच आणि मायट बी इन कंटेन्शन फॉर द कॅच ऑफ द टुर्नामेंट अशी कॅच धरता तो शेअर्स डाऊन ऑन द बाउंड्री बिकॉज ताका बाउंड्री फाटल्यान आशिल्ली ती जज करूंक जाय आशिल्ली आणि ती बाउंड्री जज करतना ती कॅच धरूंक जाय आशिल्ली. दोनूय कामां तो बऱ्या रितीन करता आणि दुसरी विकेट मॅच फिक्सिंग कारापुराची बॅक टू द पवेलियन वयता आणि न्यू बॅटर जॉइन जाता लतीफ आणि स्कोर थंयच उरता. 13 रनाचेर 2 गडे जे आसा ते बॅक टू द पवेलियन वयता आणि फुडलो बॅटर लतीफ येता क्रिजीर. फुडलो बॉल फेस करतलो अंबर नायकाचो. फुडलो बॉल डावन वन स्विच आणि गॅपान वयता बॉल मेळटा चौको. ह्या चौक्या फाटल्यान स्कोर जाता 17 रन स्कोर बोर्डा लागता. दुसरी ओव्हर जी आसा ती अजुनूय चालू आसा. 2 ओव्हरीचो खेळ अंबर
अंबर नायक फुल बॉल घेऊन तयार. फुल बॉल डाऊन द ग्राउंड गॅपान खेळटा मेळटा सिंगल उच आणि या सिंगलला फाटल्यान स्कोर जाता 18 रन. मजगती दुसरी ओव्हर आसा जी सोंपता 2 ओव्हरी फाटल्यान स्कोर जाता 18 रन. 2 ओव्हरी फाटल्यान स्कोर जाता 18 रन. 2 विकेटी पडटा. आणि मजगती जाता बॉलिंग चेंज. तनिष कडेकर आता बॉलिंग एक. तिसरी ओव्हर तनिष कडेकर. फुल बॉल तनिष कडेकर. बरा बॉल स्विंग मिस डॉट बॉल. बऱ्यातली बॉडी स्टार्ट करता तनिष कडेकर. लेदर बॉल ऑफ स्पिनर टेनिस बॉलांनी स्पिन घालता पण बऱ्या तरेन बॉलिंग हाताळटा. प्रिवियस मॅचीचा मॅन ऑफ द मॅच तनिष कडेकर. परत एकदा स्विंग डाऊन ऑन वन लेग साइडीन खेळटा बॅटर मेळटलो सिंगल. फिल्डर आसा फिल्डर जो मेरेन पिकअप करता थ्रो करता तो मेरेन मेळटा सिंगल. या सिंगला फाटल्यान स्कोर जाता 19 रन स्कोरबोर्डार लागता. तिसरी ओव्हर जी आसा ती चालू आसा आणि फुल बॉल घेवन परत एकदा तनिष कडेकर फेस करतलो. सचित सावंत फुल बॉल फुल टॉस गॅपान मारता फिल्डर आसा. परत एकदा सिंगल्स. या ओव्हरीन अजून मेरेन बाउंड्री जी आसा ती आमकां पळोवंक मेळना. फक्त पळोवंक मेळटा ते सिंगल्स अजून मेरेन स्कोर पावता. 20 रनाचेर 20 रन स्कोरबोर्डार लागता अजून मेरेन. तिसरी ओव्हर फुल टॉस. आता मादिया फुल टॉसाक बॅट्समॅन घुटना देख तमाशा देख आणि मेळटा तो सोको. या सगळ्या फाटल्यान स्कोर जाता 26. बरी ओव्हर घालताला अजून मेरेन तनिष पूण या सगळ्यान थोडोसो तेजो स्टेट्स आसा तो हालता पूण फुल टॉस बॉल पडटा आनी ताका डेपॉझिट करता शेणसन. फुल बॉल अलॉंग द कॅप खेळटा मेळटा सिंगल. या सिंगला फाटल्यान स्कोर जाता 27 रन. तिसरी ओव्हरीचो खेळ चालू आसा. हेच्या फाटल्यान 2 ओव्हर येवपाच्यो आसा. पळोवया खंय मेरेन हो स्कोर पावता. फुडलो बॉल घेवन येता तनिष कडेकर फेस करतलो सचित सावंत. तनिष कडेकर एका गडेगाज असो नामनेचा ऑलराऊंडरचा वगैरेचो लेदर बॉल क्रिकेट टेनिस बॉल क्रिकेट नामे ताका पळयता. फुडलो बॉल घेवन येता तनिष. फुडलो बॉल बरोबर एकदा उकलून मारता सचिन आणि लास्ट बॉल वेंट फॉर मॅक्सिमम. सोक्यान बाय बाय म्हणटा तनिषाक आणि 3 ओव्हरीचो खेळ सोंपता. 3 ओव्हरीच्या खेळा फाटल्यान स्कोर जाता डबल 3 2 विकेटीच्या मोबदल्यान. सनिकेत पालकर येता बॉलिंग एक. पहिला बॉल
एक बऱ्यातला बरा शॉट आणि पहिल्या बॉलाक पहिला चौका. सनिकेत पालकर हॅज बीन वेलकम टू द क्रेज विथ अ मॅक्सिमम. चौको लागता सनिकेताच्या पहिल्या बॉला. एक लास्ट शॉट मारता बॅटर लतीफ. फुल बॉल घेऊन सनिकेत हा विल कम बॅक. परत एकदा स्लो वन बेटिंग द बॅटर ऑल एंड्स अप कम्स बॅक विथ अ डॉट बॉल. बऱ्यातला बरा बॉल बऱ्यातला बरा कम बॅक विथ अ डॉट बॉल दाखवता लतीफ. बोर इज स्टार्ट केली. पहिल्या बॉलाक एक चौका मारलेला. दुसऱ्या बॉलाक डॉट बॉला सहित कम बॅक. फुल बॉल परत एकदा अपटून काढता. परत एकदा अंपायर म्हणता वाईड आणि केक एक्स्ट्राच्या फॉर्मान रन एड जाता. या एक्स्ट्राच्या फॉर्मान रन एड जाऊन स्कोर टेली पावता 40 रन. 2 गड्याच्या मोबदल्यान मॅच फिक्सिंग कारापूर अगेन्स्ट द टीम फ्रॉम सावयवेरें. परत एकदा डाऊन अँड वन नी घुटना ते एकदम असं एक बॉल गॅपान वयता. एक बाउन्स 2 बाउन्स बाउंड्रीच्या भायर मेळटा चौक. स्कोर जाता चौक्याची डबल गेम. 44 रन स्कोर बोर्डार लागता आणि चौथी ओव्हर जी आसा ती अजूनही चालू आसा. लतीफ 23 बॅटिंग करता आणि त्याच्या संगाताक सचित जो आसा तो 12 बॅटिंग करता. फुल बॉल घेऊन बॉलर सनिकेत पालकर. परत एकदा बरो कमबॅक. परत एकदा बरो कमबॅक करून दाखयता सनिकेत पालकर. डॉट बॉल चौक्या मागीर डॉट बॉल आशिल्लो. चौक्या मागीर डॉट बॉल जाता सनिकेत पालकर. परत एकदा स्लोवर वन. परत एकदा बीट जाता बॅटर. परत एकदा बीट जाता कीपर. परत एकदा दोन्ही फिल्डर यतीन नायक आणि त्याच्या संघात म्हाका दिसता डिप्पेस जाता बीट आणि बॉल वयता बाउंड्रीच्या भायर मेळटा चौको. इनसाइड एज पण खंय तरी कीपर आणि फिल्डर जे आसा ते बीट जाता आणि मेळटा चौको. या चौक्या फाटल्यान स्कोर जाता 48. 2 गड्यांच्या मोबदल्यान 48 रन्स करवडा लागता आणि मजगती 3.5 ओव्हरीचा जो खेळ असा तो संपलेला असा. 4थ्या ओव्हरीचा निमणा बॉल घेऊन येता बॉलर परत एकदा सनिकेत पालकार. परत एकदा सफल जाता बॅटर म्हणून वाईड घालपाचो यत्न करता पण आउटसाइड द गाईडलाईन्स ऑफ वाईड म्हणटा अंपायर पुण्य पालकर. आणि वाईड या वायडाच्या फॉर्मान आनीक एक एक्स्ट्रा रन एड जाता. टॅली पावता 49. परत एकदा उभारून मारता बॅटर डाऊन दी ग्राउंड आणि बॉल वयता बाउंड्रीच्या भायर. सोक्यान फेअरवेल टू दी बॉलर. टाटा बाय बाय म्हणटा बॅट्समॅन आणि या सोक्या सहित 50 रन जे आसा ते स्कोर बोर्डार लागता. स्कोर बोर्डार जाता 55 रन. 2 गड्याच्या मोबदल्यान मॅच फिक्सिंग कारापूर. या ओव्हरी घेता 22. 55 2 मॅच फिक्सिंग कारापूर आणि आनीक एक ओव्हर या इनिंगेन उरल्या. 4 ओव्हरी फाटल्यान 4 ओव्हरीचो खेळ जो आसा तो सोंपता आणि 4 ओव्हरी फाटल्यान स्कोर जाता 55 2. पहिलं बॉल आणि वरून वाढता मेळटा सिक्सर. स्कोअर पावटा या सोक्या सहित 61 रनाचेर. 61 रन स्कोअर बोर्डार लागता. फुडलो बॉल
परत एकदा लेग साईड इन खेळपाचा प्रयत्न करता बॅटर काहीतरी बॅटर प्रॉपरली येईना दुसऱ्या रनाक धावता दुसरा रन जाता कंप्लीट 2 रनात फाटल्यान स्कोर पावता 63 रनाचेर आणि या दोघांच्या मजगती 50 रनाची पार्टनरशिप 50 रनाची भागीदारी जी आसा ती कंप्लीट जाता फक्त 6 बॉलांक 50 रनाची भागीदारी ह्या दोघी करता स्कोर जाता 63 रन 2 गड्याच्या मोबदल्यान निमणी ओव्हर जी आसा ती चालू आसा आणि निमणी ओव्हर घेवन बॉलर जो आसा तो योगीराज फुडलो बॉल घेवन तयार फुडलो बॉल योगीराजाचो उकलून मारता डाऊन द ग्राउंड बॅटर आणि क्लोज होल्ड करता कॅमेरामॅनाक सोको मारता आणि या सोक्या फाटल्यान स्कोर जाता 69 सो आणि नो स्कोर बोर्डार लागता 69 फॉर द लॉस ऑफ 2 निमणी ओव्हर जी आसा ती चालू आसा फुडलो बॉल घेवन योगीराज बॅटराक परत एकदा बॉल घालपाक रेडी परत एकदा खंय तरी प्रॉपर बॅटर टायमिंग जायना मेळटा सिंगल स्कोर पावता 70 रनाचेर 70 रनाचेर स्कोर पावता 89 इज द हायेस्ट स्कोर ऑन द स्कोर बोर्ड अप टिल नाव इन दिस आमी कुंडयकर चषक फुडलो बॉल घेवन येता बॉलर योगीराज फेस करतलो लतेश जो बॅटिंग करता 33 रनाचेर 12 बॉल फक्त फेस करता 33 रन काडटा 3 बाउंड्रीज अजून मेरेन मारता फुडलो बॉल फुलटॉस अनेक एकदा घुटनात एक तमाशाक देख बॉल डायरेक्ट चंद्रा डायरेक्ट बाउंड्रीच्या बाहेर मारता आपल्या इनिंगचा चौथा सोका आणि स्कोर स्ट्रेट अवे पावता 76 आणि लतीफ बॅटिंग करता 39 13 बॉलांचा सामना करता 39 रन्स अजून म्हणून मारता आणि उरला तो इनिंगेचा निमणा बॉल अजून उरला फुल्ल बॉल घेऊन बॉलर तयार परत एकदा उकळून मारण्याचा प्रयत्न करता खंयतरी बॅटर प्रॉपर टायमिंग जायना मेळटा आता सिंगल टर्न बॅक जाता दुसऱ्या रनाक धावतना पळया 2 रन मेळटा आणि मजगती 2 रना फाटल्यान स्कोर जाता 78 रन स्कोर बोर्डार लागता 2 गड्याच्या मोबदल्यान आणि 65 रनाची पार्टनरशिप जी आसा ती दोगांमदी जाता 78 लागता स्कोर बोर्डार आणि 79 रनाची गरज आसतली जेन्ना द टीम फ्रॉम सावेर येतले बॅटिंग करपाक सेकंड इनिंगेन
मागच्या दोन्ही टीमी लागी की मॅच बिगिन करचे. The openers has made their way out in the center. Suniket Palkar alongside Yatin Naik असलेली ओपनिंग जोडी. बॉलर कोण रे? फुलटॉस रुद्रेश घालता फुलटॉस आणि यतीन नाईक मारता भिरकोटन बाउंड्रीच्या बाहेर. मेळटा सोक आणि रेफरी देता नो बॉलाक. रेफरी देता ऑन फील्ड. आता वयता आमी थर्ड अंपायराकडे. पळया थर्ड अंपायराचें डिसिजन कितें आसता. No ball is the signal from the umpire. Third umpire convinced no ball आणि पहिल्या बॉलाक विदाउट लिगल डिलिव्हरी येता 7 रन. फुल बॉल फ्री डिलिव्हरी आणि अंडरग्राउंड खेळटा यतीन नाईक. बॉल फिल्डरा मेरेन पावता. मेळटा मजगती सिंगल. दुसऱ्या रनाचा यत्न आशिल्लो सनिकेताचो पण डिनाय करता दुसरा रन आणि सनिकेत म्हणटा 2 रन जाताले तो धांवन येवपाचो पूण खंय तरी एकाच रनान हांगा फ्री डिलिव्हरी संतोष शिमांची पडटा आणि स्कोर पावता 8 रन. पहिली लिगल डिलिव्हरी जाल्या आणि पहिल्या लिगल डिलिव्हरी फाटल्यान 8 रन स्कोर बोर्डा लागता. फुडला बॉल घेवन येता बॉलर. परत एकदा घातला रिलोड. रुद्रेश. सनिकेत पालकर ऑन स्ट्राईक. फुल बॉल उकलून मारता सनिकेत आणि आता मात येता ओव्हरीचा दुसरा सोक आणि स्कोर पावता डबल डिजिट्स आणि स्कोर पावता 14 रन. पहिल्या ओव्हरीच्या 2 बॉल अजून मेरेन झाला. लिगल 2 बॉल झाले. आता दिवन वयता 14 रन आणि चेस करता 79. अजून मेरेन झाला 14 म्हणजे अजूनही 28 बॉल 28 बॉलांक 65 रन. हांगासरल्यान मॅजिक पार्क आणि फुडल्या राउंडाक प्रवेश करपाक सनिकेत पालकर आणि यातून नायक ही जोडी बॅटिंग करता. फुडला बॉल घेवन येता बॉलर रुद्रेश. फुडला बॉल. फुडला बॉल शफल जावन अलॉंग दी ग्राउंड खेळटा. लेग सायडीन मेळटलो सिंगल. यतीन नाईक परत येतलो स्ट्रायकार. स्कोर पावता 15 रनाचेर. पळया यतीन उरले ते फुडले 3 बॉलाक खंय मेरेन स्कोराक पावयता. अजून लिगल 3 बॉल जाल्यार 3 बॉलाक येता 15. फुडला बॉल फुडला लाईन बॉल घालता आणि गाईड करून सिंगल काढता यतीन आणि मेळटा सिंगल. या सिंगला फाटल्यान स्कोर पावता पण 6 रनाचेर विदाउट अ लॉस. पहिली ओव्हर थोडीशी मारक अशी वयता अजून मेरेन रुद्रेशा खातीर.
started off with a no ball. त्या बॉल वयता सौक्याक आनी थंयच्यान जी स्टार्ट जाता तो अजून मेरेन एक्सपेन्सिव ओवर. फुडलो बॉल फुडलो लायन परत एकदा गाईड करता अनिकेत पालकर मेळटा सिंगल. स्कोर जाता 17 रन. अजूनही पहिली ओव्हर जी चालू आसा बरीच अशी लांबलेली ओव्हर आमकां पहिली ओव्हर पळोवंक मेळटा. अजून मेरेन येता 17. रुद्रेशाची एक मारक अशी ओव्हर 18 रन दिता रुद्रेश. आणि फुडली ओव्हर दुसरी ओव्हर फार एंडासान जाता बॉलिंग चेंज. येता गोंयचो एक फामाद आसा ऑलराउंडर हर्षद मातोंडकर आणि ताका फेस करतलो यतीन. द बॅटल टू वॉच आउट फॉर यतीन नायक अगेन्स्ट हर्षद मातोंडकर. आता पळोवया कितें जातालो. दुसऱ्या ओव्हरीचो पयलो बॉल घेवन रायट आर्म ओवर द स्टंप्स. हर्षद मातोंडकर टू यतीन नायक. Slower one picked up, deposited into stands. Yatin Naik for you. Welcome to the crease. म्हणटा हर्षद मातोंडकराक सोक्या ना यतीन नायक आणि जी एक्सपेन्सिव्ह रेट पहिल्या ओव्हरीन दवरलेली तीच कंटिन्यू जाता. फुडलो बॉल परत एकदा उभारून दुसरो सोको या ओव्हरीचो अजून मेरेन मारता हर्षद मातोंडकर. येता 2 बॉल घालता 2 बॉलांक 2 सोके वयतना पळयता. बऱ्यांतली बरी बॅटिंग अशी दाखयता यतीन नायक. 30 रनाचेर स्कोर पावता. यतीन खेळटा 21चेर. फुडलो बॉल फुडलो लायन बॉल बरो कमबॅक दाखयता यतीन. डाऊन दी ग्राउंड खेळटा मेळटा सिंगल. दुसऱ्या रनाक धांवता 2ऱ्या रनाक धांवता आणि 2 रन कंप्लीट जाता. बरी क्विक रनिंग बिटवीन द विकेट्स दाखयता. 2 सोके मारता तेच्या फाटल्यान 2 रन धांवन काडटा. अजून मेरेन ह्या ओव्हरीन येता 14 आणि ह्या ओव्हरीन 14 आणि गेल्ल्या ओव्हरीन 18 धरून स्कोर पावता 32चेर. 79 रनाचो चेस जो आसा तो ऑन आसा. 47 अजूनही जाय हांगासरल्यानी मॅच जिखपाक. फुडलो बॉल स्लोवर वन डाऊन दी ग्राउंड खेळटा गॅपान खेळटा साइड स्क्रीनीर बॉल पडटा. 1 बाउन्स 2 बाउन्स चौको. बऱ्यांतली बरी बॅटिंग दाखयता यतीन नायक. बरी क्विक बॅटिंग दाखयता यतीन नायक. हर्षद मातोंडकर अजून मेरेन दिता 4 बॉलान 18. 4 बॉलान अजून मेरेन हर्षद मातोंडकराच्या येयल्या 18 रन आणि 27चेर खेळटा तो यतीन नायक. फुडलो बॉल फेस करतलो. फुडलो बॉल घेवन येता हर्षद मातोंडकर. स्लोवर वन once again picked up into the field sense आणि पहिली विकेट काढता हर्षद मातोंडकर. एक्सपेन्सिव्ह जाता पण पहिली विकेट काढता आणि ती विकेट प्राइस विकेट यतीन नायकाची. 36 for the loss of 1 in the chase of 79. न्यू बॅटर क्रिजर होता. पहिली विकेट पडटा यतीन नायकाची. बरी इनिंग खेळटा यतीन नायक. स्कोर करता 9 बॉलांक 27 रन काडटा. 9 बॉलांक 27 रन काडटा. 3 सोके आणि 1 चौका मारता यतीन नायक आणि यतीन नायक आउट जातकीर बॅटिंगेक येता तो बॅटर ऋषिकेश नंबर 3 आणि कंपनी करतलो अनिकेत पालकर. फुडलो बॉल घेवन येता एक्सपिरियन्स वन ऑफ द फायनेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ गोवा हर्षद मातोंडकर. जो प्रिवियस बॉलाक विकेट काडटा. थोडीशी एक्सपेन्सिव्ह अशी बॉलिंग घालता. 5 बॉलांक दिता 18 पूण एक प्राइस विकेट काडटा यतीन नायकाची. कितें जातलें ह्या मॅचीन तें पळोवचें पडटलें. स्ट्रायकर आसा ऋषिकेश फेस करतलो हर्षदाक.
परत एकदा स्लोवर वन गॅपान मारता ऋषिकेश बॉल वयता बाउंड्रीच्या दिशेन फिल्डर असा पिकअप करता मारता थ्रो मजगती मेळटात 2 रन 2 रना सहित ओव्हर जी आसा ती सप्ता 2 ओव्हरीचा खेळ सप्ता 2 ओव्हरी फाटल्यान स्कोर जाता 38 रन स्कोर करता लागता आणि उरल्या तो 3 ओव्हरी म्हणजे 18 बॉलांक जाय 41. मजगती जाता बॉलिंग चेंज आणि बॉलिंग घालपाक येता बॉलर लतीफ जो बॅटिंग एक बरो परफॉर्मन्स घेता तोच लतीफ येता बॉलिंग एक पळया लतीफ तिसऱ्या ओव्हरीन कितें करता स्ट्रायकर आसतलो तो बॅटर सनिकेत पालकार पळया सनिकेत परँड दाखयता काय लतीफ तो तिसऱ्या ओव्हरीचो खेळ आणि तिसऱ्या ओव्हरीन रायट आर्म राउंड स्टम्प्स येता तो लतीफ बॉलिंग घालतलो लेफ्ट हँडेड सनिकेत पालकराक. पहिला बॉल उभारून मारता फिल्डर ऑन द फुल आणि फ्लॅट बॅटेड सिक्सर पहिल्याच बॉलाक मारता सनिकेत पालकर स्कोर पावता डबल 4 44 रन स्कोर बोर्डा लागता. इक्वेशन कम्स डाउन टू 17 बॉलांक जाय 35 17 बॉलांक जाय 35 फुडलो बॉल फेस करतलो सनिकेत पालकर. फुडलो बॉल परत एकदा उभारून मारपाचो यत्न करता उभारून मारीन आपूण गॅपान मारता मेळटा सिंगल दुसऱ्या रनाक धांवता अपील जाता आणि अंपायर म्हणटा यस इट इज आउट. ऋषिकेश जाता आउट बॅक टू द पवेलियन वयता दुसरी विकेट पडटा आणि स्कोर उरता तो स्कोर उरता 45 रनाचेर 45चेर 2 आणि अजूनही जाय 34 रन हांगासरल्यान 16 बॉलांक आणि मेळटा येता तो न्यू बॅटर अंबर नायक एक आनीक एक गोंयचे गाजलेले नांव असलेले नांव म्हणजे अंबर नायक येता क्रिजीर. दोनूय बॅटर एक गोंयची नामनेची नांवां एका सायडीन आसा सनिकेत पालकर दुसऱ्या सायडीन आसा अंबर नायक आणि तशीच एक गडेगास टीम मॅच फिक्सिंग कारापूर तेंच्या मुखार. फुडलो बॉल फेस करतलो सनिकेत पालकर उभारून मारता सनिकेत पालकर फिल्डर असा आणि धरता कॅच आणि सनिकेत पालकर वयता बॅक टू द पवेलियन 2 बॉलांक 2 विकेटी पडटा पहिला जाता रन आउट दुसरो जाता कॅच आउट सनिकेत पालकर बॅक टू द पवेलियन 45चेर 3 आणि अजून जाय 34 15 बॉलांक उरल्यात 15 बॉलांक जाय 34. नव बॅटर क्रिजीर येता तो जावन आसा दिप्तेश. आता दिप्तेश आणि अंबर हे 2 बॅटर्स क्रिजीर पळोवया कितें करता. एक बरे अशे ऑलराउंडर गडेगाचो अशे ऑलराउंडर सावळवेरेचे दोन्ही नॉन बॅटर्स क्रिजीर आसा 45चेर 3 चेस करता 79.
फुडला बॉल घेऊन येता फेस करतलो दिप्तेश. उकलून मारपाचा यत्न करता खंय तरी आंगार आपटा तो बॉल अशें दिसता. अंपायराकडे नजर दवरचे पडटले. लेग बायजचो इशारो येता अंपायरा कडल्यान. मेळटा सिंगल ऑफ दी एक्स्ट्रास आणि ह्या एक्स्ट्राचा सिंगला सयत स्कोर पावता 46 रन स्कोर बोर्डा लागता. अजून मेरेन 33 रनाची गरज हांगासरल्यानी मॅच जिखपाक. फुडलो बॉल उकलून मारता अंबर. फिल्डर असा धांवन येता आणि धरता कॅच आणि अंबर नायक चवथी विकेट जी आसा ती पडटा आणि चवथ्या सिद्धेश धरता कॅच. 46 4 बॅटिंग साइड. नो बेटर जावन आसा एक यंग टॅलंट फ्रॉम सावयवेरेम. आमी लेदर बॉल क्रिकेटीन ताका पळयता. एक बरें नॉक्स खेळटाना टेनीस बॉलांनी तितकोच बरो टॅलंट दाखयता. टेनीस कडेकर येता बॅटिंगेक. तेजे सांगता आसतलो तो बॅटर दिप्तेश टेनीस आनी दिप्तेशाक हांगासरल्यानी मॅच काडून व्हरची पडटली आपल्या टिमी खातीर. 46 4 आणि 13 बॉलांक जाय 33. निमणो बॉल तिसऱ्या ओव्हरीचो घेवन येता बॉलर फुडलो बॉल खंय तरी काय करता. फिल्डर आसा फिल्डर पिक करता तो मारता मजगती मेळटा सिंगल. हे सिंगल आसत तिसरी ओव्हर जी आसा ती सोंपता. 3 ओव्हरी फाटल्यान स्कोर जाता 47 4 आणि उरल्यात ते निमणे 12 बॉलांक जाय 32. 12 बॉलांक जाय 32 आणि निमणे 2 ओव्हरी ह्या मॅचीच्यो. बारा बॉलांक जाय 32. फुडली ओव्हर घेवन येता बॉलर सिद्धेश. बॅटिंगेन एक बरो परफॉर्मन्स आता घेवन येता. बॉलिंग पळोवया कितें करता तो. तनिष कडेकर आता येता स्ट्रायकर. गेल्ल्या मॅचीचा मॅन ऑफ द मॅच एक बरो ऑलराऊंड परफॉर्मन्स दाखोवन मॅन ऑफ द मॅच जावन गेलो आणि आता परत येता तो स्ट्रायकिंग एंडार फेस करतलो सिद्धेशाक. पहिला बॉल उभारून मारता आणि मारता डायरेक्ट बाउंड्रीच्या बाहेर मेळटा. एक मॅक्सी मामा पहिला बॉल वेलकम टू द क्रेज म्हणटा विथ अ सिक्सर आणि या सगळ्यासहित 50 कंप्लीट जाता. 53 रन स्कोर बोर्डार लागता आणि अजून जाय 11 बॉलांक 26. तनिष कडेकर एक बऱ्यातली बरी इनिंग हांगासर दाखोवची पडटली. 11 बॉलांक जाय 26 आणि फुडलो बॉल घेवन येता बॉलर. परत एकदा पहिल्या बॉलाक सोको कसो कमबॅक करतलो बॉलर ते पळोवचें पडटलें. फुडलो बॉल उकळून मारपाचो यत्न करता पण खंय तरी टेनीस आसा तो आउट जाता. कॅच धरता कवर्सान आणि टेनीस जो आसा बॅक टू द पॅव्हिलियन वयता. 5वी विकेट हाफ द टीम बॅक इन शेड आणि स्कोर थंय उरता 53 5. अजुनूय जाय 10 बॉलांक 26 आणि न्यू बॉलर बॅटर जावन आसा योगी राज जो क्रिजीर येता. अजुनूय क्रिजीर एक होप आसा तो म्हणजे दिप्तेश. 10 बॉलांक 26 रनाची गरज आणि फुडला बॉल घेवन येतलो बॉलर सिद्धेश फेस करतलो. फेस करतलो योगी राज
सिंगल मेळटा. फुल बॉल. एक रन मेळटा. एक रना फाटल्यान स्कोर जाता 54. 54 रन स्कोर करता राजन मेरेन. Swing miss, dot ball. अजूनही 8 बॉलांक जाय 25. 8 बॉलांक जाय 25. स्ट्रायकर आसा दिप्तेश. फुल बॉल चेस करता. भाईला बॉल चेस करता आणि बेटाची एज घेऊन विकेट किपर धरता. आनीक एक विकेट पडटा. 6 विकेट पडटा आणि स्कोर थंयच उरता 54 रनचेर. सो आणि 25 अजून मेरेन जाय 7 बॉलांक. ह्या ओव्हरीच्या निमणाक बॉल घेवन येतलो कांयच किना भितर बॉलर आणि मजगती नवो बॅटर क्रिजीर येता. त्या बॅटर जावन आसा अनिकेत. अजूनही दिप्तेश आसा तो क्रिजीर आसा. योगीराज आसा तो क्रिजीर आसा. दिप्तेश आत्ता आउट जावन बॅक टू द पॅविलियन वयता. तेजो प्लेस घेवपाक येता तो बॅटर अनिकेत. योगीराज आणि अनिकेताक कितें तरी करचें पडटलें हांगासर. फुल बॉल. स्विच करता प्रयत्न करता आणि खंय तरी आसा आपण ओवर इनफिल्ड खेळटा आणि मेळटा एक बाउन चौको आणि ह्या चौक्या फाटल्यान स्कोर जाता 58 रन. 6 विकेटीच्या मोबदल्यान 21 रन जाय निमणे ओव्हर आणि निमणे ओव्हरीक जाय 21 रन. 4 ओव्हरीचो खेळ सोंपता. 4 ओव्हरीच्या खेळा फाटल्यान स्कोर जाता 58 रन 6 विकेटीच्या मोबदल्यान आणि निमणी ओव्हर आणि निमण्या 6 बॉलांक जाय 21 रन. आणि निमणी ओव्हर घेऊन येता बॉलर सचित. निमणे 6 बॉल 21 रनाची गरज आणि मॅच फिक्सिंग करापूर 6 बॉलांक 21 रन डिफेंड करपाची गरज आणि as far as the team from Savevaram is concerned 6 बॉलांक 21 रनाची गरज आणि स्ट्रायकर आसतलो तो बॅटर योगीराज आणि बॉलिंग घेऊन येता सचित. निमणी ओव्हर 21 रन. निमणी ओव्हर 21 रन. फुल बॉल. उकलून मारता पहिला बॉल स्ट्रेट इन टू द एंड ऑफ द फील्ड. 7वी विकेट पडटा आणि आउट जाता तो बॅटर योगीराज आणि 5 बॉल उरल्यात. 5 बॉलांक जाय 21.
न्यू बॅटर क्रेझी येतात श्रेयश. श्रेय क्रेझी येतात पोळ्या किती करतात फुडला बॉल घेऊन बोला तयार. सोडटा आणि अंपायर म्हणटा वाईड. Stays with the umpire's call. And wide meant umpire. So umpire's decision will be final. Full ball. उकलून मारता सो साडे आता मारता बाउंड्रीच्या बाहेर मेट असो आणि 4 बॉलांवर जाय 14. 4 बॉलांक 14 रनाची गरज. फुडले बॉल घेऊन येता बॉलर. 4 बॉलांक जाय 14. फुल बॉल. आणि परत एकदा अंपायर म्हणता वाईड. परत एकदा अंपायर म्हणता वाईड आणि स्कोर जाता 66 आणि 7 गड्याच्या मोबदल्यान आणि उरले 4 बॉलांक 13. 4 बॉलांक 13. श्रेयस द मॅन ऑन स्ट्राईक. बॉलर थोडंसं फंबल जाता. प्रेशर फील जाता बॉलराक. 4 बॉलांक 13. फुडला बॉल घेऊन येता बॉलर. फिल्डिंग घेऊन थोडासा चेंज जाता. थोडा फुडला बॉल श्रेयस किती करता. फुडला बॉल उकलून मारपाचा प्रयत्न करता. बाउंड्री रायडर असा पिकअप करता बॉल मारता. थ्रो मजगती मेळटा. दुसऱ्या रनाक धांवता. 2 रन मेळटा. 2 रना फाटल्यान स्कोर जाता 68. 3 बॉलांक जाय 11. 3 बॉलांक जाय 11. फुडला बॉल तीन बॉलांक जाय 11. फुल बॉल उकलून मारता. आणि मारता तकलो इलन फिल्डराच्या बाउंड्रीच्या बाहेर. मेळटा आणखी एक चौका. आणि match is turning interesting. The man on strike has hit 2 sixes in his innings. आणि आता मॅच इक्वेशन जाता 2 बॉलांक 5. फुल्ल बॉल क्रुशियल बॉल. 2 बॉलांक 5 आणि श्रेयस ऑन स्ट्राईक. full ball, important ball, Shreyas on strike. full ball bottom edge लगता है.
एकाक धावता दुसऱ्या घेवपाचा यत्न करता आणि रनआउट जाता. नॉन स्ट्रायकिंग एंडर रनआउट जाता. पूण गुड न्यूज फॉर द टीम फ्रॉम चावेर. शो असा स्ट्रायकर आणि बॅटर आउट जाता. मजगती 8 विकेट पडटा. अनिकेत आउट होता आणि एक बॉलाक जाय 4. एक बॉलाक जाय 4 आणि नवा बॅटर कुजूर येता लक्ष्मीकांत. एका बॉलाक जाय 4. ऑल आयज विल बी ऑन श्रेयस. कितें करतला निमण्या बॉलाक जाय 4. निमण्या बॉलाक जाय 4 आणि हांगासरल्यान एक बरो बॉल आणि बॉलिंग साइड ऑन द विक्टोरियस आणि एक शॉट. श्रेयसाची लाईफ टाइम टू रिमेंबर. श्रेयस ऑन स्ट्राइक. हियर इज द लास्ट बॉल. डाउन द ग्राउंड खेळटा फिल्डर असा फिल्डर करता फील्ड. पहिल्या रनाक धांवता दुसऱ्या रनाक धांवता आणि बॉल जाता ते तिसऱ्या रनाचा यत्न करता. 3 रन येना आणि खंय तरी एक क्लोज मॅच जाता आणि ती मॅच जिखता मॅच फिक्सिंग कारापूर. पूण एक बरी क्रेडीट दिवची पडटली द टीम फ्रॉम चावेर. एक बरी फायट दिता आणि निमण्या बॉला मेरेन मॅच पावयता आणि मॅन ऑफ द मॅच ह्या मॅचीचो जावन आसा लतीफ फ्रॉम मॅच फिक्सिंग कारापूर. आणि आयच्या दिसाची निमणी मॅच जाता. आयच्या दिसाची निमणी मॅच क्वार्टर फायनल जाता. क्वार्टर फायनल जाता आणि क्वार्टर फायनल जी जाता ती जाता तालिगांव टायगर्स टेकिंग ऑन मॅच फिक्सिंग कारापूर. दोन्ही कॅप्टना लागीं मागता की टॉसा घेवचे. तालिगांव टायगर्स आणि मॅच फिक्सिंग कारापूर. कालच्या दिसाक पहिली सेमीफायनल पावपी टीम जावन आसा स्ट्रॉंग बॉयज ऑफ सांकवाळे. सोनू शर्मा पुट्टी एक ISPL खेळपी प्लेयर तो आपल्या टिमीक पावयता समीक. आणि आयच्या दिसाक मेळटली ती दुसरी टीम वेदर इट बी मुक्ती कादरी और वेदर इट बी विल बी हर्षद मातोंडकर. विल नीड्स टू बी सीन. Face off between Arshad Matondkar and Mukti Kadri. Face off between match fixing Karapur and the Taligav Tigers. And man of the match of previous match जावन आसा Latif. Captain of match fixing Karapur मातसो बेगीन टॉस घेवचो. Durga Kumar Nauti sir, you are requested to give the man of the match award to Latif. Requesting the captain of match fixing Karapur मातसो टॉस घेवचो. Meanwhile, the top of the last match, match fixing Karapur taking on Taligav Tigers.
Hello. So welcome back once again. Now it's quarter-final between Tigers of Taligaon versus match fixing of Karapur. So Tigers of Taligaon won the toss and elected to field. So this match will be of also 5 was the team which has been already qualified. Strong versus Sakwai, and the winners of this match will be the second semi-finalists of this tournament. The match office has been already arrived, so I also request match fixing batsmen to please don't waste time. Also, Tigers of Taligaon, please send your 12 men in the commentary box. So now this is the last match of this session. The winners will be already qualified as the second semi-finalists of this tournament. Just now a very interesting match has been going on between Sauverim and the match fixing, and at last match fixing won the match and entered into the quarter-final against Tigers of Taligaon. So 12 men of Tigers of Taligaon, please send in the comment box. So 12 men darshan. So Martin and such a 7th of the 2 openers. For match fixing, and Kadir will start the first power play over. Which only 2 players will be allowed outside the 30-yard circle. Very important match for both the teams. So the winners will qualify as the second semi-finalists of this tournament. Very good weather condition, not that much hot, that like of yesterday. It was very hot yesterday. So today it around 36 to 37 will be the degree. So yesterday has been reached up to 39.5. Country. So Mukhtiar Kadri will start the first power play over. Ball left over, slightly like a cycling shot from the batsman, but just 1 run of very good feeling over there in this way. Match fixing has been opens the account. Sorry. It opens the account to moves on to 1. At least 62 670 will be the fight score. Single. Next ball comes in, and yes, that's a very good ball. And the batsman lost. So after getting the first signal, there was a dot ball. Again, a ball straight to the fielder, and a very good catch has been taken. What a superb catch in this way. Sachit has been back into the pavilion without scoring any, so the score remains 1 for 1 after the completion of point half. There won 3, which means half the over has been over. And just 1 run is made, and a marvelous wicket of Sachit
has been taken back. Mukhtar Qadri. So Mohan took a very marvelous and very precious catch. So probably only they have lost the first wicket. So they moves into 1 for 1. Very good start by match fixing over here. So Siddesh is the new batsman. Again this time he lofted. I think might be the first maximum of this inning. Which has been hit by Siddesh in this inning. Total has been jumped from 1 to 7. The loss of 1 wicket. Again, but this time not connected properly, but straight to the fielder. It might be just 1 run. So has been added to the total, moves on to 8. First progressing over top power play. Actually, all batsmen has to take full benefit in this over. As only 2 players will be allowed outside the 30-yard circle, and both players has been in the leg side. Next one, this time we want to superb shot, nicely connection of bat and ball as a result. Is a second maximum of this over in this area, which crossed the double figure. Moves on to 14 for 1. So after completion of first over, it's 14 for 1. Very good start by match fixing. By losing 1 wicket, they have been moved down to 14. So Gorish will bowl the second over of this inning. Score moves on to 14. 2 maximums has been retained in the first over of Mukhtar Qadri. As a result, the total moves on to 14, but he has taken a marvelous wicket of Sachit. He has been caught by Mohan after the second over's first delivery. Only Siddesh on strike. First ball trying to hit in the reverse way and appeal for got behind, but no, it has been. It's a dot ball, it has been placed onto the legs. As a result, the decision of caught behind has been declared by the match referees. Very beautiful decision given by the match referees. The next one flicked. But there is a fielder above his head, and it's the third maximum of this inning and first of the second over. So it moves on to 20. Slightly placed. It's like a flick shot. From Siddesh. Again, but this time not connection up has been properly. It might be just a single. Very beautiful ground which has been maintained by Village Panchayat of Kundaim. And the tournament has been organized by Sri Ravana Sports and Cultural Club in association with Mr. Mithun Vaid. Odisha lofted, but there is a wheeler, and yes, a beautiful catch has been taken. So Varshat, this is his second wicket. Varshat went back into the pavilion at the score of 22. So he's 21 for 2
The progress in second over. So both the openers have been back into the pavilion. Satish Bahadur is a fielder who has been just now taken the marvelous wicket of Harsh and Malundkar. Latif, who has been awarded as the man of the match in the previous match. Very marvelous role he has been played in the previous match. Let's see what will he be achieving in this quarter-final. Oh, straight shot, and it's one bounce boundary. Very beautiful start by Mr. Latif, entered the more than 25. A very good start. With the match fixing of Karapur. 25 has been made, losing 2 wickets in the progressing second over. This time slightly placed into the long on area. There is a fielder. So just one run. So out of condition of 2 overs, so the average of 13 runs per over is 26 for 2. Very good climate condition over here. Very beautiful ground. So this tournament has been commenced yesterday, and which will be end up on coming Sunday, that is 3rd of May on that day. 26 for 2, and which will end up with a great semis and finale on 3rd of May 2026. And also lottery coupons will be available at the canteen center. Those who needs the lottery coupons can directly contact at the canteen. Bowler contact. Nikhil will bowl the third over. Oh, what a superb shot! Nikhil. So first delivery has been punished by Mr. Latif. The total has been jumped to now 32. The first ball of Nikhil has been punished. Trying to reverse way. Not connected properly, as it is a listed dot ball. Nicely connected by the wicketkeeper. Back to the bowler. In the meanwhile, there is no score remains on 32. 32 for 2 after completion of 2.2 over. Again after this time and on one maximum. A very good shot by Mr. Latif. That's why he has been awarded as the man of the match in the previous match. He rose like a superhero. Even in this match, he has been showing his heroiness. Super batting. Putting his full power. Oh, this time assist. And he saw in the form of Wise. He has been just missed the wickets. The result is a bye. So it moves on to 39 for 2 at the progressing third over. Very good start by match fixing. Again this time an appeal, and yes, he has been gone out. So third wicket down. So Sachit has been back in the pavilion. The third wicket down. Sorry, Siddesh has been back in the pavilion. So third wicket down at the score of 39.
Cut and ball. So talking about the Singh Watch winners, that is the champions, will be awarded a beautiful trophy which has been displayed over here along with a cash of rupees 1,77,777. Also the second finalist, that is the runners-up, will also get a beautiful trophy along with 77,777. Semi-finalist will be also awarded man of the series, best batter by batsman, and also man of the match in every match will be awarded. We have the great package. And also no more tax has been deducted for the prize money, winning money. This time, a very good, but still a very good feeling. Just taken one run. Batsman Kondo? Sachin. And then moves on to 40. So after completion of 3 overs, at the average of 13.33 is 40. एक मध्ये वाईट काय कितीतरी पडला आणि 40 झाले रे. तो 39 होता ना पहिल्यांदा. आता 40 झाला. एक कोणता तरी एक्स्ट्रा काय तरी काढला. बाय काढला. So the average of 13.33 is 40 for 3 of the completion of 3 overs, the last 2 overs to go. So 60 to 70 will be the prize score, and above 70 will be in the safer side. But still, as Tigers of Tariga also has the ability to change the score. Bahadur will pull the second last and the fourth over of this inning. To last 12 balls remaining. Score moves on to 40. And going to be wide, yes. First ball has been declared wide. One more extra has been added to the score, which brings the total to 41. Oh, straight one. I think it was not a connection of the bat, but it is of the leg. The score remains on 41 at the progressing second last over. What a timing of the bat and ball. It's a one more maximum. So moves on to 47. What a pickup has been taken by the batter. It's a maximum as a result. It moves on to 47 for 3 at the progressing second last over. Not connection up properly. As a result, it's a dead ball. Score remains on 47. So at least 70 or 70 plus will be the safer side of this quarter final. Because both the teams have been very strong having the batting line. Almost like super blocker length. Wide shocker. Nicely collected by the wicket keeper. There is one more continuous back-to-back 2 dot balls. This now full toss has been punished and it might be as one more boundary. So they have been close a half century to moves on to 51 at the progressing second last over.
After two continuous dots, the third ball has been full toss and been punished badly to the straight shot above the head of the umpire. Oh, this time taken home himself, and it's very difficult to save the boundary. And yes, it's a back-to-back two boundaries, and the result total moves on to 55 after the completion of 4 overs. 55 losing 3 wickets. Now let's just 4-6 balls have been remaining of the last over. If they made at least 15 runs, that will be a very safer side. Let's see who will join to bowl the last over. Side of Taligo Tigers. बॉलर कोणता Anish. It was the last over, last 6 balls. Maxi moves on to 55, losing 3 wickets. At least 2 maximums will help them to be in the safer side. Oh, what a superb start. The last over starts with a dot ball. So just 5 balls remaining of this last over. Score remains on 55. बॅट्समॅन कोण स्ट्रायकर असतो लतीफ हां Oh, this is a high pinder. And yes, a very good and comfortably catch has been taken. So in this way, Latif has been back in the 4th wicket down with a similar score that is 55. Tig Bahadur has been taken, a very superb catch. Cool-minded fielder. Done no mistake. So 4th wicket down. This will Latif, the person who has been awarded as the man of the match in the previous match, has been back into the pavilion. This is a 4th wicket down. There's a similar score. So last 2 balls, superb one, no runs, but taken a marvelous wicket of Latif. पूर्ण बॅट्समॅन संगेश Sangesh is the batsman. कोणतो त्या हाडीचं कोणतो सचिन Who will join Sachin. So last 4 balls of this last over remains. Good one, a beautiful gap has been given. I think it's a boundary, yes. What a big gap has been given by the batter. So it is a boundary. To 59 is the score. Last 3 balls remained. But this time it's high up in the air and fielder is down. They will at least get a couple of runs. They've been taken 2, yes, comfortably taken 2. 61 is the total with the help of this couple of runs. This time is a full toss. Badly punished. Above the screen. And this is the maximum. So with help of numbers, this maximum total moves on to 67. 67. What a superb score has been built by the match fixing of Karapur.
Oh, this time again, lofted. One more maximum, yes. To moves on to 73. What a score has been built in the last two deliveries. Back to back 266 as a result. It moves on to 73. So 74 is the target for Taligot Tigers to reach into the semi-final and to become the second semi-finalist of this tournament. A good growth in the score. 73, so 74 in a loaded 5 overs for Taligot Tigers to win this match. So the scoreboard Harshad has been out at 7, Sachit with duck, Siddesh with 14 runs, Latif with 17, Sachin with 15 and last Sangesh with the help of 2 mighty sixes on 18. त्यांनी बॉल काढलेला आहे सर तुला सर आहे नाव मला हां टी टी काढू रे मेटलं रे इंग्लिश लावूया रॉक डान्स करताल माझं मी करतो So 74 is the target in order 5 overs for Taligot Tigers. I request match fixing to set your field as the 2 batsmen of Taligot Tigers have already arrived. So Mukhtar Ghazi and Kiran are the 2 opponents ready to face the target of 74 allowed to 5 overs. फोन करून विचारता हांव तेका The first ball is slightly placed like. हांव तुका सांगता हांव तुका कॉल करता हय हय ते धुवपाची गरज ना रे सिलिकॉन जेल नाल्यार ते हे आसता साखरेचे उदक आसता And it's a boundary. So this inning also starts with a boundary. Altogether they required 74, so now 70 more runs required in the remaining 29 balls. What opening by Mr. Kadri. Again, but this time not a proper shot, and yes, he has been out caught and bowled. So Mukhtar Kadri has been back into the pavilion by scoring just 4 runs. At the score of 4, they have been lost the first wicket in the form of Mukhtar Kadri. A big blow for Taligot Tigers.
So Gavrish. The first one, what a superb shot in the offsides. It's one bounce boundary. So second boundary of this over. So it moves on to 8 for 1. So again, and this time a very superb catch has been taken at the boundary line. So second wicket down. So Gaurish, I think, hitting a boundary like that of Kadri, he has also hit one boundary. Next ball he has been out. So similar thing has been happened over here. Even Gaurish has been hitting one boundary and second ball he has been back into the bench. So continuous. Two players have been out at the score of just 8 runs. It was a very good start, but still they have been lost them almost 2 wickets in the form of Mukhtar Kadri, and now it's Gaurish. So total is now 8 for 2. So Saif Ali. So still first over. There is power play has been in progress. Oh, what a super power shot. Just cracked it under the boundary. So in this way, similar. The batsman comes, hits the boundary. So third boundary of this over, and total moves into 12 for losing 2 wickets. Oh, similar history has been repeated by the same person over here. Hitting boundary, then back into the pavilion. Hitting boundary, back into the pavilion. The similar way, the same history has been repeated by all the 3 batsmen in this over. So as the score of 12, they have been lost their 3rd wicket. So Saif Ali has been caught. So very good over. So after completion of first over, they have been lost their 3 wickets at the score of 12. So Latif will bowl the second over. Score is 12 for 3. A very good score, but still they have been missed 3 marvelous wickets. So Kiran is the batsman. First ball again. The second over starts with a dot ball. Okay, this time has been slightly placed to the leg side. Just a single. And it will move on to 13 for 3 with the progressing second over. Lots of runs has been required. 74 is the target to become the second semi-finalist of this tournament, which is organized by Ravana Sports and Cultural Club in association with Mr. Mithun Vaid. This is the 4th All Goa Panchayat as well as municipality level. 3 days for Panchayat and 1 for municipality. So yesterday 2 and tomorrow is for Panchayat, and then on the second it will be only for
Municipality. Oh, again a very beautiful ball. Ball by Latif. And it's a dot ball. Score remains on 13. So take Bahadur on strike. He has to show his Bahaduri. आज कोणी मारली आपण कोणी एकच ना सकाळी यांनी पण मारली. Again, what a superb wide shocker by Michel Latif. So continuous dot balls. Score remains on 13 only. Losing 3 bowlers wicket. So big shots have been required for Taligarh Tigers. Again, but this time a chance of run out. But no, they are in the safer side. Just 1 run has been added to the score and to the moves on to 14. Still second over is in progress. So 15 is the required rate per over. So at least 30 will be the safer side if they made in this over. Oh, this time is full toss. And yes, he has got the reward. Actually, he had been punished. He is a 4th wicket down. So Kiran, the opener batsman, has been back into the ball, and this is 4th wicket down. So the score of 14, they have been lost to a 4th wicket. A very poor condition of Taligarh Tigers now. At least a hard hitter has been required in this stage now. So actually they have been required, it was 15 runs per over, just 14. So Siddesh as a fielder who has been taken a very good catch over there. हो तो आता ओव्हर झाले नाही. बॉलर कोण तो बॉलर कोण हो बॉलर. So Harshad. Oh, what a superb piece of bowling. Appeal for got behind. But no more response from the match referees. Better name? सोहेल Shoaib. Oh, this time we have been lofted. And it's a maximum. So the help of this maximum total jump to 20. So lots of this maximums and hard hits has been required for Taligarh Tigers to reach out to a destiny of 74 runs. Again this time, but there is a fielder and the catch has been dropped as a result, and also given here the 6 runs. So back to back 2 sixes. But take Bahadur and the total moves on to 26. A very good over for Taligarh Tigers till now. So in 3 innings has been made 12 runs. So this type of hard hits has been required for Taligarh Tigers. As the change is 74. Again, but this time his action is in the form of wide. So one more beneficial run has been added for Taligarh Tigers into the moves on to 27. Still in a very good condition, Taligarh Tigers. Oh, this time again, but not properly connect.
It's just a dot ball. Score remains on 27. Oh, slightly placed into the leg side. A big chase for the fielder. Yes, still a very good fielding. Just one run until moves on to 28. So serve. Oh no. It's a dot ball. So very good over. So score remains on 20. So after completion of 3 overs, it's 28 for 4. 46 है नहीं So 46 has been required. The average of 23 runs per over in just 12 balls. That is 2 overs have been remained. 46 is the target. So 8 big shots have been required for Taligaon Tigers. So 46 runs in remaining 2 overs has been required for Taligaon Tigers to win this match and enter into the semi-final. Let's see who will be the second semi-finalist. Siddesh will be the second last over. As already strong boys of Sakwa has been entered and rooms himself as the first semi-finalist of this tournament yesterday. And the winners of this match will be the second semi-finalist. The first ball in the form of extras. So this over starts with extras. So it moves on to 29. 45 exactly remain required in the remaining 12 balls. Oh, again a slow over, kept very low, and it's a dead ball. Oh, this time we left it, but there is a fielder. It's a high, and yes, at last the catch has been taken by Latif. So Sheikh Bahadur has been back into the 5th wicket down of Taligaon Tigers. At the score of 29, they have been lost their 5th wicket. So new batter, XYZ. Sorry, Sanish. Second last over is in progress. Full toss, but not properly connected. Just one run. And almost on to 30. So 44 more runs required in remaining overs. I think in 9 balls. So 44 is the target. Slightly paced straight to the fielder. They will get at least couple of runs in the way. So loose feeling over there as a result is a boundary. So to move on to 34. Now exactly 40 runs has been required by Taligaon Tigers to win this match. Again, but this time it's a very good ball. A dot ball has been given by the match referee as a result. Score remains on 34. Still 40 more runs required in the remaining overs for Taligaon Tigers to win this match.
over this time. They would love to get a big one. To move on to 40 now. So just 34 runs required. Just 6 balls, so 6 sixes. A tremendous batsman can do it. Not an impossible task, but still required a very hard work to take 34 runs in the last over. So 34 in 6 with the calculation to become the second finalist of this tournament. Sachit will bowl the last over. 6 balls and 34. The first ball and it's a very good ball. This batsman is slightly shuffled over there as a result. So lots of new rules and then came in the history of cricket. Has been shuffled, so a very good ball. 5 balls and 34. It's high up in the air and yes, a comfortable catch has been taken by Latif. So 6 wicket down. Anish has been back in the alien. So 6 wicket down now. 4 balls remain, 34 required, which is a very impossible task. Kabarna. So it's anonymous. This is offline. Yeah, they are going So new batsman game. With some high up in the air and nobody in a no man land area. So just 1 run. Oh, lofted one. It's a big one. For still lots of more runs has been required. लतीफन कितले काढले? 1 विकेट नी आणि स्कोर कितले काढला त्याने? आणि ओव्हरी बरी काढल्या आणि कॅची दिल्या आणि 2 विकेट. Oh, this time high up in the air. Oh, catch has been dropped. Very simple catch has been dropped. As a result, nothing will happen. They are in a safer side. Just 1 run has been taken of this. Just 1 more run ball required. Sorry, remained of this last over. Oh, so congratulations. Mesh fixing. You are the second semi-finalist of this tournament. So I also request both the teams, kindly we are in front of the stage, both the teams, that is Taligaon Tigers and Mesh Fixing, kindly come and join near the commentary box, that is the prize distribution ceremony center. Both the teams, I request both the teams captain as well as players kindly gather near the prize ceremony center over here.
So I request both the teams kindly gather in front of the commentary box. So as a request, a team of those who have been present over here kindly gather at the prize distribution ceremony over here. It's a birthday celebration over here.